नमस्कार पब्लिक. वड़क्कम. केम छो. कसा काय पब्लिक. किसी ने सच ही कहा है, जो बीत गया वो भूत, जो आ रहा है वो भविष्य. जो बीत गया वो भूत, जो आ रहा है वो भविष्य. अगर आगे बढ़ने की चाल ली है तुमने ठान, तो शुरू करते हैं अपना इवेंट वर्तमान वर्तमान वर्तमान. CA, not only the leader of economy, but also the guardians of financial statements. As no program can start without a leader, ICI, its motto song is the guiding light. So now, I request everyone to rise up for the ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यति कश्चन एतद्वैता 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 Thank you so much everyone. Jai Hind, Jai ICI. Good morning future charters. Please fasten your seat belt. We are about to land Vartaman. Vartaman is not just in a point in time, it's an opportunity. A canvas where you paint a stroke which reflects your existence. Do you know, Janam? Once my granny told me, today is the first day for the rest of your life. And this line just stick to my heart. Yes, Rahil, this is Vartaman. This is the power of now. बस इसलिए आप सब और मैं यहाँ उपस्थित हैं वर्तमान का इस्तेमाल करके भविष्य की नींव रखने के लिए. राहिल, तुझे पता चला क्या? नहीं ब्रो, बताएगा तो पता चलेगा ना. अरे भाई, मैं तो लूट गया यार, बर्बाद हो गया. ये जीएसटी वालों ने हम गैम्बलिंग ऑपरेटर्स को भी नहीं छोड़ा. अब तो डाइस रोल करते वक्त भी जीएसटी का ख्याल आएगा. हाँ यार जैनम, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है. इन हैकर्स ने रातों रात मुझे रास्ते पे ला दिया. डेटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून आ जाए तो मजा ही आ जाए. So with that, let's dive into the heart of this topic. वो कहते हैं ना, न्याय की राह में बदलाव का सफर, न्याय की राह में बदलाव का सफर. भारत बदल रहा है यार. अदालत की कहानी नए फैसलों का इजहार, अदालत की कहानी नए फैसलों का इजहार. हिंदुस्तान में शुरू हुआ है लीगल संसार. हिंदुस्तान में शुरू हुआ है लीगल संसार. I Rahil Jain. I Jainam Jain. Welcome you all to the very first technical session, which is none other than recent developments of legal structure in India. Now, moving forward, I would like to invite CA Abha Parab sir, our Vikasa Vasai chairman, and CA Lokesh Kotari, our Vasai branch committee member, to join us on the dais. Let's give a big round of applause. Now, let's extend a warm welcome to our panel of judges. Next, let's call upon the paper presenters Priyanshi Agarwal, Harshit Kejriwal, and Rashad Solanki for this session. Let's give them a big round of applause.
Hey audience, get ready for the knowledge bombs. We have on our dais, we have our great personalities who will guide us on the recent developments in legal structures of India. Now, let's extend a warm welcome to our esteemed judges. For that, I request CA Lokesh Kothari sir to welcome CA Ashok Kumawat sir and CA Nikunj Bangaria sir. Let's give them a big round of applause. Moving forward, I would like to call Tanvi Saklecha to introduce our distinguished panel of judges. Hey everyone, today I have gotten this golden opportunity to introduce one of the leading practicing chartered accountant and principal partner of Bangaria and Company, CA Nikunj Bangaria, with more than 15 years of experience and expertise in direct taxation compliances and litigations, transaction advisory and RERA consultancy. But wait, there's more. He was also the convener of award-winning biennial CPE study circle of ICAI. Moving forward, there is another expert among us, a versatile individual with expertise in various fields, from teaching to working with an MNC. Till date, he has conducted various seminars for his clients and students. With humble beginning to great achievement, a proud owner of Ashok Kumawat and Associates, CA Ashok Kumawat, with over 7 years of experience and expertise in GST, income tax, accounting and assurance services. I request all the future charters to give a resounding round of applause to our esteemed judges. Thank you, Tanvi, for introducing our panel of judges. Now, before starting with the paper presentations, I would request CA Abba Parab sir, our Vikasa chairman, who have organized the entire event. So, kindly, Abba sir, please come. Thank you, Janam. Good morning, everyone. I, CA Abba Parab, Vikasa, chairman of Vasai branch of WIRC of ICI, feel privileged and glad to welcome and thank all of you for this 2 days grand Mega CA student conference. Have a learning and fun-filled time. Thank you. Over to you, Janam. Thank you, Abba sir. Dealing with GST invoices in the gambling world is trying to bet on a roulette wheel that keeps on changing numbers. It's a gamble operators never signed up for, and the odds are definitely not in their favor. To kick off our exploration of this distinctive topic, I propose inviting our first paper presenter, Priyanshi Agarwal, to share insights and her research. Let's give her a big round of applause, everyone. जब जब होए धर्म की हानि बाहरी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा. Lord Krishna says that whenever there is a loss of religion on earth, there is an increment in the demon's effect on earth. He will come on earth for the betterment of the society, for the betterment of the people. In the same manner, whenever there is an increase in the consumption of the goods which have a degrading effect on the society, then our government will come into action.
A very warm greetings to one and all present here. My name is Priyanshi Agrawal. I am a CA final student and currently I am doing articleship from Ahmedabad. Today, my topic is GST notice, a nightmare for the gambling operators. Casinos have been very popular from the ancient time, but since the time of COVID, online games have become popular among the youth of our country. And do you know that in quarantine, when I was alone at home, I turned to online games in my phone. And hence, I think that there is a significant boom in our economy. And according to the reports of BCG, it was expected that there will be an increase in the revenue from $1.5 billion in the year 2022 to $3 billion in the year 2025. And according to our Union Minister, Mr. Rajiv Chandrasekhar, GDP, online games and AI can add up to $300 million in our GDP. Online games and casinos involves risking of money, and these are mostly based on the skills, and the skill of the gamer is based on the chance that whether his skill is work or not, and that's why it can be considered as a gambling. To understand this in a better manner, let me take a case study of Gamescraft Technology Private Limited versus Directorate General of GST Intelligence. In the month of September 2022, our Directorate General of GST Intelligence has issued a notice of rupees 21,000 crores to Gamescraft Technology Private Limited, and this notice was related for the revenue of amounting rupees 77,000, which was because of Gamescraft was included in the services of betting and gambling. GST authorities has also asserted that Gamescraft is lowering its taxable value by claiming the discounts. And after the issuance of the notice of 21,000, GTPL has filed 3 writ petitions against GST authorities. And after the filing of 3rd writ petition, All India Gaming Federation and E-Gaming Federation has come up with GTPL. So we can see that the reason of coming the All India Gaming Federation and E-Gaming Federation here with the GTPL is the loss of the whole gaming industry. So if it was the loss of GTPL, it can be the loss of the whole gaming industry. Moving forward, let's discuss what were the consequences of this case study. Karnataka government has come up with the results in the favor of All India in the favor of GTPL, that is Gamescraft, and they revoked the notice of rupee 20 and they revoked the notice of rupees 21,000 against the GTPL. It was also resulted that the game of skill and the game of chance would be treated differentiately. Moving forward, let me make you understand a very basic concept which we have already studied, that is of demerit goods. Demerit goods are the goods which can have a degrading effects on our society. And to demotivate the people from consumption of these demerit goods is the government usually applies sin tax over these goods. And the example of these goods can be betting, gambling, drugs or alcohol. So in this case also, government has come up with a new provision of GST. So let's discuss what are the new amendments in the GST provision. In the 50th General Council meeting, which was held in July 2023,
it was decided that online gaming, horse racing, and casinos will be included in the Schedule 3 and that are going to be taxed as the actionable claims. GST shall be applicable on horse racing, casinos, and online gaming. GST will be charged on the face value of the bets and not on the platform fees as earlier. GST rates will also increase from 18% to 28%. And the last but not the least and the game changing, that is the game of skill and game of chance will be treated uniformly. To understand this new provision in a better way, I am taking an example here. I am considering a total investment of rupees 100, and in the online gaming and casino, there is a concept of platform fee. Generally, online gamers used to charge a platform fee of 10 to 20% on the total investment of the gaming, and here the platform fees I am taking is 10%, so the amount of platform fee would be 10. Okay, so earlier the GST was 18% and in the current scenario the GST will be 28%. So earlier the GST will be 18% on rupees 10, which will be 1.8, and now the GST will be 28% on rupee 100, that is total investment. So the new GST will be of amounting 28. So there is a short increase of more than 1,400% in the total amount of GST. Moving forward, let me discuss another eye-opening case study of Delta Corp. Delta Corp is an online gaming company and it is based in India. Delta Corp provides services of online gaming and casinos. In the month of September 2023, so we were discussing the case study of Delta Corp. Delta Corp has provided with a GST notice of first GST notice of amounting 11,140 and 40 crores. Sorry, my mistake. So this notice was related to the short payment of GST. And another notice was issued to the 3 subsidiaries of Delta Corp, which was amounted to 5,682 crores, and the third notice has also issued to Delta Corp in the month of October 2023, which was amounting to 6,384 crores. A total amount of 23,206 crores has been issued as a notice to Delta Corp, whereas the market capitalization of Delta Corp was just 3,749. Don't you think this is a nightmare for the companies like Delta Corp? Definitely it is. So, in conclusion, consider a casino which was earlier operating with a certain level of financial predictability. But after the introduction of this new provision and after this GST notices, this equilibrium has been disrupted. There is an increment in the complexities of the tax burden on the bet value, the complexities on ITC, the complexities on the prize value, prize money, and it would also have a negative impact on our Indian economy. The gambling industry has now a new gamble, a financial and a regulatory one. Despite these odds, there will always be a room of adaptation and innovation and a fate of fortune. Thank you very much. Close kar do. As briefly explained by Priyanshi about risk involved in gambling, next time, whenever you play rummy, keep this in mind. इस खेल में जोखिम की संभावना है, कृपया इससे जिम्मेदारी से खेलें। धन्यवाद। In the digital jungle of cat videos and conspiracy theories, the Digital Data Protection Act 2023
is the cyber umbrella we all need, shielding us from data storms and the occasional virtual monkey business. So with that, introducing our second paper presenter poised to unravel more layers of insight on this distinctive topic. Let's welcome Harshit Kejriwal for the presentation. सिबिल स्कोर चेक किया है आपने? If not, then do it soon. Within the first few hours of checking your CIBIL score, you will start receiving promotional messages and loan calls. Even worse, have you ever wondered how a small inquiry about any real estate thing on any website or any portal is followed by loads and loads of emails? There will be guys calling and offering a 2 BHK or 3 BHK, which might be relevant for you and which might be a time waste also. Let's talk about the worst. Few of you have experienced, I guess most of you, someone calling and asking, "Ki, sir, we know you have diabetes. We are offering you this insurance policy, specially designed for you, and we are offering a 30% discount as well." So, doesn't these things make you angry? Because they intrude your life. And this is what we call invasion of personal data without consent. Well, the significance of term consent in present socio-economic era can't be overemphasized. So why don't we drag the concept of consent to processing of data as well? So here I am, Harshit Kejriwal, proposing my paper on the Digital Data Protection Act 2023. In this paper, we'll discuss what sensitive data actually comprises of. We'll discuss various real-life data breach incidents. We'll discuss what is the actual legislative scenario currently and what are the major criticism and loopholes of that Digital Data Protection Act. And there's a food for thought for you also. I'll try to give a deep insight that how this Digital Data Protection Act might be, I repeat, might be detrimental to our democracy, to us as the people of India. So, starting with the components of sensitive personal data. As you might be aware of because you are CA Inter students, so sensitive personal data includes the demographics, like your birth dates, contact information, the credit card numbers, the medical records, your health information, the intellectual property, like the inventions, formulas, like the whole Coca-Cola is depending on that Coca-Cola formula. So just imagine what if that formula gets leaked. The competitive information, the legal information. So these all are what constitute the sensitive personal data. So let us now discuss the actual real-life incident to make you aware of the seriousness of the issue. So just imagine what is going to your heartbeat when you try log into a portal and it says your password has been changed. Please use the most recent password. Well, that might have been experienced by the persons who have boarded Air India flight in early 2021. Because Air India has reported that there were attempts to steal data of 4.5 million customers and the user IDs and passwords were stolen. Again, in the past month, November, there was CAT exams. Few of you have appeared for that exam as well. Few of my friends suggested कि CAT exam दे दे, क्या ही जाता है दे दे. So they were not aware that there is a data risk involved also. Because in CAT examinations, like 2 or 3 years earlier, there was a data breach, and not just the exam performance, but the past academic records were also stolen. Moving on, they say investments in securities are subject to market risk. But they fail to say that they are subject to data risk as well. Well, Upstocks, India's second largest stockbroking firm in respect of number of clients, reported a massive data breach, but the KYC information of about 25 lakh customers were stolen. Well, have you ever wondered how a single slice of cheese burst pizza would have costed your entire bank balance? Well, you heard it right. The case of Domino's India. There were attempts to breach the 13 terabyte information of Domino's India, where not just the order history and address, but the credit card information were also stolen. And let's talk about the most recent data breach in Indian history, the Cyberabad data theft. The data of around 67 crore people was stolen. And this incident came into light when Cyberabad police sent notices to 11 entities regarding this data breach. And also, they have arrested one Vinay Bhardwaj for stealing and sharing personal information.
Acha, how does it sound when I say Aadhaar and passport data of 800 million Indians is on open sale on darknet? Yes, US firms cybersecurity, they have revealed that Aadhaar and passport data set is there on the darknet for mere 80,000 US dollars. So well, from this discussion, you might be aware of the seriousness of the situation. Let us now talk about the consequences of these data breaches. Well, talking about the reputational damage. Well, all the 90s kids will be relate the popularity Facebook used to have. But Facebook lost majority of its customers due to an alleged data breach. So well, organizations' image is tainted and people avoid using that platform just because of a alleged data breach. Also, loss of sales is there. So there are numerous examples like Yahoo, even Facebook, whose sales figures are like reduced by 2 zeros just because of alleged data breach. Then loss of employees and potential employees. The Google in past 2-3 years have fired around 80 technicians. I'm talking about higher level employees just because of news of few data breaches. Talking about legal penalties, the Meta Group, they have been fined a record of 1.2 billion euros for transferring the information they have collected in Europe to America. Well, we have understood the seriousness of the issue, the real life data breaches as well. Let us now discuss the current legislative scenario of this issue. So, till 11th August 2023, we Indians didn't have any legislation which dealt with digital data protection. If I talk in simple terms, Indians were using internet without an act. So it was like driving a car without airbags. Still the road is smooth, you won't even feel a single jerk. But whenever there is a crash, you will be all on your own. There is no one to rescue. Well, due to a landmark enactment of Digital Data Protection Act 2023, we have a legislation. So, the timeline is like from 18th November, the Ministry of Information Technology released the Data Protection Bill. And it got finally enacted on 11th August 2023. So now, you all must be wondering, what is the difference between 10th August and 11th August? ऐसा क्या बदला कि we are now safer? So I'll tell you. Before that, I'll make you understand a few terms. According to Digital Data Protection Act, the data fiduciary, someone who collects the data and stores the data for processing it is called a data fiduciary. Then the person to whom the data belongs is the data principal. I guess you understood the two terms, data fiduciary and data principal. Now, the Digital Personal Data Protection Act provides that the rules to be followed by data fiduciary to collect data from the data principal. They have provided for installation of data protection board to ensure that rights are protected. They have also announced a major penalties up to 250 crores and minimum of 50 crore for any data breach. So now, let us discuss the rights and provisions provided by the Digital Data Protection Act. You have the right to access your personal data. You have right to correct or erase your data. Sometimes you have provided your consent to someone to collect your data, but now you want your data to be removed from there. So on virtue of this act, the data fiduciary has to remove your data from his database. You have the right to revoke your consent. You have special provision for data related to minors, which we'll discuss. The minimum penalty, as I said, for breach is around 50 crore INR. Also, you must have noticed that whenever you use any new website or new application, they made us agree at terms and condition. We have to mandatorily do that tick mark. So sometimes what was happening, everyone is not versed in English, but they have to agree those terms which were there in English. So this Digital Data Protection Act, they have provided that those terms should be there in all 22 languages according to schedule of our Indian Constitution. So these are the changes which have been brought by Digital Data Protection Act. But let's talk about the criticism also, because to understand the concept better, we should know the pros and the cons also. So first of all, I'll tell you, there is a difference between criticism and gaps and loopholes. Criticism is a subjective concept which people feel or critics feel. It might not be true, might not be actual, but if we say gaps and loopholes,
they are proven drawbacks. So we'll discuss criticism, then we'll discuss the actual gaps and loopholes. The first criticism is on the ground, transfer of personal data outside India. So according to the Digital Data Protection Act, someone has to obtain your consent for collecting your data. If they have obtained your consent, there is no requirement upon him that he can process the data in India or in any other country. And that consent lies on central government only. That if central government permits data to flow to any other country, we are no one to stop that. Another thing is non-applicability to offline personal data. Yes, you heard it right. Our learned government feels that data is important only when it's digital. There is no laws for protecting and preserving the offline personal data. Exemptions to government. Opposition parties and various political critics or legal critics have criticized this act over various exemptions provided to government. While there are stringent rules for any third party, any enterprise to obtain and collect your data, but for government, there are numerous exemptions. Also, according to Supreme Court, right to privacy is a fundamental right from 2017. So this hinders our fundamental right to privacy because central government has the access to our data without our consent. An obligation with right, Convention on Rights of the Child. This is a bit controversial one, I would say, because the Digital Data Protection Act says that if you have to process data of any minor, then you have to obtain the consent of his guardian. So many critics feel that the autonomy of child will be hindered because when the child is using internet, he has to obtain his parents' consent to basically perform that, whatever he wants to do. So these are the criticism points. Now we'll discuss the actual gaps and loopholes. So the first one being purpose of collection of data. So as I've told you, the data fiduciaries need to have your consent before taking your data. But for what the consent is being taken? So the act says that data can be taken from you for any purpose if the purpose is legitimate. But what is legitimate for me might not be legitimate for you. And we can't keep knocking the doors of Data Protection Board or Supreme Court every time someone seeks our data. Next, it hinges on citizens of the country being aware of their rights. The Digital Data Protection Act doesn't make any obligation on the Data Protection Board or any other authority to make the citizens aware of their own rights. Like we have investor education program, we don't have anything that shall educate us about our rights when we are transferring our data. Ambiguity in reasonable security measures. As said, I said because there are some stringent rules for data fiduciary to collect your data. So the act says that data fiduciary has to maintain reasonable security measures to ensure that your data is not breached. But what constitutes those security measures is never defined. Then, inconsistencies with Right to Person with Disabilities Act 2016. So this is further also interesting drawback, I would say, because according to Right to Person with Disabilities Act 2016, it says every disabled person should enjoy equal rights as a normal individual in India. But according to our data protection bill, in order to obtain data of a disabled, they need to provide consent of their lawful guardian, which again hinders their right. I'm not talking about minors, even majors, if they are disabled, they need to give their legal guardian's consent. And moving to the most interesting one, for which I mentioned that it might be detrimental to our constitution, to us as a citizen. It's inconsistency with the Right to Information Act 2005. Well, I guess most of you will be aware about Right to Information Act. The major government frauds or any fraud or many shortcoming is revealed by this RTI. This is one of the most important tools of democracy. But the Digital Data Protection Bill seeks to amend the RTI, which would, because then, if we have to obtain any data about individual, we need to have their consent. Even government officials and ministers. So just imagine, if you are not going to know who are the voters in your area, if someone has donated 5,000 crores to any political party, it is that obvious if someone helps you with 5,000 crore, party will favor them. But on the virtue of RTI, we are aware of the fact who has donated how much. Just imagine the public distribution system where food grains are distributed.
So you just imagine you are not given the list to whom how much grain is distributed. Black marketing becomes so easier. Just imagine. That's why, but I would say there's a disclaimer. The confirmation is awaited from Supreme Court because the act is relatively very new and there might be litigations. And we have to depend what Data Protection Board says and what Supreme Court says on this issue. Concluding the whole thing, Digital Data Protection Act is a landmark in India's technological advancement history. Still, there's a long way to go, but still having an act was necessary. By this, I conclude my words. Thank you. थैंक यू हर्षित. सो जब भी कोई कॉल आए और सुंदर सुंदर कन्या आपको आके बोले, Sir, I am calling from your bank. Will you please share your OTP? ना भावुक होकर मुझसे अपना OTP ना शेयर करे. सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे. Now I request C. Manoj Daga sir to come on stage and have a seat. Please give a big round of applause to Manoj CA sir. Now I request CA Abha Parab sir, Vikasa Vasai chairman, to welcome CA Manoj Daga sir with a bouquet. We recognize the presence of Regional Council member and branch nominee CA Shweta Jain, CA Ankit Arti sir, and CA Rudesh Pangane sir, and a past chairman CA Pramod Damakar sir, and CA Umesh Narvekar sir. Sorry. Moving forward, Income Tax Act is like solving a complex puzzle where the pieces keep changing shape. In this presentation, we will dive into practical case scenarios, decoding the nuances of the new tax regime. It's a tax talk with a twist. Buckle up for a ride through the intriguing maze of financial regulations. So, ladies and gentlemen, prepare for the intellectual core as we welcome our third paper presenter, Rajat Solanki. Brace yourselves for a presentation that promises to be as enlightening in the world of tax regulations. Let's give them a big round of applause. So, good morning, everyone. My name is Rajat Singh Solanki. I am a CA finalist and an industrial trainee at Morgan Stanley. So, today I am here in front of you to present my paper on the topic Income Tax Act, Practical Case Scenario of the New Tax Regime. So, to understand the new tax regime, we have to take help of the old tax regime so that we can establish a difference within the difference between the new and the old one. So, the perfect depiction of change in the matter of 2 years. Here I am not talking about the black to gray hairs of our finance minister, but so this is for the reference. So this is for the reference of the union budgets. So in the Union Budget 2021, people of India were given a choice to either continue with the old tax regime with higher tax rates and with lots of deductions, or to opt for the new scheme which was offering lower tax rate but no deductions. The tax-free ceiling rate at this point of time was still 5 lakh rupees. This went under significant revision, and with the union budget of 23-24, after government consulted with many tax experts and various experts, this went under significant revision. So, before going to the changes in the new tax regime, I will just refresh your minds with the old tax regime.
So in the old tax regime, we had firstly the basic exemption limit was 2.5 lakh, and the deductions were 80C, 80D, 80G. 80G बहुत charitable लोग हैं इंडिया में, so we know what charity they do, but okay. Now let's move forward towards the changes. First, in the new tax regime, the basic exemption limit was increased from 2.5 lakh to 3 lakh. So the slab rate also changed, 30% on the taxable income over 15 lakh. Previously, old tax regime में 10 lakh के ऊपर था. Rebate under section 87A is increased from 12,500 to 25,000, which makes the tax-free ceiling rate increase from 5 lakh to 7 lakh rupees. Standard deduction under section 16B has been introduced in the new tax regime of 23-24, which is 50,000, which was not provided in the new tax regime of the 2021. Highest surcharge on income over 5 crore rupees has been reduced from 37% to 25%. So this makes the maximum effective rate from 42.74% to 39%. But क्या फायदा, ये तो अमीर लोगों के लिए है. Okay, so the family pension exemption up to 15,000 is also introduced here. And the leave encashment exemption on the NGSEs, means the non-government salaried employees, has been increased from 3 lakh to 25 lakh. So these were the changes. Now, as we discuss the slab rate change, so before going to the slab rate in the new tax regime of 23-24, let me refresh your mind again for the old tax regime. So in the old tax regime, we had our 0 to 2.5, we had nil tax rate. 2.5 to 5, we had 5%. 5 to 7.5, we had 10%. 7.5 to 10, we had 20%. And then after 10 lakh, we had our 30% income tax rate. So till the PPT is gonna work, ऐसे ही explain कर देता हूँ. So the income tax slab in the new tax regime is like 0 to 3 lakh, you have to pay nothing. 3 to 6 lakh, you have to pay 5% of tax. 6 to 9, you have to pay 10% of the tax. 9 to 12, you have to pay 15% of the tax. 12 to 15 lakh, you have to pay 20%. And above 15, you have to pay 30% tax. So beneficial for middle salaried employees. So now let's talk about the deductions. We first talked about the changes, then the income tax slab rate. Now we shall talk about the deductions. So again, I'm refreshing your minds for the old tax regime. So deductions, what were allowed? Anybody can answer? Okay, let me just mic में बोल देता हूँ, सबको सुनाई देगा. ATC, PPF, NPS was allowed. ATG, the charity, we talked about. ATD, medical insurance premium, and several other deductions we can just, cannot count on fingers. बहुत सारी deductions थी. But in the new tax regime, nothing sort of like that will be allowed. So firstly, as we talked about, standard deduction under section 16B, वही deduction है. Employer's contribution to PF, which is under section 80 CCD subsection 2, बस वो allow करेंगे, बाकी कोई चीज़ allow नहीं होगी. So not so beneficial, but let's see. We will decide that in the end of the presentation. I think PPT पे पहले एक case scenario दिख जाता सही रहता. Okay. So this was the slide जो रह गई थी PPT technicality difficulty वजह से. So income tax slab rate change, then the deductions, and now let us understand from the case scenarios. It will give us a better understanding of between the old and the new tax regime. So you can see here 0 to 6 lakh rupees. In both the regimes, you don't have to pay any tax. But starting from 6 to 7 lakh rupees. Now, here in the old tax regime, you have to pay somewhat like, if you have a deduction of 50,000, okay, other than that of standard deduction, then you have to pay somewhat of 22,500. But like, we can understand that a person earning around 6 to 7 lakh, he has to run a family of 4 at least.
So he cannot just invest every amount for deduction. He has to spend on family. Coming forward, 7 to 9, here you can see the old regime will be better because, the deductions could be extra because he has the extra amount to invest. 9 to 10 lakh rupees. Here also he has amount to invest, but now because of the, the lower tax rates, new regime takes the place of the better. 10 to 12 lakh rupees. Here, now you can just, refer the positions that which is better. This is a snapshot from a calculator, of the Excel calculator, which I downloaded from somewhere, I think. So it was better to understand. Here, new regime, old regime. So now, after understanding this, I want to conclude. I know conclusion बहुत जल्दी आ गया, but conclusion थोड़ा बड़ा है. Now, to understand and to make the decision what is better for you. Every regime has its own pros and cons because किसी में deductions ज़्यादा है, किसी में deductions कम, किसी में tax rate ज़्यादा है, किसी में tax rate कम. So क्या करें, किसको चुने? The only way is to calculate. So whenever you are just filing your ITR, you are filing the income tax return, you have to calculate your tax based on both the regimes. Based on both the regimes. So that in whichever tax regime you get lower tax liability, you can choose that. And that's the way of how we do. As a human, how we do, that's the way. So now, in my opinion, why the change was there is like, firstly, in the old tax regime, the government was pushing us towards the habit of saving, investments for the future. In the new tax regime, they have focused onto the people who are earning a middle salary, like 7 to 9 lakh, 10 lakh, below 10 lakh rupees, so that they can be benefited. And a person who was paying some of the tax before in the old tax regime, who was earning like 6 to 7, now he does not have to pay any tax because in the new tax regime, the tax-free ceiling rate would be 7 lakh rupees. So this is like they are helping towards to the salaried employees from the new tax regime. And if you want to claim your deductions, like you're doing so much of charity through ATG, then you can choose the old tax regime. So I think I will conclude my words, my paper on this, that choose the regime which provides you lower tax liability. Thank you. That's all from my side. Very well explained by you, Rajat. As we all know, income tax is such a complex law, yet you explained it very clearly. We are able to connect you when you are briefing. Too good. And I hope May 24 and November 24 के लिए थोड़ा बहुत revision तो हो ही गया होगा. Now I would like to call upon stage Arvind Karwa to introduce the esteemed session chairman, CA Manoj Daga sir. Hello, thank you. CA Manoj Daga sir is a fellow member of Institute of Chartered Accountant of India with over 29 years of post-qualification experience in accounting, assurance and advisory services across various sectors. Currently, he is a managing partner in a CA firm. He was associated with Continuing Professional Education Committee of ICAI in publication of book entitled Audit of Bank Current Development. He was a member of subgroup of Accounting Standard Board for guidance note on audit of banks. He was a co-opted member of AASB of ICAI and implementation committee of IFRS WIRC. He has been actively associated as a speaker with ICAI, RBI, CAG, NIA, CII in seminars and workshops on matters related to bank audit, accounting standards, auditing, assurance and IFRS. He has authored a book named Audit of Bank, Comprehensive Guide for CA and Bankers 2005, which was published by Snow White Publication. Give a huge round of applause for one and only Manoj Daga sir.
Namaste and good morning to all. When I was asked to come for this session, Amit ji called me, and I hope you heard from my profile also that I have been the all-through audit professional. And the session that I was supposed to chair had income tax, GST, and digital personal data protection. So I told him that you really want me to come and speak and chair this session. He said, it would be pleasure if you are there because you don't know anything about income tax and GST and you will be able to understand better of what the presenters are saying and then share your comments on that. So that's where I am. In fact, the session was to start at 11, but I think there's some change in the program. And because of that, I unfortunately missed the two presenters who talked about, I think first one on the GST and the other one on the Digital Personal Data Protection Act. But I heard something on the Personal Data Protection Act and on the income tax as well. Let me start by saying that I'm indeed delighted to be amidst such large number of CA students. I believe you are the future of the profession and the future chartered accountants. Today, as we know, ICI has more than 8.45 lakh CA students. And that, I think, is the powerhouse of our profession. So to start with, I would request for a big round of applause for all the CA students who are present here. When I saw the theme of the conference, Vartaman, the power of now, I was really impressed with the way the theme has been coined. And I think this is a very unique theme that has been coined for this mega CA conference, the power of now. Because I believe that our tomorrow depends on what we do today, what we do now. And I think that theme, resonates very much in my belief that what will be our tomorrow depends on what we do now. I believe that in our profession, we all have to remain students for our lifelong. Whether we are qualified, whether we are not qualified, but we have to remain students. Whether we are in practice for 30 years or not in practice, we still have to remain students. We have to learn, unlearn, and relearn every day. And that is, I think, the big excitement and as well as challenge for all of us as we see how the regulatory landscape is changing in India. And we have to be true to the profession and we have to ensure that we update our knowledge every moment, every day. And I think these kind of conferences really help, I think, us and the students to keep themselves abreast of the latest developments which are happening in the regulatory landscape. I thank the ICI for organizing this mega event, and I also thank the organizers and the host for inviting me for this conference. I think the theme of this technical session was recent developments in legal structure in India, and I think three presenters talked about GST, income tax, and Digital Personal Data Protection Act. As we all know, friends, our country is the fastest growing economies in the world. And it is amongst the top 5 economies of the world. And we are already talking about the company coming in the top 3 economies of the world by 2030. Not only that, we are also talking about Viksit Bharat at 2047 when we complete 100 years of independence. I think we are living in very exciting times, and I think for you all, there can be no more exciting times in India that we are seeing today. And I think the future, as I said, you are the future professionals. You have a lot on your shoulders, and I hope that you will carry the legacy of the profession the way it has been carried since 1947.
I think a lot of credit for what we are seeing in India in terms of the growth. We are talking about $1 trillion economy. I think a lot of credit goes to the regulatory landscape changes and the reforms that have taken place, which are, I think, shaping the financial landscape of our country, and which is what I think we are able to confidently talk about what India is today and what India will be in the future, in next, I think, 20, 25 years of what we call as Vikasit Bharat at 2047. I think I will talk about the major reforms in the regulatory landscape in three buckets. One would be on the direct taxes, one would be on the indirect taxes, and also the corporate laws. I think immense amount of efforts have gone, I think, from the government, from the regulators, to make the regulatory landscape, which is best, I think, in terms of the international standards, which provides conducive business environment, which provides transparency. So I think, let us, I think, acknowledge the efforts that the government and the regulators have put in to make the regulatory landscape with the reforms that have been announced. And I think, as I said, those changes have really shaped up the financial landscape of India. Let me start with direct taxes. Do you know what was the total gross tax collection, direct tax collection for 22-23? 19.68 lakh crores. And the net collection after refunds and all was 16.61 lakh crores. It has, I think, surpassed or grown manifold in last 10 years. And I think this direct tax collection, as we all know, goes in the development of the country. All the, I think, infrastructure, all the developments that are taking place, this is the biggest contributor. And this would not have been possible, I believe, without the regulatory reforms that the government and regulators are continuously working on. I think the developments in the Indian direct tax is a reflection of the government's efforts towards simplifying processes, promoting transparency, combating evasion, and aligning with global standards. I think these are the hallmarks of whatever reforms that we are seeing in direct taxes. Some of the major reforms which we can talk about, and which I think was one of the topic of the presenters today, the new tax regime. And I'm sure you had good understanding about the new tax regime, which was presented by Rajat Solanki? Yeah. So this is one major event, major recent reform that happened in the Indian tax with introduction of new tax slab rates that aims to simplify the income tax structure and provide relief to taxpayers. Another, I think, major reform that has happened is faceless assessment. I think that has really, I don't think that kind of unique system is prevalent in how many countries, but India, I think, has gone far ahead on faceless assessment. Faceless assessment, as we all know, eliminates physical interaction between taxpayers and tax officials during scrutiny assessments. This is a technology-driven approach which enhances transparency, reduces corruption, and promotes efficiency in the taxation system. Third, I think, on digital initiatives taken by the Income Tax Department. Government has taken several initiatives on the digital front to streamline tax compliance procedures. For instance, the e-assessment proceedings have been introduced for scrutiny cases where all communication take place electronically through an online portal. Today, as we file our return and upload, I think within hours you get the assessment notice, which was not possible, I think, few years back. And that, I think, is amazing in terms of how the digital transformation that government has taken up on the income tax front has really transformed the way
the government functions, and I think it has become a big relief for us as taxpayers. I think another platform where I think reforms have taken place is on the international taxation front. India has witnessed significant development in international taxation front to prevent base erosion and profit sharing BEPS, as we call it, by multinational companies operating in India, and implementation of measures like country-by-country reporting requirements to ensure fair taxation practices across border. So these are some of the examples of what are the reforms I think have taken place as far as income tax is concerned. And there are many more. I think we can go on and on, but considering the time, I thought let me highlight some key reforms that have taken place on the income tax front. And that, as I said, has really contributed to the financial strength of the country. And I think government continues to continue the reform process, and I'm sure we'll see more reforms coming on the income tax front as well. Now, moving on to the indirect taxes. Again, the question is, do we know how much was the gross GST collection in 22-23? 18.10 lakh crores, 19.68 and 18.10 lakh crores. And that again, to my mind, has been possible only with what we call as the landmark reform with the GST implementation. I think that was a major, I would say, turning point for the Indian economy when government decided, I think 6 years back, to implement GST. And we have seen, I think, kind of reforms that are taking place on the GST front. The GST Council, which comprises of group of ministers from almost all the states, virtually meets every month to discuss GST rates, GST issues. And thankfully, I think after 6 years of GST implementation, now government has decided to set up GST Appellate Tribunal also in 31 states, which is a very unique concept that every state is probably going to have their own GST Appellate Tribunal. This has happened after 6 years, but yes, better late than never. And now I think GST issues, instead of going directly to High Court and other authorities, I think will first be addressed by the GST Appellate Tribunal. The another, I think, part of the GST implementation, which really I would say was surprising and exciting for us, was introduction of e-invoicing. I think that is one major, I would say, step on the GST front, which aims to streamline the invoicing process by digitizing it, making it more efficient and reducing errors. And again, another part of the GST implementation is introduction of dynamic QR codes for B2C invoices. These concepts, if you talk 5-10 years back, were unheard of, and we could have never imagined that we'll see these kind of reforms on the taxation front. And I think government, thanks to government and the regulators, that they're doing all possible things to make sure that the tax compliance culture becomes more robust and people are encouraged to be more tax compliant rather than what used to be the story a few years back, where I think people were deterred to comply with taxes because of various reasons. But now I think government is pushing that let there be more compliance culture orientation. I think the whole focus, apart from reform and development, is to ensure the compliance culture amongst the taxpayers. Coming to the corporate side, corporate laws, n number of reforms have taken place. I'll just highlight some of them because the whole, again, I think the focus of the government is to enhance transparency, accountability, and ease of doing business. As we all know, India has been jumping ranks on ease of doing business, and which again, I think the large credit goes to the simplification of various regulations, introduction of new regulations, which benchmark with the global standards. And I think, again, India being the sweet spot, as we call it, government is continuously working on creating favorable investment climate,
ensuring growth at all-round growth, as we call it. To start with, I think the major reform that we saw was the introduction of the Companies Act 2013. The Companies Act first, which we saw and which we have all studied through, was 1956 Act. And after almost 60, 70 years, we had a new Companies Act 2013, which brought several important reforms. It introduced new provisions related to corporate governance, disclosure requirements, audit norms, and shareholders' rights. The Act has also allowed, or I think facilitated, establishment of specialized bodies such as National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal to address company law related issues effectively. This, I think, was again a turning point in the Indian corporate history, that we had a new Companies Act 2013 after almost 60 years of the old Companies Act. Another significant development that has happened, and I believe is very, very crucial, is implementation of Insolvency and Bankruptcy Act 2016. It, I believe, has revolutionized the Indian insolvency framework by providing a time-bound process for resolving insolvency cases in a transparent manner. And I hope you'll all believe that this again is a major reform that we have seen in the recent past, which has really put India on the fast track as far as ease of doing business is concerned. IBC Code has facilitated quicker resolution of distressed companies while safeguarding creditors' interest and preserving value. Lot of efforts have, I think, put in by government, as I said, on ease of doing business by simplifying compliances, regulatory compliances, various steps such as digitization of process, reduction in paperwork, single window clearance, and streamline of process to attract more investment in India. I think this again, we should know, is a major, major reform, and major effort has been put in by government on ease of doing business. We all, I think, till now talked about business. Another important aspect which has been brought in under the Companies Act is on the corporate social responsibility, CSR as we call it. As we all know, there is a mandatory requirement for spending on CSR by the companies, and there are detailed, I think, provisions which have been incorporated under the Companies Act, with the aim to encourage business towards socially responsible actions. We live in a world where we cannot ignore environment, society, because I think that has become another major, major concern. And related to that, I think SEBI, which is another regulator, amended the SEBI listing obligations and disclosure requirements by bringing in mandatory ESG disclosure as BRSR, as we call it, for top 1,000 listed companies. This again, I think from the international perspective, is a major, major reform that has happened, where now top 1,000 companies, listed companies, will have to make detailed disclosures on the environment, ESG framework as we call it. I think with the view to attract investments in India, which is I think the major, I think, growth engine for us, foreign direct investment reforms have also, I think, taken up in a big way. They have opened up various sectors for FDI, including defense manufacturing, insurance services, and thereby boosting economic growth through increased capital flow. Today, we know that India is among the top recipients of FDI in the world, and I think which is a very, very important growth engine for us. So that is another important reform that has taken place. Digital Personal Data Protection Act 2023 is another important development, and one of the presenters also presented a paper on this particular act, which is aligned to the international standards. I think they have compared the standards or the act that we have in India with European Union general data protection rules or acts that they have. So it has been completely benchmarked with the international standards.
while it is very nascent, I am sure that government is aware of all the criticisms and the loopholes that our presenter said to address those, because it's just 11th August 2023, this act has come in place. But I think this again is a landmark reform that we are seeing in the country. All these recent reforms that I've just spoke about, and maybe many more, it underlines India's commitment towards creating conducive environment for business within its border while aligning with the international best practices. So I think regulatory landscape is really shaping up the financial landscape of this country, and the reforms that I just narrated and many more have really, I think, transformed the regulatory landscape and the financial landscape of the country. I hope you will agree with all these reforms have really played a critical role in what India is today and what India is going to be in next 20-25 years. Coming to the, the technical session where our 3 CA students presented papers on. First one, I think, was on the GST notices, a nightmare for the gambling operators, which was, I think, presented by Ms. Priyanshi Agarwal. I am sorry I was not there in the session, but I am sure the audience have got a good insight on what this new, I would say, chaos kind of a situation that has been created on account of the notices that have been issued, and also the decisions that were taken in the GST Council meeting, I think, which was held again in 2023, 50th and 51st General GST Council meetings. So what this change has basically done is that the companies which are engaged in casinos, horse racing, and online gaming, there was earlier the distinction between game of chance and game of skill. I am sure you guys understand game of chance and game of skill, which were treated differently in the old regime. But now I think GST Council has decided, and I think the law is already effective from 1st October 2023, where there is no distinction between game of chance and game of skill, and every such activity will be taxed at 28% GST. I think that has created a lot of, I think, apprehensions, concerns in the minds of the industry players. The matter, I think, is being discussed. The amount of GST demand that is expected out of this particular change is, I think, believed, some market experts are saying 1.5 lakh crores. And we have seen few companies where the demands in the range of 18,000 crores, 21,000 crores have already been, the notices have been issued on those companies. What I don't understand is, if this is the GST demand, we all understand how GST is calculated. Just gross it up and see what is the turnover revenue, GST taxable revenue we are talking about. It comes to almost 8 lakh crores, which is, I believe, at least 10 to 15 times more the total revenue these companies have generated. So the question comes that how can there be a GST demand of such a huge amount when the turnover of those companies is almost 1/10 of what the demand looks like. And that, I think, is baffling the whole industry. It looks like a little controversial issue as of now. The matter is pending with Supreme Court in one of the appeals. We hope that the matter will be clarified soon, and I think we'll have more clarity on how the GST on these particular activities of casino, horse racing, online gaming will be taken at. There's huge amount of discussions happening. Let's hope that wisdom prevails and we'll have more clarity, because this is impacting the international investments. A lot of, I think, in foreign investors are ready to invest in this particular sector. But with this particular notices that have been come in the market and what we are talking about, that have really is holding them back from investing in these industries. So, as I said, let's hope that this matter gets clarified soon with the Honorable Supreme Court,
and we'll have more clarity in the coming days. Coming to Digital Personal Data Protection Act, which was the second paper presented by Harshit Kejriwal, and I was able to be there for part of his presentation. Personal Data Protection Act 2023, need of the hour. I think this is unquestionable. I think this is again a major tax reform that has taken place. We are calling India as Digital India, and today we are all digital population of Digital India. How many internet users we have in India today? 700 million internet users, active users in India who have accessed internet at least once every month. 700 million people. And how many are social media users active in India? 470 million. In terms of internet users, we are just behind China, which is 1 billion plus internet users. We are ahead of US when it comes to internet usage. Almost 2.5 hours of internet time that all of us are investing. That being the case, I think this particular act has really come at the time which was more best, I think, required. And that is why I think the topic very well summarized that was the need of an hour that this act came in India. Whatever said and done, whatever acts may be there, and I think even the Harshit, correct, mentioned about we have to be careful. While acts can provide you whatever comfort that is required, but when you are on the internet, when you are using social media, there's a golden principle: prevention is better than cure. Don't, I think, allow unnecessary access on the apps that you are using. As he said, we should not do terms and conditions as read without reading it. Now the Act provides for in regional languages as well. Make sure that we are fully aware of it, whatever Act safeguards are there, but our safety lies in our hand, I would say. So make sure that we are very careful when we are using internet and social media, and don't allow access to any other thing which is not required to be accessed by the app or anything which we are using. See, today, the whole business model, and most of us know about it. Uber and Ola do not own their own fleet. Facebook, Instagram, they don't create any content. E-commerce platform like Amazon, Flipkart don't have any inventory of theirs. Airbnb doesn't own any real estate. Zomato and Swiggy do not prepare any food. These are marketplaces, these are data aggregators through which we share all our personal data, which are then processed and used by others. We have to be very careful that with whom we are sharing our personal data online and what is the purpose for which that is being used. There is a saying, I think, which you all have also heard. If it is free, then you are the product. In internet, if anything is free, then you are the product. They are using us, our information. And that is their business model. Collect data, process data, and I don't know what happens to that data. Many times when you try to download an app, they'll ask for access to your contacts, ask for your gallery, photo, everything. I don't understand why they need access to all these things when I'm just simply trying to place an order on that app. So what I'm trying to say is that they are pulling too much data from us, and unknowingly, innocently, we are pushing all the data to them without realizing what can be the consequences. So let us be aware that we live in a digital world. This is going to be the reality of life. We have to be very careful when it comes to our personal data protection while Act is there.
we have to be very careful, I think, when we are using the internet and social media. The Act, definitely, I think I would highlight only 2-3 points out of the Act, that it is giving us, as I think the data owners, right to information, right to correction and erasure, right to grievance redressal, and right to nominate. I think these are fundamental rights that have been incorporated in this Act. So as data owners, we have to be aware of our rights. Have you all read the Digital Personal Data Protection Act? Sorry, I'm asking that question. This is one act, if you go through that, has come, first time I've seen any act which has illustrations in the act. So every clause, I think they've tried to explain with an illustration, which are very practical life cases that we see. We must read those illustrations to understand the act, and I found it really interesting looking at those illustrations which are covered as part of the act itself. Coming to the third speaker, Rajat Solanki, I think he spoke of Income Tax Act, practical cases, scenarios on changes in income tax regime in Budget 2023. I think, Rajat, you had a technical problem on the presentation because you put a picture of Nirmala Sitharaman. And that too, old regime and new regime. So don't let us not mess with the government. Yes, I think this new tax regime created a lot of confusion in the mind of taxpayers, which regime to adopt, how to decide. And I think Rajat clearly explained that wherever we as individuals are using that, we have to calculate what is the benefit between two regimes and then opt for the best regime that is possible. I think general consensus that is coming is that if you are low on investments and I think trying to maybe invest more on personal lifestyle and all, then new tax regime is better. But you want to have a lot more saving orientation, then the old tax regime is better. India today, as we know, is a consumption-driven economy. So I think government again has tactically put that they want you to consume more in the marketplace. I think the decision to switch to the new or remain in the old tax regime is, as Rajat also mentioned, based on the tax saving deductions and exemptions you are eligible. I understand in the old tax regime, there were 70 plus deductions and allowances available, and difficult to even remember those. I think most of them have done away with. Very few, I think, allowances, deductions are there in the new tax regime. But yes, as taxpayers, we have to be very mindful of what is beneficial for us and accordingly, I think, choose the regime. I would say that while I was not there in initial parts of the technical session, I think I must thank and I think congratulate the presenters for taking up these three important topics today. One is GST, one is DPD, and on the income tax. And I am sure you guys have really got insight in the short time about what these acts are. Yes, as I said, we have to do our own learning. But yes, I congratulate all the presenters for the efforts that they have taken. Before I conclude, I wish you all a very happy learning for 2 days and best of luck for your future. Thank you so much. What you said, sir, it was amazing, and your words really touch all our hearts. I am sure that everyone here will learn something from you. Thank you so much, sir. As it is rightly said that memories are meant to be cherished, and this memento is a piece of that magic. So, as our token of appreciation, we would like to honor our guests with a memento for their valuable presence.
Now, I would like to request CA Abba Parab sir, our Vikasa Vasai chairman, to present CA Manodaga sir, our chairman session with a memento. Further, I would like to request CA Lokesh Kotari sir, our branch committee member, to present our esteemed panel of judges with a memento. I request CA Ashok Kumawat sir and CA Nikuj Bangaria sir to come on stage. Audience, Talia. To express our sincere thanks to our distinguished speaker to bringing the session to a meaningful close, I would like to request Viral Shah to give a vote of thanks for this amazing session. Good morning, ladies and gentlemen. I stand before you with a profound sound of gratitude as we bring the curtains down on this amazing, enlightening, and thought-provoking session. It has been a session filled with valuable insight, engaging discussions, and evolving legal landscape that shape our nation. I would like to express my heartfelt thanks to our speakers who generously shared their knowledge, experience, expertise, and experience with us today. Their presentation not only illuminated the intricacies in the recent development, but also provided us with a roadmap in navigating the complexities that lie ahead. I would like everyone to give a huge round of applause for our speakers today. I, Rupali Karnani, I am Mihir Vijayvargiya. Welcome each one of you to this day filled with joy and emotions that is none other than our Mega Conference Vartaman, the power of now. Now, after this beautiful start, we would like to call on stage CA Shweta Jain, Regional Council Member, CA Ankit Rathi, Regional Council Member, CA Hudresh Panakia Sir, Regional Council Member. Our other branch committee members, CA Amit Agarwal Sir, Branch Chairman, CA Abba Parab Sir, Visay Vikasa Chairman, CA Tarun Dhan Sir, Vice Chairman of Vasai Branch, CA Daya Bansal Ma'am, Secretary of Vasai Branch, CA Shri Krishna Purohit Sir, Treasurer of Vasai Branch. I request all our dignitaries to be on dais, please. Thank you, everyone. Now, I would request CA Tarun Dhan Sir to welcome and present a bouquet to CA Shweta Jain Ma'am.
Thank you. Now I would request CA Daya Bansal ma'am to present a bouquet to CA Ankit Rathi sir. Thank you, ma'am. Now, I would request CA Krishna Purohit sir to present a bouquet to CA Rudesh Pankhania sir. Now, to start with our session, I would call CA Ankit Rathi sir. CA Ankit Rathi sir is a regional council member of ICAI. He is a managing partner at ADV & Associates. He has served as chairman of Vasai branch of ICAI for the year 2020-21. Let us hear it out from our past chairman at Vasai branch. Welcome, sir. Very good afternoon. Yeah, at the outset, let me first recognize the presence of Chairman Vasai Branch Amit Bhai Agarwal, Vikasa Chairman Aba Parab, Vice Chairman Vasai Branch Tarun Bhai, Secretary Daya Madam, Treasurer Krishna, of the Dais Lokesh, Managing Committee Member Vasai Branch, and my colleague in Council and immediate past Secretary Western India Regional Council Shweta Ma'am, Regional Council Member Rudesh Bhai, past Chairman Vimal ji Agarwal, Umesh ji, Parmod ji. At the outset, let me also congratulate to entire Vasai branch and Vikasa team for such a wonderful mega conference of student Vartaman. Friends, let me tell you, कल जब मैं लगभग 11:30 बजे के आसपास ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने तरुण भाई को फ़ोन किया. मैंने कहा तरुण भाई कहाँ हो? तो बोले वेन्यू पे हूँ. और आज सुबह आके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तरुण भाई घर कब गए? तो बोले 3:30 in the morning. विकास वसई ब्रांच एंड एंटायर वसई विकासा टीम कल आज सुबह मॉर्निंग 3:30 तक आप लोगों के लिए ये वेन्यू प्रिपेयर कर रही थी. तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू फॉर ह्यूज राउंड ऑफ अप्रोच फॉर एंटायर वसई ब्रांच एंड विकासा टीम. Friends, now we will discuss some 2-3 interactive things. आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हो कि एज ऑफ नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं? सॉरी, समवेयर अराउंड 3.5 to 4 lakh, राइट? और अपनी इकोनॉमी की साइज कितनी है, कितने लोग बता सकते हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग एकदम शांत बैठे हैं. यार फाइनल के स्टूडेंट हो मैक्सिमम. कितनी है? 3.7 ट्रिलियन $, राइट? तो 3.7 ट्रिलियन $, इकोनॉमी बनने में कितना टाइम लगा? अराउंड 75 ईयर की आफ्टर इंडिपेंडेंस जर्नी है. ठीक है, मैं इसको और ब्रेक डाउन करता हूं. जब फर्स्ट ट्रिलियन $, इकोनॉमी हुई थी तो अप्रोक्स 58 ईयर, देन फर्स्ट टू सेकंड अनदर 12 ईयर, 2 to 3rd 5 साल. अभी एवरी 2 ईयर 1 ट्रिलियन $, इकोनॉमी बढ़ रही है. और आने वाले टाइम में 1 साल में 2 ट्रिलियन $, इकोनॉमी बढ़ेगी. तो अप्रोक्स एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर लीडर्स एंड विजनरी लीडर मोदी जी कि भाई लगभग अराउंड 35 ट्रिलियन $, इकोनॉमी व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 100 ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस बाय 2050, राइट? अभी सबसे पहले मैंने क्या पूछा था, अपन नंबर में कितने हैं? तो इकोनॉमी की साइज 3.5 to 35 हो रही है. बहुत लोग बोल रहे हैं और प्रीटी श्योर भी है. तो क्या हम सब लोग श्योर हैं जो हम 3.5-4 लाख है वो 40 लाख हो जाएंगे? अपना इंस्टीट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन भी लगभग उतना ही पुराना है जितना इंडिया का है, राइट? तो 75 ईयर में अपने नंबर थे 3.5 to 4 लाख. तो अगले 25 साल में हम लोग 40 लाख होंगे कि नहीं? तो आप लोग सब सोच सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू ऑल आर कैरी
राइट? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग सीए इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर हो। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने सीए इंस्टीट्यूट ने मेगा कैरियर काउंसलिंग थीम लॉन्च की थी। तो मैं, रुदेश भाई, श्वेता मैम, वसई ब्रांच की कमेटी, सब लोग एक कॉलेज में गए थे, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि यार आप 12th के स्टूडेंट थे, कॉमर्स के, 200 का क्राउड था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि भाई आप में से कितने लोग सीए करना चाहते हैं? तो आपके हिसाब से कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया होगा? 40%। और कोई गैस? एनी गैस? एक भी बच्चे ने, एक भी स्टूडेंट ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया कि मेरे को सीए करना है, ठीक है। उसके बाद हर एक बंदे ने समझाया कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इतना वैल्यूशन है, सीए डिग्री मिलने के बाद ये हो सकता है, वो बहुत कुछ समझाया। फिर हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा यार एक बार वापस पूछता हूँ, पता नहीं कोई तो कन्विंस हुआ होगा, या कितने लोग कन्विंस हुए। 2 घंटे से हम लोग सब समझा रहे हैं, तो सिर्फ एक लड़की ने हाथ किया कि हाँ मेरे को करना है। तो मैंने कहा यार अजीब बात है, इतनी देर से सब लोग इतनी वैल्यू एडिशंस बता रहे हैं कि एक बार सीए बन गए तो आपको ये हो जाएगा। पीयूष गोयल से कंपेयर कर रहे हैं, आनंद जी राठी, मोतीलाल ओसवाल, इन सब लोगों से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर भी कोई मतलब हाथ हिला ही नहीं, टस का मस भी नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा यार आप रीजन तो बताओ, कोई रीजन भी नहीं बता रहा। बार बार 2-3-4 बार मैं खड़ा ही रहा, मैंने कहा रीजन नहीं बताओगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने अपना रीजन बताया कि सर बहुत हार्ड है। तो मैंने कहा यार एकदम इजी होता तो आपकी वैल्यू ही नहीं होती, थोड़ा तो हार्ड करना ही पड़ेगा, तो ही आप सीए बनने के बाद आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। उनको वापस समझाया, फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीए का कोर्स बहुत इजी है या बहुत हार्ड है, लॉजिकल है, बिना रिजर्वेशन का है, चीपेस्ट कॉस्ट है इन इंडिया में, और हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। ऐसा कोई भी कोर्स जो इतना अच्छा रिकॉग्नाइजेशन दे रहा हो रिजर्वेशन के बिना, सीए के अलावा कौन सा, आप लोग बताओ। तो उन लोगों को सीए और दूसरा रीजन क्या है, वो लोग हार्ड क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे अगर हम लोग सब सोचेंगे ना भाई क्या रीजन है। हर एक बच्चा बोल रहा है यार सीए का कोर्स हार्ड है, मेरे को सीए करना ही नहीं है। और जो जिस हिसाब से अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम लोग अगर अपने नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और 3.5 to 35 लाख नहीं तो 20 लाख 25 लाख कैसे होंगे। तो आप सब लोग इस चीज के ब्रांड एम्बेसडर हो। आप सब लोगों को जब आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, तो उनको बताना होगा कि भाई खाली ये मिथ है कि अपन बोलते हैं कि सीए का कोर्स हार्ड है या क्रैक करने में डिफिकल्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरा अपना। मेरे आज तक 10, 12 इवन कॉलेज में बिलो 60% थे, बट सीए फाइनल में मोर देन 60% है। तो वैसा नहीं है कि यार जो बच्चा 10th में या 12th में 85-90% ला रहा है वही फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। वो एकदम मतलब 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं मिथ है। मैं आपको 50 एग्जांपल दे सकता हूं जो बच्चे बिलो एवरेज थे, 60% के नीचे थे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बने हैं। कुछ लोगों ने तो रैंक भी लेके आए। और मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूं जिनके 90+ % थे, लेकिन 3, 4, 5 अटेम्प्ट तक सीए नहीं बने। मैं लगभग 2016 से वसई ब्रांच में एसोसिएट्स हूं। मैंने 6 साल वसई ब्रांच में एज ए विकासा चेयरमैन, ट्रेजरर, ब्रांच चेयरमैन का, मैंने बहुत लोगों से, बहुत स्टूडेंट से मिला हूं। तो ये एकदम मतलब रॉन्ग प्रिसेप्शन है कि यार मैं एकदम एकेडमिक स्ट्रॉन्ग हूं 10, 12th में या कॉलेज में तो ही मैं सीए में पास हो सकता हूं। और वही हम लोग चारों ओर बातें करते हैं कि नहीं यार सीए नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जाम्पल मैं मुंबई आया था आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप करके। हमारे टाइम पे मैंने जोधपुर से आईपीसीसी की तो कल्चर था, एक ग्रुप 2 और दूसरा ग्रुप 3 साल की आर्टिकलशिप पे आराम से 2 फाइनल का टाइम तो फिक्स है। 10th दी, 12th दी, सीपीटी हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप किया, ठीक है, आ गया। यहाँ आके सेकंड ग्रुप का एग्जाम दिया, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी। अभी ठीक है 3 साल का टाइम है, आराम से पास होना है, कोई स्ट्रेस नहीं है। एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, अकाउंट्स में 61 और बाकी 39। मैंने कहा ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो अटेम्प्ट तो वैसे भी नहीं है, फाइनल का टाइम है तब तक तो कर ही लूंगा। सेकंड अटेम्प्ट वापस दिया, 2 ही सब्जेक्ट थे, वही एकदम स्वेक था, क्या है हो जाएगा, वापस फेल हुआ। तो अभी थर्ड अटेम्प्ट सेकंड ग्रुप का आप सोचो, और फाइनल के एकदम नजदीक में। मैंने कहा अब नहीं हुआ तो भाई 6 महीने की गई, तो थोड़ी पढ़ाई की, तो उस समय मैंने क्रैक किया, ठीक है। अभी अगर मैं वो 2 अटेम्प्ट में फेल हुआ तो मैं एक बार रेलवे स्टेशन में अंकल के साथ अंधेरी ऑफिस आर्टिकलशिप के लिए जा रहा था, तो एक दूसरे रिलेटिव मिले और उनको क्या बोलते हैं कि यार इसका सेकंड ग्रुप भी इतना मुश्किल से हुआ, मेरे हिसाब से इसको छोड़ देनी चाहिए, जॉब ज्वाइन करवा दो, मुश्किल है, मेरे को तो नहीं लगता है सीए फाइनल कर पाएगा। गुस्सा तो अंदर से बहुत आता है, क्या करे, पर कुछ बोल नहीं सकते, भाई बड़े हैं, सीनियर है, जो है वो है। बोला, मैंने कहा यार बात तो अभी इन्होंने क्या बोली पता नहीं, फाइनल कर पाएंगे कि नहीं, पर ठीक है, चलते रहे।
लेकिन मैंने जिस दिन आर्टिकलशिप की लीव ली, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं 100% श्योर था कि मैं सीए फाइनल पास हो ही जाऊंगा। अंदर से ये कॉन्फिडेंस था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक होशियार था, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी में पढ़ लूंगा, 3-3.5 महीने का टाइम है, मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं आधे एग्जाम तो उसी टाइम पास हो चुका था जब मैंने सोचा। आप लोग अगर माइंड सेट यही रखोगे ना कि यार ये तो बहुत हार्ड है, मेरे से तो होनी ही नहीं है, 2 से 3 अटेम्प्ट में करूंगा, तो आप एग्जाम पास हो रहे हो, फेल हो दूसरी बात, आप उसी टाइम फेल हो चुके हो जब आपने सोच लिया कि ये बहुत हार्ड है, मेरे से हो ही नहीं सकता। तो आधा एग्जाम तो माइंड सेट का है। मैं इस पे आपको एक अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक कोट देता हूं, वंस यू विश अपॉन ए स्टार, वंस यू विश अपॉन ए स्टार, नो मैटर हु यू आर, वेयर यू आर, what you are, whatever your heart will desire will comes to you. सारा गेम माइंडसेट का है, अच्छे से पढ़ाई करनी है तो सीए डेफिनेटली होना है। मैं आप लोगों को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताता हूं, इस तरह के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के क्या बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 सीए हैं, ठीक है, सेम बैच में पास हुए, दोनों को 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। एक का सीटीसी समवेयर अराउंड 2-3 करोड़ है और एक अभी भी 20 लाख में काम कर रहा है। रीजन क्या है? दोनों सीए हैं, दोनों को डिग्री मिल गई और दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप ये दोनों को वैल्यू एडेड है। कैसा नहीं है कि एक को 8 अटेम्प्ट लगे या एक को फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों सेम अटेम्प्ट है, लेकिन फिर भी एक 25-30 लाख में जॉब कर रहा है और एक 2-3 करोड़ में पहुंच चुका है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको 100 लोग गिना सकता हूं जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है और उनकी सैलरी मोर देन करोड़ है। तो क्या रीजन है? तो नेटवर्क सबसे बड़ी नेटवर्क है, जो आप इस टाइम पे आप सब लोग आपस में एक दूसरे को जो नहीं जानते, आप एक एज्यूम करो, आप 12th क्लास में हो, रैंक करो, ठीक है, अभी आप सीपीटी में एग्जाम दे रहे हो, आईपीसीसी के दे रहे हो, फाइनल के दे रहे हो। अगर आप अपने आप को खाली किताबों से ही अपग्रेड करोगे और बाहर की दुनिया से अपग्रेड नहीं करोगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप अपने आप का बेटर वर्जन पाओगे। यहाँ आओगे तो आप देखोगे कितने लोग, अभी मैंने फर्स्ट सेशन में देखा पेपर प्रेजेंटर, कितने लोग बाहर से आए हैं, अहमदाबाद से, बाहर दूसरी सिटी से, तो अंदर से अपने आप के एक मोटिवेशन आता है कि यार ये बोल रहा है, मैं क्यों नहीं ट्राई करूं, क्या डिफरेंट चल रहा है ग्लोबली। तो इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंस है वो नेटवर्क का सबसे अच्छे मीडियम है, अपने आप को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा मीडियम है। इंस्टीट्यूट आप लोगों से 500 रुपए चार्ज कर रही है और 2000 रुपए की ग्रांट पर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट दे रही है, ताकि उनके जो स्टूडेंट्स है, जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी। अभी हर ब्रांच, हर रीजनल काउंसिल इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने कलीग को, अपने दोस्त को, स्टूडेंट, दूसरे फेलो कलीग को, सबको रिक्वेस्ट करो कि इस तरीके की कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, अपने आप को अपग्रेड करें। ये जो बेनिफिट है वो बाद में वापस नहीं मिलने वाला है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतनी बड़ी नेटवर्क है। मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि 15 और 16 दिसंबर को वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का नेस्को कंपाउंड में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है। समवेयर अराउंड 5000 स्टूडेंट्स अटेंड करने वाले हैं। तो आप लोग उसमें रजिस्टर्ड करो और अपने आप को और अपग्रेड करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आप सोशल मीडिया में कुछ भी गाइडेंस लो वो लो, पर जो सेक्रीफाइस आपके पेरेंट्स ने किया है वो कोई नहीं करेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। Thank you, C. Ankit Rathi, sir, for sharing the valuable insights with us. Also, thank you to Ankit, sir, for these kind words and recognizing our effort as committee members, and also reminding us for our duty as future chartered accountants. Thank you, sir. Now, I would like to take the privilege of introducing C.A. Shweta Jain, ma'am. C.A. Shweta Jain is the regional council member and the founder of the Shweta Jain and Company and serving as a partner of the firm. She is the immediate past secretary of WIRC and past chairperson of Vasai Vikasa. She has done her diploma in IFRS and Information System Audit. She is also a certified concurrent auditor and cooperative society auditor. But before going to her speech, there is one surprise for you. We would like to invite CA Rudyesh Pankhania, sir, for sharing his valuable insights.
I would like to take the privilege of introducing CA Rudesh Pankhania sir. Rudesh Pankhania sir is the regional council member and an action taker, multitasker, entrepreneur, mentor, public speaker, and the founder of Mado Group. Motivational thoughts are good, motivational actions are better is the slogan that he wears on his sleeves and follows the path. He is known for his flair and speaking and writing in free time. He is also a content writer on social media, Instagram, and LinkedIn. I would like to welcome CA Rudesh Pankhania sir on the dais. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Did you need that jump? Good afternoon, everyone. That sounds a nice one. How are you guys doing? मजा आ रहा है? आपकी आवाज में दम नहीं लग रहा? मजा आ रहा है? Remember, let's understand and note, मजा आना चाहिए, but it should be a blend of learning, right? Because not to forget, we are chartered accountant students. Correct? हम वो है जो शायद डीजे में भी जाता है, पार्टी में भी जाता है, बट वहां अगर क्लाइंट का कॉल आता है तो ओटीपी जरूर देता है. Right or wrong? We are the same CA students that before he or she actually wants to go on study leave, makes sure that all his or her client's work returns are completed. Yes or no? We are those same CA students that before going to anywhere else, knows and dedicates his or her entire time for the opposite party. I will touch upon a topic before that. Let me first thank the entire Vasai branch under whose leadership this entire amazing mega conference is hosted. Thank you Amit Agarwal ji, Chairman sir, Vice Chairman Tarun Dhan ji, Secretary Daya Madam ji, Krishna Purohit sir, Treasurer, and our very own Vikasa Chairman sir, Aba Parab, and the entire array of the Vikasa team and volunteers, my council colleague Shweta ma'am and Ankit bhai. I think I'll try to touch upon a point and in the next 5 to 6 minutes. Why are we doing what we are doing? While we often keep on doing things, thoughts are continuous. Aaj baithe ho aap ho, you came in the morning, sat, heard some amazing technical sessions, right? Amazing lined up speakers are going to be there today, tomorrow. The question is, think about the thought which you did not think of. I repeat and I quote. Think about the thought which you did not think of because you thought that you will think that thought when the time comes. Where is the time? When is the time to think that thought which you never thought of thinking? अभी खत्म नहीं हुआ है. सोचो उस सोच के बारे में जिस सोच के बारे में तुमने कभी सोचा ना था. सोचो उस सोच के बारे में जिस सोच के बारे में तुमने कभी सोचा ना था, क्योंकि तुमने सोचा उस सोच के बारे में फिर सोचूंगा. कहां है समय, किसके पास है समय सोचने के लिए उस सोच के बारे में जिस सोच के बारे में तुमने कभी सोचा ना था. तालियां बज जाए. अरे यार इतने भी ताली बजा दोगे? थोड़ा एक और. महाराष्ट्र में रहते तो मुंबई में तो चलेगा. विचार करा विचार त्या विचाराचा ज्या विचाराचा तुम्ही कधीही केला नाही विचार. विचार करा त्या विचाराचा ज्या विचाराचा तुम्ही कधीही केला नाही विचार, कारण तुम्ही विचार केला की त्या विचाराचा विचार मग करू. कुठे आहे वेळ, कोणाकडे आहे वेळ विचार करण्याची त्या विचाराचा ज्या विचाराचा तुम्ही कधीही केला नाही. अब बजा लो ताली. The question is, while we are so engrossed in actually doing things, we often forget why are we actually doing things? Why do we do what do we do? The entire thing is what guides our thought process. Have we actually gone and thought? Somebody says कि सुबह उठ के योगा कर लो. Somebody says ध्यान कर लो. Somebody says walk पे चले जाओ.
कुछ लोग कहते हैं ये तो पुराने हो गए, हम गाने सुन लेते हैं, and everybody is going to advise us with all different ways. The question is, no one size fits all. Why? Because while we all are human beings, we are all of them created and cultivated in different manner. We all come from different place. We're all born and brought up at different place. We've been nurtured, and what we are today is a combination of varied things. And that is something guides our thought process. I'll put on a couple of skills which becomes most important, and why, as Ankit Bhai rightly guided us in terms of, while we do articleship, everything, and so many, things that the institute is being doing, are we actually utilizing the power of the day? I'm very glad that the entire team has chosen the topic Vartaman, the power of now. Whatever we are doing today, our emotions are based on what we've done earlier. I'll give you a very classic example. आप यहाँ आ रहे हो, ट्रेन से आए, बस से आए, ऑटो से आए और उसके साथ झगड़ा हो गया. How is your mindset? आप जब यहाँ आए हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वही चीज चल रही है फिर भी, right? What happens? If you have to take some decision next time after that when you've come here, what happens? Your decision is automatically taken care because of your earlier thought process, because you've not received back to the neutral position on your mind. And that becomes the power of now. That's Vartaman. We're often so much involved that we keep on planning for the future, and it's nice to plan for the future, which is always uncertain. Do we actually forget to live in the present? Do we actually forget to actually know what we are doing in the present and why are we doing in the present? And that is something which is very essential, because we do not know what will happen tomorrow. While we could only plan, we could only think about things that would be there tomorrow. But today, you can create and you can actually do. While thoughts are nice, but if you forget actions, it's very difficult to be there. The most important skill, why should you keep on doing these conferences, maybe sessions, maybe things, while we often compare, कि यार college life नहीं है, वो life नहीं है, ये नहीं है. Let's understand, as I said, the skill which is going to be most known is the soft skill, of course. How better can you communicate? That's number one. The second most important skill is going to be leadership skills. This array of 100 volunteers who've been standing here, I mean, amazing. Can we have a huge round of applause for all these, who making sure that they're going to stand and not sit, and some volunteers at the food counter, everyone. What's going to be happening? Do you know when you're talking, with whom are you talking? Them. While 5, 10, 15, 20 are talking to only one person whose communication is increasing and becoming better. Of course, them. While all of these are going to take some decision, because there are a lot of things which we plan कि ऐसा होना चाहिए, but question is, at the end time, things could be always different little. Why? Because we are not robots. We are humans. Because we are driven by emotions, and that is why, while we talk about emotional quotient, has little on a higher note than intelligence quotient. So, the two most important skills which I was talking about, number one, in terms of communication. Now, communication does not mean whether you can talk in English. And that's why, and that was the sole reason I spoke that entire quote. And let me tell you, that quote you will not find anywhere on Google or any other book, I guarantee. It's not from anywhere. Which was spoken in all three languages, that language does not matter. Importance is going to be how do you communicate, and communication also does not matter that whether can you come and give a speech in front of 500 people or not. What is going to be important is जो यहाँ है उतना ही 100% सामने वाले तक पहुँचाया नहीं. फिर आप यहाँ से पहुँचा दो या यहाँ से पहुँचा दो या यहाँ से पहुँचा दो. It all depends on you. How do you craft that? The second, leadership skills. Quite possible we all of them, and our experiences are going to be different.
We do articleship from a small size firm, maybe a mid-size firm, maybe a higher mid-size firm, maybe a big four, or anywhere else. And every firm has got a different culture set, right? Question is, your learning should not just be based on how is your firm's culture. Remember this. So that you don't sit and blame anybody else. If you have to ever blame yourself. Take leadership in your offices. Take leadership elsewhere. In ICI, the number of places that you can, actually go, contribute things, that's immense. And leadership does not mean that you're going to do some particular thing at a very high level. We start from very small things, right? Small beginnings, essentially. The next one I'll touch upon, the most important part, social media. How much do we use or do we mindlessly scroll? I don't know how. मेरे को बड़ी बुरी आदत है स्क्रॉल करने की नहीं मैं अपने मोबाइल में मूवीज गाने देखता सुनता कुछ नहीं है सो आई ट्रैवल बाय ट्रेन एंड ट्रेन में सिंस आई ट्रैवल बट आई डोंट हैव एनी मूवीज इफ यू पिक अप माय फोन कोई मूवी कोई गाने कुछ नहीं मिलेगा unless you have to edit a video and everything I'll Google or download and remove that as well तो मैं ना बाजू वाला अपने मोबाइल में क्या कर रहा है देखते रहता हूँ तो कोई मूवी देखता है तो मूवी अपनी देख के भी हो जाती है वो क्रिकेट देखता है तो वो भी कई बार वो बाबू सोना लिखते रहता है तो वो भी समझ में आ जाता है अपने को हाँ अपने खुद ही बाबू सोना लिखने की जरूरत ही नहीं है राइट तो पूछता है बाबू ने खाना खाया मैंने बोला हाँ खा लिया भाई सो द क्वेश्चन इज a lot of times and you must have observed this as well people scroll वो because of internet connectivity in the train we all are majority of them from Mumbai right because of the internet connectivity वो फोटो वीडियो खुला नहीं है पर फिर भी लाइक कर दिया है अरे क्यों किया लाइक लोग एक दूसरे अरे हाँ मैं तो करता हूँ ऐसा अरे यार इनको कैसे पता चल गया we're all same we keep on scrolling the question is are we learning make sure depending on where you're active maybe in Instagram LinkedIn Facebook or anywhere else make sure you use that entire network to create and have some people skills learned otherwise it's of no use of that entire network and that becomes one of the most important and last to quote while motivational thoughts are good positive बहुत सारे messages good morning सब group में morning में आ जाएंगे motivational thoughts are good remember always motivational actions are better because if you do not act upon it's no use of thought thank you so much everyone have a good day have a great learning thank you Now, we would like to call CS Shweta Jain for her insightful words. Welcome, ma'am. Yes. Thank you. Thank you. Team Vasai branch, led by Chairman Amit Agrawal. Team Vasai Vikasa, led by Aba Parab. All the past chairmen of this Vasai branch who all are present here. Convener, deputy convener of the study circle of this branch. My council colleague and all future chartered accountant. A very good afternoon to all of you. After hearing Rudesh with so much energy, motivation, I'm sure आप लोगों की expectations भी ऐसी कुछ होगी कि something more should be there, right? So, but let me tell you that taking over from Rudesh's word, yeah, definitely I'm not going to jump. So, as rightly he said that, fun के साथ साथ learning भी होना चाहिए, right? So, articleship importance, learning, so much technical sessions you are going to have in this 2 days of national conference. And I'm sure this 2 days is going to be full of fun and learning. And let me congratulate to both the chairman of this branch, Vikasa chairman and branch chairman, for success of this mega student conference. क्या एफर्ट्स हुए हैं वो मेरे काउंसिल कलीग अंकित ने आप सबको बताया
कि आधी रात तक since last 1 month these people are trying so hard to get maximum participations. From my side, I was talking and thinking what should I say and what should I communicate to my future chartered accountants. Nutshell बोलो या डिटेल में बोलो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज ए स्टूडेंट्स ऑल्सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट. आर्टिकलशिप पीरियड में बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, टेक इट सीरियसली अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, बट डेफिनेटली आर्टिकलशिप पीरियड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड समथिंग अबाउट एथिक्स, आप लोगों का है ना टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स, और आई थिंक 16-20 मार्क्स भी है. एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स उसको या तो चॉइस पे छोड़ के जाएंगे या हम पढ़ेंगे नहीं. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट. थियरी है, एथिक्स है, उसको क्या पढ़ना है, राइट? बट ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉर्टेंस नहीं है. What is ethics? Ethics is something which we should teach to you, और क्या हम ethics सिखा सकते हैं किसी को भी? This is not something that should be taught. It is our moral principle, our values, our upbringings. It shows in our behavior how much we are ethical. Right? But still, institute ने ये chapter भी रखा है, not for the students only, even for members also. और डोंट वरी, और आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमको नहीं आता है. जब मैं मेंबर्स के सेशन लेती हूँ एथिक्स पे, उनके भी यही रिएक्शंस होते हैं कि एथिक्स कौन पढ़ता है, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सीखने की क्या ज़रूरत है. सी वेरी ट्रू कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है, और वो आर्टिकल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, जब आप ऑडिट करते हो, सो ये सारी चीज़ें आपके भी दिमाग में होनी चाहिए कि वी हैव टू फॉलो द एथिक्स. सी ICI कोड ऑफ एथिक्स क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या है, क्या हम कोड कर सकते हैं? वी कैन नॉट कोडिफाई द एथिक्स, बट equally to that we had to codify our ethics, because every profession has their own code of ethics, not only for the chartered accountant, even for doctors, for advocates, they also have their own code of ethics. So we as a ICI also has our own ethics. And of course, we means ICI is a member of International Federation Accounting Body, which we called as IFAC. So हम बोलते हैं ना, we are the second largest accounting body, our chartered accountant are capable enough to serve to the globally, right? So ऐसे ही ये designation और recognition नहीं मिलती है, उसके पीछे बहुत सारा process है. तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि Indian chartered accountant are high in demand, not only in India, even globally. अगर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई सिंगापुर में हायर करता है 72 लाख के पैकेज पे, या कहीं पे USA में पीपल आर हायरिंग देम, विच मीन्स हमारी रिकग्निशन है, बट एट द सेम टाइम उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ एक इंस्टीट्यूट का होता है जो उसको रन करता है. सो जो भी इंस्टीट्यूट, एसोसिएशंस पार्ट है IFAC के, विच मीन्स वी आर मेंबर. अगर जो भी मेंबर है IFAC के, दे ऑल हैज टू फॉलो सम रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइन फॉर द सेम, अदरवाइज आपको वो रिकग्निशन नहीं मिल सकता. सो जब इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स चेंज होंगे, हमारे यहाँ भी चेंजेस होंगे. सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स. तो जब आप पढ़ते हो उस चैप्टर में, तो आपको क्या लगता है कि मुझे ये सब याद करना है कि व्हाट इज माय प्रिंसिपल और ये? नो, नथिंग इज लाइक दैट. वेरी सिंपल. पूरा कोड ऑफ एथिक्स आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बना हुआ है. क्या मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स चेंज हो सकते हैं कभी भी? एज अ प्रोफेशनल, एज अ आर्टिकल्स, बिकॉज ये कोड इक्वली हम भी जब ऑडिट के लिए जाते हैं तो हमारे को सबसे पहले एज अ प्रिंसिपल पार्टनर मेरे को भी ये डिक्लेरेशन देना है कि वॉट एवर द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू मी, माई आर्टिकल, माई स्टाफ इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम.
और आपको भी ये डिक्लेरेशन, जो भी बिग फर्म्स में अगर कर रहे होंगे आर्टिकलशिप, तो आपको एक डिक्लेरेशन, एक सर्टिफिकेट आपको भी देना है फर्म को, दैट यू आर ऑल्सो बाउंड टू फॉलो द एथिक्स, द प्रिंसिपल्स। तो ये प्रिंसिपल क्या है, टेक्निकल टर्म्स की हम बात ही नहीं करेंगे कि बुक्स में क्या लिखा है, फॉरगेट अबाउट इट, पर मीनिंग क्या है उसका वो समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिंसिपल क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने ये पढ़ा है कि मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ और स्टैट्यूटरी ऑडिट हूँ, ये दो ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में नहीं कर सकता, या हम कहीं पे जाते हैं तो वी हैव टू बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर, इवन फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। आपको बोला ना यहाँ के लिए भी ड्रेस कोड है, राइट? आपको ऐसे ही तो आने नहीं दिया, फॉर्मल ड्रेस में आना है। क्यों? बिकॉज ये आपकी आइडेंटिटी बताता है। यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, यू आर अ प्रोफेशनल पीपल। आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ दिस एस्टीम प्रोफेशन, प्राउड प्रोफेशन। दैट्स द रीजन वो ड्रेस कोड हो या आपका बिहेवियर हो, हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है। सो हर जगह आपको वो मेंटेन करना है। सिंस लास्ट 3-4 years वी आर hearing so much noise about the chartered accountant, right? इसलिए किसी को लगता है क्यों करने की भी ज़रूरत क्या है, इतना अगर नाम खराब करना है तो इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर दिस प्रोफेशन। पर किसी के कुछ बात कर देने से क्या हमारे प्रोफेशन की वैल्यू डाउन हो जाती है? नो, जस्ट बिकॉज ऑफ सम चार्टेड अकाउंटेंट नाउ हियर एंड देयर, आजकल तो कोई भी कुछ भी हो गया, विच मीन्स चार्टेड अकाउंटेंट को नोटिस भेज दो, उनको कॉल कर लो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फॉरगेट अबाउट कि उनका डिसीजन क्या है, बट एक बार न्यूज में चार्टेड अकाउंटेंट आ जाते हैं, राइट? सो इसका ये मतलब है क्या कि चार्टेड अकाउंटेंट वॉज नॉट फॉलोइंग प्रॉपर ethics or proper, they are not delivering the proper services? The answer is again no. हम सब कुछ फॉलो करते हैं, बट कई बार ये भूल जाते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं। एज एन आर्टिकल आपको सबसे पहले जो भी काम आप करते हो, एज एन ऑडिट के वहाँ पर जा रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, फर्स्ट थिंग आप लोग क्या करोगे, एक बुक लोगे, अपने सीनियर्स को बोलोगे कि जस्ट ब्रीफ अस, हमको क्या करना है, राइट? यही करते हो आप लोग। सो व्हाई डोंट यू प्रिपेयर अ प्रॉपर चेकलिस्ट? दिस इज माई डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज रिटन इन माई कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स के आपके चैप्टर में लिखा है ये, बट हम वो नहीं कर रहे हैं। एक डायरी लेके जा रहे हैं, सीनियर्स से नोटिंग करवा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, प्रोसेस लिख रहे हैं। बट अगर आपके सीनियर्स ने आपको नहीं भी बोला है, देन ऑल्सो आपको ऑडिट चेकलिस्ट निकालनी है और प्रॉपरली फिल करनी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कौन क्या काम कर रहा है, उसकी ब्रीफिंग, उसके रिमार्क्स, ये आदत आप अभी से डालो और प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में अपने सीनियर्स को प्रेजेंट करो। क्या ये हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यही चीज़ आपके प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में लिखी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो आपको जो क्वेश्चंस भी आएंगे इसी के ऊपर आएंगे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है, केस स्टडी दे दिया, इंटेग्रिटी वॉज फॉलोड और नॉट, इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल थी, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल क्या है। ये वर्ड सुनने में हमको बहुत बड़े लगते हैं, बट द मीनिंग इज वेरी सिंपल। Can I compromise my integrity at any point of time or at any situation? The answer is no. If you are a professional person, आपकी integrity always should be unquestionable. और ये क्या, ये मेरा first principle है, fundamental principle. So सारी चीज़ें उसी के आसपास घूमती है। What is my fundamental principle? There are 5 principles. Integrity भी हमने सुना है। We cannot never compromise. There is no choice in that. You have to maintain that kind of gesture. The second principle मेरा क्या बोलता है? Objectivity. I have to be very, very objective. Forget about कि आप कहीं पे जा रहे हो, आप उनको जानते हो, उनके साथ में थोड़े से familiar होना, ये सब करना ही नहीं है. You have to be very, very objective. जिस काम के लिए गए हो उसी काम पे फोकस करना है. इफ यू आर देयर एज एन ऑडिट पर्सन, ऑडिट स्टाफ,
You have to do that activities only. No need to be more familiar with their staff, to talk on that. No, this is not allowed, and this is written in your professional ethics chapter. You have to be very, very objective. Third principle my says is confidentiality. आप जब ऑडिट प्लेस पे जाते हो, आपके पास में इतनी सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी की होगी जितनी शायद प्रिंसिपल पार्टनर के पास नहीं होती, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन टू डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द कंपनी. सो आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है, यू कैन नॉट शेयर इवन विथ योर कलीग जो आपके साथ उस ऑडिट पे नहीं है. बट हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं. हम अपने ही फ्रेंड्स हैं, अपने ही आर्टिकल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम डिस्कस करते हैं, आज हमने ऑडिट प्लेस पे क्या किया, क्या थे डॉक्यूमेंट्स, क्या थे, क्या उसकी रिमार्क थी, क्या डिसीजंस हमने लिया. दिस इज नॉट इट अलाउड. You cannot share any information of particular client का किसी भी second person के साथ, because again ये भी आपके ethics में लिखा है. See, अगर principal ने आपसे कोई document sign करवाया नहीं करवाया वो secondary matter है, but the first thing, your articles, you are serving on behalf of your principal partner to the audit client. So that's the reason your responsibility is there. You are bound to follow whatever is written in your ethics paper. So be very careful जब भी आप आर्टिकलशिप पीरियड में हो, किसी के भी साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, और ये मेरा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल बोलता है. फोर्थ थिंग, जो काम आप करने जा रहे हो उसका नॉलेज आपको नहीं है, आपके साथ कौन सीनियर है, उनके साथ आपने पूरा डिटेल गाइडेंस लिया है या नहीं लिया है, उस चीज़ का नॉलेज है या नहीं, प्रोफेशनल कंपीटेंस एक वर्ड है, वो आपका फोर्थ प्रिंसिपल है. एंड प्रोफेशनल बिहेवियर आपका सिर्फ आपके ऑफिस में या क्लाइंट प्लेस पे ही नहीं, एवरीवेयर आपका बिहेवियर प्रोफेशनली होना चाहिए. कहीं भी आप जा रहे हो, आपको फॉर्मल में जाना है, ये तो आप अगर बिग फर्म्स में जाओगे तो वहाँ आपको कंपलसरी बोलेंगे. यू हैव टू गो एवरीवेयर इन योर फॉर्मल्स ओनली, जहाँ जहाँ पर भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, विच मीन्स यू शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल, यू शुड टॉक लाइक अ प्रोफेशनल. सो एथिक्स इज नॉट समथिंग इज लाइक हमको किसी को पढ़ाना है या समझना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ कि आई हैव टू फॉलो दिस एथिक्स. This is something written in your paper. And then importance of your articleship period. See, हमने सारे jokes भी pass किए. I know and agree that your journey till you reach to the goal when you become a chartered accountant, तब तक की journey is really tough. But वो बोलते हैं ना, सोने को जितना हम तपाते हैं उतना ज़्यादा वो खरा होके निकलता है. एंड दैट्स द रीज़न वो आर्टिकलशिप पीरियड आपका, और अब तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई है. वंस यू कंप्लीट योर इंटर, देन आपको आर्टिकलशिप में एंटर होना है. सारी ट्रेनिंग्स आप कंप्लीट कर लो, इंटर क्लियर कर लो, और उसके बाद आर्टिकलशिप में आओ. सो योर 100% फोकस विल बी इन आर्टिकलशिप ओनली. सो दिस आर्टिकलशिप इज योर फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स योर करियर, बिकॉज यहीं से आप आगे जाने वाले हो. सबसे पहले हम इंटरव्यू फेस करते हैं, वो भी आपको ओरिएंटेशन में थर्ड लेक्चर्स में आपको वो भी सिखाते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो किसी फर्म में तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सो फर्स्ट ईयर जो भी आप सीखते हो, डू प्रैक्टिस इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. तब तक जब सीए बन जाओगे, तब आपको जब रियल में इंटरव्यू फेस करना है, तब आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू जब हमने रियल फेस किया था और हमने क्या क्या लर्निंग्स ली है, और वो जो 3 साल की आर्टिकलशिप पीरियड की आपकी लर्निंग्स है वो तब काम आती है. सो डोंट टेक इट लाइटली. आप सीरियसली आर्टिकलशिप को लेकर जितना ट्रेनिंग ले सकते हो आप लो. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टच अपॉन इज
as rightly started and explained by the Rudesh about the social media. So I just would like to touch upon a little on social media. You all are there on the social media, right? बट जो भी न्यूज़ उस पर आती है और हम उसको इमीडिएटली फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगर वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है तो विद इन अ सेकेंड्स वी फॉरवर्ड लाइक एनीथिंग, विदाउट रीडिंग द फुल न्यूज़, विदाउट वेरीफाइंग द न्यूज़ कि वो क्या है, हम इमीडिएटली उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं. वेदर इट इज़ गुड और बैड, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट डू इट. इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी मैसेज, कोई भी न्यूज़ अगर सर्कुलेट हो रही है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, एनीवेयर, ट्विटर पे, अनलेस अंटिल इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रॉपर एंड राइट सोर्स, डोंट रिलाई ऑन इट. हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशंस आपकी सिर्फ हेडलाइन में होगी और उसकी डिटेल उसमें होती ही नहीं है, एंड वी जस्ट बिलीव ऑन द हेडलाइन एंड स्टार्टेड सर्कुलेटिंग दिस इंफॉर्मेशंस, which is not right. Or especially if this news is something related to negative news, then don't do it. आपको कोई भी कंप्लेन है, ठीक है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये कंप्लेंट्स होती है कि nobody is picking up the call in institute. कहाँ पे मेल का रिप्लाई नहीं है, कॉल्स का रिप्लाई नहीं होता है, तो हमको कहाँ जाना है, क्या बात करना है, and we have started posting on the social media. Nobody is replying, it's a worst institute, something like that. So agar ye sab aap likh rahe ho, you tell me what are you doing, which means you are cribbing about your own self. You are also going to become a part of this proud profession one day. So अगर आप उसको आज बोलते हो कि ये इंस्टीट्यूट बराबर नहीं है, तो then why you want to become a chartered accountant? So first, respect your profession. Understand that and then start. और कोई भी न्यूज़ होती है, आपको अगर वेरीफाई करना है, all the leaders are there. आप लोकली हो, यहाँ पे वसई ब्रांच के लीडर्स हैं, रीजन में we all are there. सबके नाम, नंबर, ईमेल आईडी are there on the website. Just talk to them, hear from them. और अगर लगता है उसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या हो सकता है, they will guide you, they will suggest you, and then act accordingly. But don't write any negative thing about any leaders, anything about staff of the ICI or about the institute. This is समथिंग इज लाइक हम अपने ही बारे में गलत बोल रहे हैं. जब आप खुद अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स? सी, आधे से ज़्यादा आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि वो इंस्टीट्यूट में आके रोज देखती है, हु इज द गवर्नमेंट पीपल, कि उनको पता है कि इंस्टीट्यूट में क्या आ रहा है? अगर हमारे अगेंस्ट में एक भी डिसीजन लिया जाता है या लिया गया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज रिटन ऑन द सोशल मीडिया. प्लीज अंडरस्टैंड उसकी क्या ग्रेविटी हो सकती है जो आप लिख रहे हो, बिकॉज आप लोगों का सोशल मीडिया जितना पावरफुल है, जितना इन्फ्लुएंशियल है, उतना हमारा नहीं है. सो हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो शायद वो सब तक नहीं पहुंचेगा जितना आप लोग उसको सर्क्यूलेट करोगे. सो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में आप कोई भी न्यूज़ अगर फॉरवर्ड कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल. आप अगर इंस्टीट्यूट को और क्लोजली देखना चाहते हो, देन बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज. अभी आई थिंक इन दोनों ने भी बोला, आपने देखा विकासा टीम ने भी एक्सप्लेन किया, लॉट ऑफ एक्टिविटीज इंस्टीट्यूट इज डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स. मुझे नहीं लगता आप लोगों को कितना पता है. छोटे से छोटे प्रोग्राम से लेके स्टूडेंट्स के एक छोटे इवेंट से लेके ये नेटकॉन मेगा कॉन्फ्रेंस तक, हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट पे, आपके टेक्निकल टॉपिक्स पे सेमिनार, वेबिनार होते हैं, मोटिवेशनल सेशंस होते हैं. आई डोंट नो हाउ मच यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट. सो बी एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट ऑलवेज. आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्टली करो. जैसे ही जब भी मौका मिलता है, प्लीज़ be a coordinator of any kind of one event
एक दिन के लिए आप उनका अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो. इवन आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बनने के बाद में सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं कि ठीक है अब तो हम सीए बन गए, जॉब भी मिल गई, अब क्या ज़रूरत है इंस्टीट्यूट की. डोंट डू दिस, बिकॉज क्या बेनिफिट है आपकी उस मेंबरशिप के और इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के, या आपको भी नहीं पता है. अभी लास्ट मंथ वन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ कॉन्टेक्टेड मी. उनको यूएसए में किसी इंस्टीट्यूट में जाना था फॉर फर्दर स्टडीज़. हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे MOUs हैं विद 48 कंट्रीज़, विच मीन्स अगर आप CA बन जाते हो और आपको ऑस्ट्रेलिया के CA की डिग्री चाहिए तो देयर इज़ वन MOU. तो आपको सिर्फ एक पेपर क्लियर करना है एंड यू विल गेट अ CPA ऑस्ट्रेलिया, CPA आयरलैंड, CPA कनाडा, लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़ के CA के साथ में इंस्टीट्यूट के टाइप है. बट आप वो बेनिफिट कब ले पाओगे? जब आप CA बनने के बाद मेंबरशिप लेते हो. तो द फर्स्ट थिंग आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट is to get the membership of ICI, and then you have to continue this membership. Every year you have to renew it. तब आप वो benefits ले सकते हो. तो जब आपको फॉरेन जाना है, आपको एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लगता है. Their institute will ask you that your ICI has to give us a good standing certificate. Then only you will be eligible to continue the other courses over there. So for that, you have to continue with the membership of ICAI. So this is my earnest request कि आप इंस्टीट्यूट से जुड़े रहो, जितना हो सकता है उतना contribute करो, जैसे हो सकता है. 1 hour, 2 hours, 3 hours. And one more thing. We all are master in our technical subjects. But somehow soft skill को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं. Rudesh also was touching upon it कि soft skill is really, really important. That's why ICI started a GMCS and orientation courses. पर आपको लगता है कि 15 दिन में हम आपको एकदम ट्रेन कर देंगे एंड यू विल बी कंप्लीटली मास्टर इन दैट? That's not possible. So the complexity now has arises. You all have to be expert in communication skill also. Whatever you know, you should be able to present in front of the public that इतना मुझे आता है. There is no doubt about it कि हमको अगर ऑडिट आपका सब्जेक्ट अच्छा है, टैक्स अच्छा है, तो उसको आप दूसरों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वो प्रैक्टिस अभी से डालो. अभी से जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, स्टार्ट जॉइनिंग सम ग्रुप डिस्कशन, वीकेंड्स पे मिल लो, 15 डेज में चले जाओ एक प्लेस पर सारे लोग मिलके, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. उसको रेगुलर रखो विद इन 3 years जब आपका आर्टिकलशिप पीरियड है. आर्टिकलशिप पीरियड में भी ऑफिस में शाम को जाने के आधे घंटे पहले ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो. नाउ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गिविंग यू द स्पेस दैट ठीक है एवरी सैटरडे हम लोग जैसे अपने ऑफिस में करते कि एक प्रेजेंटेशन, एक आर्टिकल देगा एक सब्जेक्ट पे. सो दैट वे यू ऑल्सो प्रमोट योर सेल्फ. तब जाके आपकी वो 3 साल में जब प्रैक्टिस होगी, तो जब आप जॉब में जाते हो तो सबसे पहले कंपनीज आपसे जो एक्सपेक्ट करती है, हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ. बिकॉज देर इज अ कंपैरिजन, ऑलवेज कंपैरिजन बिटवीन MBA फिनेंस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट. कंपनी फील्स ठीक है MBA फिनेंस भी तो एक्सपर्ट है एंड ही कैन प्रेजेंट इन अ बेटर वे, सो व्हाई नॉट हायर टू अ MBA finance, why we should hire to the chartered accountant. So be prepared yourself for such type of interviews and such type of questions. So वो practice भी आपको साथ साथ में करनी है. जितना मुझे आता है मैं उसको कैसे बता सकता हूँ या कैसे बता सकती हूँ. Start doing that. That's the reason orientation and GMCs, the idea behind पहले नहीं था. But the idea behind of all this is 15 days में आपको हम एक briefing दे रहे हैं. आर्टिकलशिप के पहले आपको ओरिएंटेशन करना है,
ताकि आपको वो 3 साल में ये समझ में आए कि जो आपने 15 दिन में पढ़ा था, चाहे वो इंटरव्यू प्रोसेस था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था, आप खुद देखोगे कि जब आप यहाँ पर आकर बोलते हो और खुद पढ़ते हो उसमें कितना डिफरेंस है। सो ये प्लेटफॉर्म, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर, ये सब निकलना चाहिए। आपके ऑफिस में आप 5 लोगों के सामने बोलोगे, बाद में 15 लोगों के सामने, मे बी वन फाइन डे यू कैन स्पीक फ्रॉम दिस डायस। आज जो स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहे थे, आपको क्या लगता है वो लोग ट्रेंड हो ही बॉर्न हुए थे? दे हैव ऑल्सो डेवलप दिस इन देमसेल्फ। सो यू ऑल्सो शुड ट्राई दैट एटलीस्ट एक दिन हम लोग भी यहाँ पे आके बोल सकते हैं। सो स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल। दिस इज रियली really important. I think our president is going to be here at any point of time. So we'll... They just, yeah, I think. He has just reached? Almost on the way. No, I think almost reaching. Okay, fine. So till that time, I think if you guys have any questions, if you want to ask anything, want to know anything from us, Hridesh is also here, I'm also here, you can... Students, we understand that we're a little delayed, but I think, let me tell you, we are awaiting for one of the most amazing, session, and President Sir is there, and I'm sure we've all seen him on social media, his videos, his oratory skills, and his leadership. It's the best time when we hear him live, so he could be just any moment. Till the time, if you've got any questions for us, I'm there, Shweta is there, or anybody, happy to answer. And we'll be having President Sir anytime here. Since nobody has no questions, let us move forward with 2 beautiful lines. इस मौके की कुछ खास है बात, जिस कारण से हम सब हैं साथ। लिखे हम अपनी किस्मत ICI के साथ कि दुनिया भी देखे आज कि हम में है कुछ बात। Guys, requesting you to please clear your doubts. Both the RCM are present on the stage. Ma'am, I want to ask about the grace mark system, like how it is been awarded. See, I think President Sir is the right person to answer you on that. But definitely grace marks होते हैं, but for proportionate. हेलो, क्या क्वेश्चन था? ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं? ग्रेस से। डिपेंडिंग पहले कितने ग्रेस है आपके पास जीवन में, उससे मिलेंगे। Simply put. Any other questions? Yeah. My request to everyone, please be seated as we are waiting for President Sir. And there are a few things which you will enjoy during that session only, and it couldn't happen otherwise. Till that, any questions if we've got, we're happy to take till that. Yeah. Any. Come on. I thought while you've come here, there would be a lot of questions that you would have. Yes, ma'am. I think there's somebody. Go ahead. Can somebody pass the mic, or you could just stand and be a little loud? Yeah. नहीं. आओ मैम, बहुत सारे forms लेना चाहेंगे आपको. We are ready. The important thing is, आपको करना क्या है? I mean, अगर आप ये बोलते हो कि मुझे ऑडिट में आगे जाना है, तो then choose such type of firm जहाँ पर ऑडिट्स ज़्यादा है. आपको लगता है I want to make a career in future in a tax, तो then tax में. और आपको लगता है नहीं मुझे सब कुछ चाहिए, तो then join some mid size or small size firm where you will get so many things together.
at one place. So it all depends. Plan your 3 years or after 3 years career now, that what you want to do after becoming a chartered accountant. That questions का answer आज आपके पास में होना चाहिए little bit. So then choose accordingly. So it will help you. और इतनी सारी firms में से फिर आधी firms तो आपकी वैसे ही shortlist हो जाएगी. And I love a lot of advertisements of the firms are available on the website. Yes. And on the notice boards at WRC BKC, the Vasai branch office, and on the website as well. And कुछ आप just बोलो articleship चाहिए यहाँ पे, you know, at least 10 firms would be saying कि आ जाओ हमारे यहाँ पास आ जाओ. You are hired. Yeah. Interview भी देने की जरूरत नहीं है. Any more questions? Come on, can we have some interesting questions? Yeah. My question is for you, sir. You're the one of the most, one of the best public speakers in CA fraternity. So I want to hear from you. So what are your biggest fears when it comes to public speaking, according to you? Because I am kind of person, I learn from others' mistakes. And what are your, according to you, should be key learnings if one want to prosper in public speaking? Okay. Okay. The question is for you. This becomes a difficult task. I think not that if I'm talking a little confidently, not that there has not been a time that we've not got blank. I think there have been times and there have been days that I've gone on stage and I couldn't remember a line, you know, what I had to talk. I think we've seen that as well. So I think biggest fear could always be if a thought does not come to your mind. But I think that fear should not exist because thoughts could not stop to come to your mind. If you have a skill of observing people, as you rightly said, we learn from people. So the moment you have people in front of you, that should not be a problem ideally. However, every speaker on stage, including all of us as well, remember we all have goosebumps. You know, while I'm sitting there, while I'm standing there, I know there is shiver in my legs, maybe there are butterflies in my stomach. But one thing that has to be there in your mind, if you've spoken good earlier, that self-belief in your mind is there, कि भाई कर लेंगे. You know, this is something that we've been doing or we've done. So possibly एक आध बार, you know, कभी if that was not a very good day, it's absolutely all right. And anyway, same days cannot be same every time, right? So I think that is something which comes in my mind, that self-belief is something which is always powerful in my mind. I think that's for me. Thank you. The confidence, right? Yeah. Any other questions? Any other questions? Yeah, last I think somebody's raising hand. Go ahead. हाँ, अंधेरे में भी आप थोड़े दिख गए, but go ahead. Yes. CA journey, ma'am. Say, I think no, ma'am. For you, ma'am. But my CA journey has been very flat. But I think ma'am has literally a learning and you know a different CA journey that you could learn from. Inciting CA journey, ma'am. A little, you know, of your CA journey, if you could. Trust me, when ma'am said, I didn't know before, you know, we knew. When ma'am shared her journey, I was taken aback and I'm like, wow. So, ma'am. Thank you, Rudesh. But I think most of want to know about your journey. But since you said that, of course, I'll touch upon a little bit about my journey. See, CA की journey किसी की भी आसान नहीं होती. Every chartered accountant has their own story. Every chartered accountant, trust me. So it is not like that कि सारे लोग except जो rank holders हैं, first attempt में clear हैं, बहुत कम होते हैं. चाहे वो कितने भी scholar हैं. I was also topper in schools from science background. But जब हमने CA start किया, so then first attempt I failed in accounts. और accounts में एक subject में fail होने के बाद में it was feeling like really first time I've faced the failure कि yes ये failure का feel होता है. So उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. And then I've started my journey in 1995. वो time पे girls was hardly in this profession. Now the ratio is 50%. Equal ratio is there about girls and boys. But that time, hardly girls was there. And then too, if you are, and centers भी बहुत कम हुआ करते थे, you have to travel a lot. आपको अगर कहीं जाना है, पढ़ने के लिए coachings नहीं है, you have to study at your own. वो time पे जब हमने start किया,
I was studying, चलो ठीक है, एक attempt नहीं हुआ. Articleship, I was from the foundation batch. Foundation I got clear in first attempt. Inter, first attempt I failed. Being a girl, of course, and of course, Marwadi family, वो time पे. Please welcome, everybody welcome, our president जैसे यूं खड़ा है हद से ज्यादा ये एड़ा है 56 इंच का सीना ये है धरती फाड़ के ये आया है जोर से बोलोगे तो चीर देगा ये है तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Keep clapping on everyone. Give it up for CA Aniket Talati sir, ICI president. Since our president sir is here, let us make these two beautiful lines in front of him as well. इस मौके की कुछ खास है बात जिस कारण हम सब हैं साथ. लिखे हम अपनी किस्मत ICI के साथ कि दुनिया भी देखे आज कि हम में है कुछ बात. Now, after this beautiful start, let us kickstart our next session. Let us get into our traditional roots as we welcome Mahi Sachdeva for Ganesh Vandana. Please welcome her.
please join hands and welcome our ICI President, CA Aniket Talati sir, who is none other than our ICI ki Aan, Maan and Shan, along with CA Dheeraj Kandalwal sir, Conference Director and Central Council Member, CA Piyush Chachad sir, Central Council Member, CA Durgesh Kabra sir, Central Council Member, and other dignitaries too. Thank you, everyone. Now, I would like all the dignitaries present on the stage to light the lamp and mark the beginning of this auspicious event. With the blessing of the Almighty, we would ask each one of you sitting over here to stand up for the ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तदूनात्यधिकश्चन एतद्द्वैत 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 Thank you, everyone. You may now please have your seats. लगता है इस क्षण में कुछ अलग ही बात है। जो कभी लगा था है हमसे दूर, शायद वो हमारे साथ है। अब जाकर ये जाना है, इस पल को बेहतर बनाना है। जो खो गया था कभी हमसे, उसे फिर से पाना है। हर दिल के भीतर इस पल का सम्मान है। ये भूत नहीं, भविष्य नहीं, हमारा अपना वर्तमान है। Now, I would like to request CA Amit Agrawal sir and CA Abba Parab sir to present and welcome CA Aniket Talati sir, our president of ICI, with a bouquet.
Thank you. Now, I would like to request CA Tarun Dhan sir to present a bouquet to our conference director and Central Council member CA Dheeraj Khandelwal. Thank you. Now, I would like to request CA Daya Bansal ma'am to present a bouquet to our Central Council member CA Durgesh Kabra. Thank you. Now, I would like to request CA Krishna Purohit sir to welcome CA Piyush Chachad, the Central Council member, by presenting a bouquet. Now, I would request Bhinder Study Circle convener and deputy convener to please welcome our president, sir. Now, I would request Mira Road Study Circle convener and deputy convener to please welcome our president, sir, CA Aniket Talati. All the past chairmen of Vasai branch, please join us to welcome our president, sir, CA Aniket Talati. Hey Khyati. Hey Rupali. What do you think between past and future? What is the link? Oh Rupali, don't you know Meri Jaan? It's one and only our own Vartaman. So we have brought for you with a lot in our cart. But there is only one thing with which we are gonna start. Do you know who are the ones that makes the number dance? So let's dive into it with ICI at a glance. With this, I would like to call upon Mr. Priyansh Kothari to introduce CA Durgesh Kabra sir, our Central Council member. Hello everyone, it's an honor to introduce our guest for today, CA Durgesh Kabra sir, a Central Council member. Sir is a practicing chartered accountant having vast experience of more than 25 years in field of corporate audit, direct and indirect taxation, management consultancy, corporate governance, business restructuring and project financing. Sir is actively associated with the Institute of Chartered Accountants of India. Presently, sir is senior partner
at DMKH and Company, a chartered accountancy firm at Mumbai. Sir has a vision to see chartered accountancy profession at greater heights. For this, he is actively associated with ICAI. Now I would request CA Durgesh Kabra sir to come on the dais and enlighten us with his thoughts of wisdom. Good afternoon, one and all. Respected President of the Institute, a very young, dynamic, tech-savvy, and profession is at heart for him. Profession is always first for him. CA Aniket Talati ji, my senior council colleague and the conference director of this mega student conference, CA Dheeraj Khandelwal ji, my another dynamic council colleague in the Central Council, Piyush Chhajer ji, the regional council members from Vasai, chairman of the Vasai branch, Amit Agarwal, all managing committee members, past chairman of the branch, and all future chartered accountant of the Institute of Chartered Accountant of India. It's indeed a pleasure to be part of this mega conference. Though we are late, we feel extremely sorry for the same because of some or other reason we couldn't come at this time. And I, on behalf of President sir and all other my council colleagues, since I am starting first, I say sorry to all of you for this particular session being late for all of you, and we kept you waiting. But one important thing, and which is the theme of conference also, Vartaman, power of now. And that was only the thing for all of us, कि प्रायोरिटी जैसे जैसे चेंज होती गई, हमने भी उस वर्तमान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते गए और अल्टीमेटली सोचा कि आप बाय द लंच टाइम you will be ready for lunch, but before lunch time, all will address you for some times. Friends, I will not take much of time. You need to believe in yourself. That is most important for all of you. Power of now is very important. Unless and until you don't understand power of now, the success is not yours. अभी इस वक्त आपको क्या करना है उस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा. बाजू वाला क्या कर रहा है, आगे वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, उसको भूल जाइए. अपने आप पे फोकस करिए, सेल्फ बिलीफ में फोकस करिए एंड आज में फोकस करिए. फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पर फोकस मत करिए. एंड आई एम श्योर इफ़ यू फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स एंड रियलाइज द पावर ऑफ नाउ, आई थिंक यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन in time to come, a successful professional in time to come. And that is for sure. I would say that जब अपने आप को बुलंद करना है तो it is rightly said, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. और आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि आपको नौकरी देने वाले आपके पास आए, आपको ढूंढ के लेके जाएं. और प्रोफेशन में अगर आना है तो इतने एक्सपर्ट हो जाओ सब्जेक्ट में कि आपके पास आपके क्लाइंट चल के आए. दैट इज़ द नीड ऑफ टुडे. थैंक यू वेरी मच. Thank you, CA Durgesh Kabra sir. Now, I would like to invite CA Piyush Chhajer sir to enlighten us with a few words. Very good afternoon. Thank you very much. The Honorable President of the Institute, CA Aniket Talati ji,
conference. Okay. Central Council Member and Conference Director Dheeraj Khandelwal ji, Central Council Member Durgesh Kabra ji, Regional Council Members, Chairman of the branch Amit ji, and all other regional council, all the management committee members of the branch, past chairman of the Vasai branch, esteemed members of the Vasai branch, and my dear students. It's once again a very good afternoon. I would congratulate the branch for choosing such a good theme specifically for the students. Vartaman. What do you mean by Vartaman? Live it in the present. What you are doing present? CA exams, CA course, articleship. There is a saying that you can never ride two horses. You are going to fall down. I see a lot of people, what I'm trying to say, please be focused. Today you are riding a horse of a chartered accountancy. You are doing an articleship, you are preparing for an examination, the focus is going to remain important, and therefore it is said that you live it now. If you are doing CA, please do CA. Do it religiously, do your articleship, and you will believe me, if you do your articleship religiously, it will help in your examination. Because the examination attempted without an appropriate practical training may not yield good results, may sometimes. So my request to all of you, please be in today. Don't think of future too much. Your immediate objective is your examination. Your immediate objective should be to gain as much as knowledge possible during your practical training. Do self-study, do module study. I think so that would be the most important thing. With this very brief remarks, I would like to end because we all want to hear to the president who is over here from Ahmedabad and from Guwahati. He's traveling since last 10 days. Thank you very much for being in this Vasai branch. Thank you very much. And I'm sure the Vasai branch is lucky for that. Thank you. Thank you, sir, for giving us so much of knowledge. Now, I would request, before moving further, to come on stage and enlighten us, none other than our Vikasa Chairman, CA Aba Parab, sir. A very good afternoon to all. Chief guest for today's mega conference, Honorable ICA President C. Aniket Talati sir, Central Council Member and today's Conference Director C. Dheeraj Khandelwal sir, Central Council Member C. Piyush Chajad sir, Central Council Member C. Durgesh Kabra sir, WIRC Regional Council Member and Branch Nominee C. Rudesh Pankhania sir, C. Shweta Jain ma'am and C. Ankit Rathi sir, Vasai Branch Chairman C. Amit Agarwal and all the Managing Committee member of Vasai Branch and its Vikasa Managing Committee, and our jury for today, and my dear students, I welcome you all to all the mega conference of students. The conference provides an invaluable platform to connect, learn, and grow. The theme for this year's conference, Vartaman, the power of now, aptly captures the essence of this event. Over the 2 days, you will engage in thought-provoking panel discussions and listen to insight from experienced leaders in practice and as well as in industry. I am very thankful to Board of Studies for giving us an opportunity to host this wonderful mega conference of CA students. I am also very thankful to Central Council member and our conference director, CA Dheeraj Khandelwal sir, for this valuable support and guidance. I wish you all an enriching and fulfilling experience of this conference. Thank you. Aba sir. Now, I would like to request our branch chairman, CA Amit Agrawal sir, to enlighten us with his valuable words. Thank you. Good afternoon, everyone. At the outset, I would like to thank and welcome President sir for giving your valuable time and greeting the conference with your presence. I will also like to thank our conference director, CA Dheeraj Khandelwal sir, other Central Council member, CA Durgesh Kabra sir, CA Piyush Chajad sir, our branch nominee and regional council member, CA Shweta ma'am, CA Ankit Rathi, CA Rudesh Pankhania sir, and our all the past chairmen, or study circle conveners and deputy conveners.
Sir, I thanks President Sir. Friends, President Sir, if anyone wanted to have mentor, so you can make your mentor President Sir, because at the age of 37, he is the president of our ICI. I can say that President Sir has bring a big resolution in our ICI. This year we are celebrating 75 years of trust towards nation, and in first time in the history of ICI, we are celebrating 75 programs in every week, one program. This is the first time in history was all our ICI it is happening that we are doing programs for members, students, government officers, and for society. Thank you, sir, for taking this initiative. Sir has also launched our 75th logo, and sir, it is proud to say that society is also recognizing, and at our Maxis Mall in Bhainder, our launching that video of 75th was played in before every start of the movie and in the interval for 10 days on the occasion of CA days. Recently, sir has also launched new CA logo with the name of India. So I thank you, sir, for bringing new things in our profession. I can, if I say that for President Sir, it will be, whole day will be short because President Sir has done a lot of changes and bring many new initiatives in his leadership. All the students have got the new scheme which Sir has launched on the 1st July. And thanks President Sir for giving your valuable time, because yesterday night only President Sir has came from the Guwahati. He was continuously traveling, and today is given the time to our Vasai branch. I also thanks to our conference director Dheeraj Khandelwal sir. Special thanks to Dheeraj sir for this program, because all the speakers for the session is personally looked by the Dheeraj sir, and he has, whenever we have find out any difficulty, so he was make himself available and spoken with these faculties if we have got stuck anywhere. Thank you, sir, for your so much valuable cooperation. Durgesh sir and Piyush sir, they are always readily available for Vasai branch for supporting. Whenever we feel ourselves lucky that we have such council members in our council, because whenever we call up for any issue to Durgesh sir, to Piyush sir, Dheeraj sir, so they are always readily available for Vasai branch for members and students. President sir is always readily available, because when sir was council member and when sir was regional council member, so many times I have many issues with discussed with the sir, and sir has resolved it immediately. So thank you, sir, for giving your valuable time to profession. I will not take much time because we are here to present, sir. With this, I thanks everyone, and sir, just wanted to say last line that many students have the doubt that when to start the CA course. I can say this is the right time to start the CA course, because now we are, our profession is a national building, parting in the national building. If many one not know that we are participating in MSME also. So Dheeraj sir is the committee member of MSME. MSME Yatra was going in most of the cities, 300 cities, and Dheeraj sir is leading, and that Yatra is with the central government. So government is also recognizing the work done by the chartered accountant. Thank you, sir. Thank you, CA Amit Agrawal, sir. Now, I would like to invite among us our conference director and the Central Council member, CA Dheeraj Khandelwal, to share his thoughts with us. My colleague in the council, again, very dynamic in the work, Piyush Chajarji, and my senior, I can say, my brother, elder brother, Durgesh Kabraji in the Central Council. The chairman of this vibrant branch, which I can always say that I've seen this particular branch being risen from last 15 years
rather than 18 years, when this particular branch used to be a study circle and then came into the enactment as a branch. And since then, I'm seeing this the progress of this particular branch. And I can see a lot of past chairmen over here and recognize the presence of the Secretary Daya Bansal, the Vikasa Chairman Abba Parab, Vice Chairman Tarun Dan, again a good friend, Krishna Purohit, and the Regional Council member who's a branch nominee over here, Sweta Jain, Ankit Rathi, and again, everyone knows Rudin Pankhania, and all my future chartered accountant over here. I think it's a great opportunity for us to be here like, our own dynamic president of the, institute, ICI. Let's have the big round of applause for him. Why? There's 2-3 reasons. One reason is being that just yesterday night, I came to know he is in Mumbai. He arrived at 9:40, and I called him around 9:45, and his phone was, discharged, and he called me up around 10:45, and I asked him, these are the big, large conference of the students, and he said, I have the, very packed schedule, but he said, it's a conference for the students. Oh, yes? Oh, definitely. Within a second, he immediately agreed to be part of this particular conference. To address you, a round of applause for him. And the second is the love and affection towards the students. Why? Because he is the only person from last 2 years, being a vice president, as a president, he is looking after the new course curriculum. The new scheme should be launched and to be addressed to all students, having a 3 years articleship to be cut down to 2 years. And let's have the big round of applause for Aniket Talati. And he is the person, being young and dynamic, he always thought about, various opportunities for the younger people. Always looking at, the new, what we can do the new. He has seen that last 75 years, being in the institute, have a lot of professional opportunity in the traditional area. And he advocates from last 2 years to have a newer and newer opportunities for the younger generation. And let's have, a pause. Let's think about the MSME. Let's think about the startup. And under his able leadership, the ICI has conducted one of the best event program of the Startup Sphere, and let's have a round of applause for him for the Startup Sphere. I can say that in the Startup Sphere, all the stalwart in the startup, there are about 18 unicorns. And out of 18 unicorns, there are about 8 unicorns representing chartered accountant led by the startup. 8 chartered accountant-led startup are unicorn. And he is the only person who called up, oh, Aman, this is the, Startup Sphere which we are doing it, you have to come. And he's the person immediately, he could not refuse because the ICI had calling the Aman, that's to have to come to the Startup Sphere. And amazingly, now, because of this particular conference, now we addressing to the all student, younger generation, look, you are not confined to the CA course curriculum just in accountancy. You have also various opportunities in the startup. Whether you are a entrepreneur, let's start your own startup, or you can become a co-founder, or you can start your own practice in the startup area, or you can, being in the industry, you can be an angel investor. So lot of opportunities he created to among the all chartered accountant. This is another a world with the aiming with the vision of our own Prime Minister Modi, that we should have at least 5 lakh startups in next 3 years, and the chartered accountant going to lead the startup than the IIT and IIMs. And under the leadership, why again I'm saying to you him,
his leadership, he is the only person, under the CMI committee, under the Durgesh Kabra ji committee, he ensured that our future generation will get a maximum salary, the package. Earlier used to be a 5 lakh or 6 lakh package. Under his leadership, we are getting more than 9 lakh package, minimum package. That's him is under vice president leadership. And that's I'm saying that the opportunities for the youth generations are many. I've been encountered with various young youth. They're saying that, oh, I did, I was trying for IIMs but could not able to get the berth in the, MBA. And now I'm, the different school, colleges doing the MBA. People are saying that I did masters. People are saying that, I tried for the IIT but could not get the, the main IIT, but I'm doing the engineering. And then thereafter, they are looking forward what to do, and they are getting a package of 25, 30,000, 40,000. After a tremendous study in engineering, on MBA, still are not getting the right position. But completing a chartered accountant, you are getting an initial package of 9 lakhs, and the opportunity is huge, which the higher package or every package 20 lakhs or 50 lakhs. And I'm saying that because of his direction, his thought process, he's advocating it. Let's have various opportunities, not only for the chartered accountant, but also semi-qualified chartered accountant. Those chartered accountant could not able to do the CA. Now he's under the leadership, he brought out a new concept, BAA, Bachelor of Accounting Associates. That's the concept, the branding. He advocates, let's have the good right to the all, the semi-qualified people. If you cannot complete your chartered accountancy, even though you will get the higher, weightage, and I'm seeing it right now, जो आज की डेट में भी सेमी क्वालिफाइड पीपल की बहुत डिमांड है. आज इतनी डिमांड है कि आज वो IIT, IIM को लोग नहीं चाहिए, क्वालिफाइड को नहीं चाहिए, लेकिन IIT, IIM मतलब सेमी क्वालिफाइड हो गया, CA की 3 साल आर्टिकलशिप कर ली, अच्छी नॉलेज है, बट ठीक है CA पास नहीं कर पाया, वो अलग बात है. लेकिन आप एक सेमी क्वालिफाइड हो, BA डिग्री मिलने वाली, BAA डिग्री मिलने वाली है, और आपको अच्छे ऐसे अच्छे पैकेज मिल रहे हैं. उसका एक और रीजन है कि इन्होंने MOU साइन किया है गिफ्ट सिटी के अंदर. गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब, wherein the ICI will produce the chartered accountant for the global accounting outsourcing. आज ये सबसे बड़ा काम हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमी क्वालिफाइड लोगों को मिलने वाला है, और दैट्स क्रेडिट गोज टू द हुज अनिकेत तलाटी. So friends, I think there are huge opportunities. Don't miss out. There are good panel, speakers, panelists are there. And I'm really thankful to your branch chairman, young again, very hardworking, Amit. Let's give big clap for him, because he brought all of you over here. Because when he approached me, he said, we're going to be 300, 400 people. Then I asked him, I need, at least more, a maximum people 600. And believe me, I'm very happy that, to seeing that, at least whatever I said, immediately you changed the hall, immediately you did it. And big round of applause for the Amit Agrawal for immediately acting on it and continuously working hard for all you guys, because he wanted to get the maximum insight of the various speaker to you. And you get the knowledge and you will get the opportunities what to do the next. यदि नहीं होता है तो क्या करें और आगे अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी. सो लॉट ऑफ स्पीकर लाइंड अप, सार्थक आहूजा, कुशाल लोढ़ा, and IAS, IIM, or at company secretary and the cost accountant, services, how the various opportunities are there. So don't miss. Let's complete 2 days. Spend your time and listen all the speaker. You will that going to be worth listening. So with this, thank you very much to all the people and coming over here. Thank you very much. Thank you so much, CA Dheeraj Khandelwal sir, for sharing your words with us. Now, I would like to call upon the torchbearer for each and every one of us from the Institute, the one and only, our lovely and honorable. Please put your hands together for the President, ICAI, CA Aniket Talati sir.
Thank you very much, and very good afternoon, my dear CA students. I am conscious and aware of the fact that the only thing between you and your sumptuous lunch are going to be probably the next 15-20 minutes. Many of you are looking at your cell phones and your watch that when does this man stop talking and we can go and have our lunch, maybe network and interact with our colleagues, but I'll try and be as brief as possible. But let me begin by, yes, of course, apologizing that we couldn't be here in the morning. There were various commitments, but for the constant, I would say, passion with which this one gentleman who's sitting next to me works for all these years, and I've known him from 15 years now, Dheeraj Khandelwalji, he ensured that, no, we must go to Vasai branch's student conference. Yesterday night he called me, and today also in the morning he was there to take me to your. So thank you, Dheeraj bhai, for giving me this opportunity. To the chairman of the branch, very dynamic Amit ji and his entire team, you've been working very, very hard. I'm aware for this conference, staying in touch with myself, my office, and all the activities that you've been doing in this branch for this entire year 2023. I think it has become one of the most vibrant branches in the Western region, and my compliments to you and your entire team. The two colleagues of mine in the Central Council about whom I'll be speaking in a little more detail, Durgesh Kabra ji and Piyush Chhajat ji. My two other colleagues in the Regional Council, as Central Council members, we are ex-officio members of the Regional Council also, and both Ankit Rathi ji and Shweta ji, who are doing tremendous work in the Regional Council, of course, along with Hridesh, who is also a part of the Regional Council. So all three of them and the entire team of WIRC, compliments for all the activity that you are doing this year in WIRC, and I look forward to being with you next week when we have our regional conference and the National Students' Convention in Mumbai. All other dignitaries on and off the dais, and my dear Chartered Accountant students, you heard just before me a very eminent Chartered Accountant from Mumbai, somebody who has been in the Regional Council and in the Central Council, and somebody with whom, even if you spend some time, and you would have all felt, you get a lot of passion, you get a lot of dedication to work for the cause of the profession. See, Dheeraj Khandelwalji is not only this year the chairman of the Startup and MSME Committee and the Committee for Export of Services and Development of International Trade, but he's also somebody who's extremely, extremely passionate for all activities of students and members, more particularly when it comes to the student activities. You all have heard about BAA and the Business Accounting Associate recognition that we now have in the new Chartered Accountants regulations that have been notified. One person who was extremely passionate, and believe me when I say this, when you are at the council, you will obviously, of course, think about students who are pursuing the course. You are thinking about members who have qualified and become Chartered Accountants and are part of the institute. But who thinks about those who were students at some point, couldn't become Chartered Accountants, and are not members of the institute? And today we have more than 15 lakh of those over the last 75 years who would have joined the course at some point of time, cleared intermediate or cleared some examination, but could not clear either one or both groups of the final examination. And I think it is this dedication and passion that the council considered that we must give them a formal recognition in the form of BAA. And therefore today, as the president, I'm very delighted and proud to state that I am not just the president of 4 lakh chartered accountants across India, not just of 8.5 lakh active students who are pursuing chartered accountancy at foundation, inter or final level, but I'm also the president, and we are all council members of an institution which has more than 15 lakh students who will now be recognized as BAA, and we will be able to give them a qualification. And all this effort is possible because of the conscious efforts that Dheeraj Khandelwalji has put. He has also created history by this year having a startup sphere in Mumbai, in the Geo World Convention Center. And for those of you who could not witness, it was a grand event where ICI took up the activities of MSME and startup. And Maharashtra's own industry minister came and said from the dais in the opening remarks that you are doing
what the government should be doing, and you are doing more in startup and MSME than we could have imagined. That is the kind of work that happened, and in that event also, his love for the student community was such that he allowed that any students in any part of Mumbai or the greater Mumbai area, if you wish to come and visit and see the startup sphere, it was opened up so that all of you could come and witness. And the idea only is that today, chartered accountants are recognized for accounting, for auditing, and for taxation. But in this new area and this new era of artificial intelligence, of technology, and so many important changes happening, and when the country is looking at Startup India, increasing MSME enterprises, and promoting entrepreneurship, I think it is incumbent upon chartered accountants to, as he rightly said, either become entrepreneurs, become startup founders, or consult on the other side and make sure that we are part of this growth story of India. Because India today is poised to become one of the largest economies in the world. We are already the 5th largest. We are aiming to be the $5 trillion economy in the next 2 years. We will definitely be in the top 3 economies of the world in the next 3 to 4 years. And therefore, the biggest role, I think, is going to be that of chartered accountants and all of you to ensure that how do we take India to the dream of becoming a developed nation in 2047. And I think it is with this vigor and passion that we are all working in the Central Council. Durgesh Kabra ji, he is the chairman of a very important committee this year, the Committee for Members in Industry and Business. Today, when we give out the results, you would have seen that in every result, when the chartered accountants qualify and then we have the convocation, 75 to 80% of those members enter industry. They choose to become either entrepreneurs by themselves, join a company, become CFOs, or join the accounts and finance team of some large corporations. And this year, as was rightly said, we have had a historic campus placement. The average salary in India is close to 11.9 lakhs, the highest international salary which was awarded. And again, mind you, this is to a chartered accountant who's barely 21, 22 years old, was 49 lakh rupees. That is the kind of importance CA course is getting. And we are truly in a situation today that there is more demand for chartered accountants than the chartered accountants we can as an institute produce. Because we are very clear of one fact, that just because there is a demand of chartered accountants in India or globally, that does not mean that we will reduce the standard of examination and be able to produce more chartered accountants. That is something that the institute will never do. And therefore, whatever is the merit and whoever deserves to become a chartered accountant clears the exam. But once you clear, the results are in front of you. There is a tremendous campus that is happening. And Durgesh ji and his entire team at CMIB are putting a lot of efforts to get opportunities, not just in India, but across the world. Only 4 days ago, we concluded a GLOPAC, or the Global Professional Accountants Convention, in Ahmedabad in Gandhinagar. And there, you will be surprised, we met the presidents and CEOs of so many other international institutes. And the CP Ireland president and CEO were there. And in our meeting with them, the first thing that they mentioned was in a country like Ireland, शायद आपका वसई बयंदर से छोटा country का population होगा, leave alone matching it with any state of India. Such a small, tiny country. And he says, Mr. President, when you come to Ireland, I can show you 1,000 chartered accountants of Indian origin who will probably be working there. And what was more amazing for me was he said, I don't know your campus and everything, let it be, but at CP Ireland, let me tell you, every year, we can take 300 chartered accountants from India and get them placed in excellent opportunities in Ireland, because your product is the best product in the world. So friends, not just in India, not just in corporates, not just in companies, but everywhere across the world, wherever one goes, it may be the US, it may be Australia, it may be UK, it may be Middle East, or it may be small countries like Ireland, there is tremendous appetite for Indian chartered accountancy profession and for Indian chartered accountants. The third colleague of mine, a very important person who you all must ensure you meet after this inaugural session, is because he's a member of the examination committee. And that is none other than CA Piyush Chhajar ji. And with his leadership, let me tell you that we have at the institute been able to do something remarkable. How many of you gave the exam this November? Oh, almost all. And anybody who gave in May? So,
In May, you would have realized that the examination was conducted, and for the first time, in the shortest possible period that was available, on 5th of July, we gave the result for the May examination. And we gave the result of both intermediate and final together. This was historic and a record, and is possible because of the efforts of Piyush Chajarji and the entire examination committee. It was possible because today the institute adopts, let me tell you, the best possible technology in our examination system. Right from the process of the examinations, papers getting set, to the method of distribution to the exam centers, and most importantly, which is extremely critical for all of you to realize and appreciate, after you give your paper, there used to be a time that you used to write the paper, they used to go to the head office, there's a confidential process which used to happen so that no paper can be identified, and then they used to be coded, sent to examiners, sample papers brought, again done, the entire confidential process would happen, and we would give out the result. Today, we don't do a physical travel of papers, the entire answer sheet is scanned and then sent to the examiner. What is even more important, and it is important for all of you to realize, because many of you end up criticizing the ICI's examination system. We have today a robust technology-based platform where the examiner has to compulsorily sit in front of the computer. It is not that he can have somebody else come and assess the paper. He will sit, we have a facial recognition system. Most of you have phones today which open only if you open. Even if your family member or your friend tries to open without facial recognition, the phone will not open. Similarly, the exam paper only appears and continues to appear if you are the examiner who's been assigned. And you think that the institute is tough? Let me tell you, we take examination of every examiner. So if you want to become an examiner of the CA exam, you have to pass an exam. Even if you have been a chartered accountant for 25 years, if you don't pass my exam, I will not allow you to determine the fate and future of my students. And today, using technology, using artificial intelligence, using machine learning, when I know that a CA final accounts paper and FR, and I know it's a difficult paper to talk about, but probably that's the first example that came to mind. If you have appeared for a FR paper, and I know that it should take 17 minutes for the examiner to verify, and assume for a moment that he is not in a good mood and he tries to fill up the entire marks in a faster time, the computer will immediately tell us at the back office that yes, this person has not spent the desired amount of time for the student. We will remove all his marks and send the paper to another examiner to make sure that your question, that answer sheet that you have written, gets the best possible opportunity to get evaluated. That is the kind of commitment. That is the kind of commitment we have for your examination. And that is what results in the process being entirely digital and technology based. And therefore, we were able to give the results in time with shorter period, but maintaining the quality of assessment and making sure that we are able to give you the result before time, not just for you to celebrate if you happen to pass the exam, but also being extremely conscious of the fact with people like Piyush ji in the examination committee, that even if we are able to prepone the result by 5 to 10, 15 days, not only do the people who have passed celebrate earlier, but those who couldn't clear get those many more days for the next attempt. And that is the passion with which we are all working towards our students. So let me tell you, the entire council, Dheeraj Bhai, Durgesh ji, Piyush ji, everybody is committed to make sure that how we can improve the lives of our students, we can give you more opportunities, and we can create more and more branding for the ICI. But when I talk about brand ICI and when I'm with students, one request that I would have from all of you, and I say this in all member programs, and I would request all of you, more importantly, to say this and believe that I am the I in ICI. ICI starts with an I, ICI ends with an I. And therefore, शुरुआत भी आपसे है, अंत भी आपसे है, इंस्टीट्यूट भी आप हो, इंडिया भी आप हो. So tomorrow, if you get an opportunity where something doesn't happen as you wish for it to happen, something you seem has not happened right by you, please approach. You have the regional council, you have the regional council members who are here. Approach us as the central council. But my request and urge to you is, I know there is going to be always
that urge in you to go into social media and start criticizing, अरे यार ICI ये नहीं करता, ICI वो नहीं करता. ICI क्या है? आप जिस ICI के बारे में बात कर रहे हो, you are aspiring to become a member of that institution. आप CA के बारे में लिख रहे हो, you are demeaning the degree that you yourself are aspiring to. Don't do that, my dear friends. Always believe that I am the I in ICI, because in you and in your conduct lies the brand ICI. And at the institute, at the council, let me tell you, whenever we get the opportunity, I distinctly remember during COVID when we had to conduct the examination. So many people went out and wrote in social media, ICI wants this. I got personally tagged, Dheeraj bhai got personally tagged, and people said, tumko corona ho, tumhare khandan ko corona ho, ye ho jaye, wo ho jaye. You think we wanted to take the exam to trouble you? But in our heart, we knew that there were students who have been preparing for a long period of time, and their frustration of not getting the opportunity to write the exam was being felt by us. And what did we do? We conducted the exam in a fashion which I can proudly say is one of the best in the world. Not a single incident when lakhs of students appeared during the corona examination. I remember one of the students went to the High Court and then the Supreme Court. And in the Supreme Court, this matter was being heard, and the counsel for the petitioner, who was a student, finally saw that the courts are not agreeing. And then she said, with a lot of passion, my Lord, one last prayer. And the judge said, yes, please tell, what's your prayer? My Lord, it's COVID, corona, people are in tension, there's so much things happening. Please increase the time of the exam from 3 to 4 hours. Because students are sweating, their hands are sweaty, they will be tensed, and please provide 1 more hour. The judge simply smiled and said, CA की परीक्षा है, पसीना तो होना चाहिए. So friends, CA कर रहे हो, पसीना तो होगा. But ये खून पसीना जो आप बहा रहे हो, let me tell you, it's going to reward you tremendously in your times to come. You are going to be recognized as one of the 4 lakh chartered accountants which we have in a country of 140 crore. This degree is extremely coveted. And that is why when the Supreme Court hears matters in other professions and people talk about the examination system, the Supreme Court had to comment last year that if you want to learn how to conduct an examination, learn it from the Institute of Chartered Accountants of India. That is the kind of brand our examination system has. The chairman, my dear friend, spoke about the 75th year of ICI, and that the new logo, which I'm sure you can see in a lot of the publications and everywhere else, the 75 years of trust that we are celebrating. Friends, you are part of an institution today which was established on 1st of July 1949, even before India became a republic, even before we were declared as a sovereign nation. On 1st of July 1949, before 26 Jan 1950, the ICI was created. And therefore, we have a rich history, but a tremendous future which lies in front of us. Today, Indian chartered accountants are not just restricted to the boundaries of India. More than 10% of our members today reside in Australia, in the US, in UK, in Middle East, and so many parts of the world. And therefore, realizing the importance of the internationalization of the CA course, we had the Global Professional Accountants Convention last week. And in that GLOPAC, the Honorable Vice President of India came, and through his hands we released this new CA India logo, which you are seeing everywhere. Because we want you to proudly feel that yes, the tricolor of India, the saffron, white and green are part of your logo. And more importantly, that logo now reads CA India. So when you go internationally and you meet somebody who says, I am doing CP Australia, I am doing CP Ireland, I am doing CA Sri Lanka, you can go and proudly say, I am CA India. Because that's a brand that we must all appreciate. Today, India has truly risen in the polity of countries. If you look anywhere, it may be the COP28 yesterday where the Honorable Prime Minister was there. You look at the kind of respect and the kind of stature and aura that the Indian community and India as a country is receiving. And believe me, that is true for even Indian chartered accountants. Last month, we were in Abu Dhabi, Dheeraj bhai, myself, for a very important World Investment Forum. And there we got the opportunity that United Nations, through UNCTAD, which is their body, and ISAR, gave the highest marks to the institute and awarded us with the ISAR honors for our work in awareness on sustainability. You are all today learning financial reporting. You're all learning about
what accounts are, what EPS is, what profit is. But the future is not just going to be financial reporting, it is going to be also non-financial reporting. It is not just going to be profit, it is going to be profit along with people and planet, and how you are able to maintain ESG. Very important areas, and Institute, as always, is taking a lead in this. And therefore, the United Nations awarded us with this. This year too, we have been very clear in terms of what we want to achieve for our membership through this United Nations recognition. We want to make sure that the chartered accountants we produce, of course, are going to be the best in accounting and auditing. But when valuation is taking such a center stage, when forensic accounting is becoming such an important area for you to work, when there are newer opportunities in insolvency which are available to you, when startups are becoming the norm, when MSME is becoming such a critical aspect of our economy, we want to make sure that we have chartered accountants who choose their area of practice based on your passion, your commitment, whatever is important to you. And so, my dear friends, as I conclude, and being mindful of the fact that it's 2:30 and you are all hungry for lunch, I will only say that choose your area of specialization. See what drives you, see what is your passion. Don't just get driven because everybody is doing it, I want to do this. There are so many avenues, so many opportunities that are available today in front of you. Decide, and articleship is therefore the most important area for you to make this call. I often say it is getting the opportunity to question. I see many of you sitting next to each other, maybe knowing each other for 5 years, 10 years, some of you who may be knowing each other for 2 years, ever since you started doing CA. And still best friends who have been friends for 15 years. Both of you are sitting here. Can you imagine asking your best friend, आपके पापा क्या कमाते हैं? उनका कितना income tax का return है? उनका TDS कितना कटता है? Do you ask these questions? No, it is not polite or civil or even in our culture to ask those questions. You probably cannot ask even your own father. But look at the power of articleship. The day you become an article, a client who is not your client, mind you, your principal who would have worked years to get that client, he would have worked and given him so many services to make sure that he retains that client. आपके पास राइट है नेक्स्ट डे जाके, हाँ भैया कितने में माल खरीदा, TDS क्यों नहीं काटा, GST का क्रेडिट क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं लिया. Look at the power of articleship. It is the only course which gives you the right to question. It is the only course which gives you the right to question these things, and use this opportunity. Make sure that you attend your articleship to the fullest. Don't look at the watch. Don't even look at the calendar. Therefore, in this new course curriculum, we've given you 2 years, understanding that yes, you may want to become a chartered accountant early, but when you do your 2 years of articleship in this new course curriculum, there must be nothing else in your mind, but only one aim, that I want to gain the maximum practical exposure and determine for myself what is the area that drives me. Because once you know your path of success, believe me, nobody in this world can stop you from getting there. I myself did not know that I will one day be addressing you as a 38-year-old person who's the president of the institute. Not long ago, I used to attend these student conferences, sat in the back rows, then came in front, started getting interested, became a paper presenter and started presenting a paper. Then became a part of the managing committee, like my friends who are sitting here, the treasurer, the secretary, became a part of the managing committee, finally became a chairman of a branch, entered the regional council, became the secretary of the regional council, entered the council, and today I am addressing you as the president of the institute. Have a clear vision, have clear priorities in life, and as both Durgesh ji, Piyush ji have mentioned, have a very clear focus. You are doing this course. Let this be your sole aim and guiding light, and believe me, nobody can stop you from achieving your dreams. My best wishes to each one of you, and always be proud to be pursuing this course, always be proud of being a part of this great institution, the Institute of Chartered Accountants of India. Jai Hind, Jai ICI. Thank you so much, CA Aniket Talati sir, for sharing his insightful, motivational and knowledgeable thoughts with us and leaving an unforgettable impressions in all our lives.
Now, let us move forward and present mementos to all the respected dignitaries present over here. I would like to call upon all the dignitaries present over here to give memento as a token of love to CA Aniket Talati Sir, the President, ICAI. Present mementos to CA Dheeraj Khandelwal Sir. CA Dheeraj Khandelwal Sir, Conference Director. CA Durgesh Kabra Sir, Central Council Member. CA Piyush Chachad, Central Council Member. CA Shweta Jain, Regional Council Member. CA Aniket Rathi, Central Council Member. CA Rukesh Panthania, Regional Council Member. कम ऑन गाइस, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Woo! And now, to put a formal end to this session, I would call Tilak Jha for vote of thanks. Taking inspiration from what our president said, I would like to start this vote of thanks with a very special dialogue from the movie Bagban. Sir, आप हैं तो हम हैं तो ये सब कुछ है, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. Thank you for being a part of this event and helping us carve out our Vartaman for a better and a brighter future. Heartiest thanks to our speakers of this session for making this session a true light bearer for the course of events that we are to witness in the next 2 days. A very special thanks to our President, CA Aniket Sunil Talati sir, for sparing time from your ever busy schedules for coming here. It's your presence on this stage that leads me to say, उदय हुआ है नए सूर्य का, धरती फिर से जगमगाई है, कभी टूट गए जो ख्वाब और सपने, उनमें फिर से उम्मीद आई है. जिस डर से हमने छोड़ी थी आस, उस अंधेरे अब दूर वो अंधेरा होगा, इस वर्तमान में है विश्वास, इस वर्तमान में है विश्वास, अब एक नया सवेरा होगा, अब एक नया सवेरा होगा. Finally, to my dear institute ICAI, I would like to convey a few lines from the depths of my heart. जिसने हमें जीना सिखलाया, समर्पित होने का मतलब बतलाया, सादर अभिनंदन है to the one and only ICAI मेरी जान,
इसके बल पे ही निखरेगा आपका, हमारा और इस देश का वर्तमान। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर हियरिंग मी आउट। Thank you so much, Mr. Tilak. Now, I would like to request all the committee members to welcome CA Aniket Talati sir with a bouquet and welcome him with a shawl by Mr. Lokesh. Come on guys, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। खाना खा लिया? तो वापस नहीं जाने देंगे। 500 में 1 से मिलेगा एक दिन का। अभी नहीं, बाद में। कैसा लगा तुम लोग को अब तक? झूठे। अभी ना टेक्निकल सेशन है, उसके बाद वी हैव 2 मोर स्पेशल सेशंस एंड आप लोग ने ब्रोशर में देखा ही होगा स्पीकर कौन है। तो प्लीज इतनी ही एक्साइटमेंट रखिए। आई एम श्योर यू ऑल आर गोना हैव अ वंडरफुल इवनिंग। यस, सो थोड़ा चीयर भी करो यार, स्टेज पे फटती है। स्टार्ट करें। So now let's begin with this session, guys. I would request our beloved CA Pramod Damankar sir to kindly come on stage in the view of audience. And along with it, our paper presenters, Shambhavi Jade, Nirali Sheth and Ritika Diora, to kindly join us on the stage. A huge round of applause, guys. So let's begin. Hello everyone. I'm so privileged. I'm so honored to be sitting in front of you all and welcoming you all to the technical session to... Ek minute. What kind of accent is this? It's neither American nor English. You don't know? It's sobo. हाँ, उसमें क्या है? आजकल साउथ बोरीवली वाले भी अपने आप को सोबो बुलाते हैं। On that note, I, Naya Doshi, I, Kautul Vaishnav, we welcome you all to the technical session 2, a peek into the lifestyle of Mumbai. So, as we begin with the topic Mumbai, I would like to ask a question. Naya, what do you think about the Mumbai's tourism? हमारे पास इतने कम टूरिस्ट स्पॉट्स है कि हमने टूरिज्म बना दिया है आउट ऑफ पॉवर्टी। हद तो तब है जब अंग्रेज अपना देश छोड़कर मुंबई मरीन ड्राइव घूमने नहीं आते। वो लोग क्या घूमने आते पता है? डरावी और डोबी घाट। ऑल्सो मुंबई में रहने का ना कोई लोनली रहने का कोई स्कोप ही नहीं है। स्कोप कैसे होगा? यहाँ पे लोग ही इतने ज्यादा है। कल 4 बजे सुबह मैं निकला मरीन ड्राइव पे, सोचा थोड़ा मी टाइम मिलेगा, थोड़ा सोलेस मिलेगा, तभी पीछे से एक आवाज आने लगी, वड़ा पाव, बेल बेल मस्त बेल। अभी तो खाने पे बात खत्म नहीं होती। हम यहाँ है
जो रोज एक चीज रोज खाते हैं। और यहाँ की आधी से ज्यादा जनता अभी वो शायद खाकर आई भी होगी। लोकल ट्रेन के धक्के। और इसी लोकल ट्रेन से मुझे याद आया कि सुबह सुबह जब इतनी भीड़ होती है तब भी लोग एक ही डायलॉग के सहारे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अरे बहुत जगह है, अरे नई जगह है, अरे बहुत जगह है, अरे नई जगह है, अरे बहुत जगह है, अरे नई जगह है। और इसी भीड़ में वो किसी तरह अगर अंदर चढ़ भी गया तो पहले 2 स्टेशन के लिए ही बी लाइक दिस, छुचुक 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 छुचुक। फिर वो सोचता है साला मैं तो आदमी हूं कि फिल्म फेयर अवार्ड। कल ही मेरा एक दोस्त, सोबो दोस्त, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। भीड़ इतनी थी, स्टेशन आया, पीछे से लोग बोलने वाले, अरे भाई ट्रेन रुकने के बाद उतरेगा क्या? और ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुई बात। ऐसी भीड़ में कभी ना कभी अगर आपने ट्रेवल किया होगा तो आपका पर्स या पॉकेट जरूर मारा गया होगा। मेरा भी मारा गया था। तो मैंने अभी नया मंगाया है ऑनलाइन, और ऑनलाइन तुम इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर देखने जाओगे तो उनका कुछ अलग ही है। ब्राउन इन कलर, मैट फिनिश, 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। और यही चीज अगर अपना लोकल ट्रेन का सेल्समैन बेचेगा तो कैसा बेचता है? अरे ये देखो इसको ऐसा करके देखो, इसको तुम ऐसा मोड़ भी सकता है, अरे तुम इसको ऐसा भी कर सकता है, ये देखो। देखने का पैसा नहीं है। वैसे तुम इसको बाहर खरीदने जाओगे तो 500 रुपए में पड़ेगा, लेकिन हमको सिर्फ 30 रुपए में पड़ता है। तो आई विल बी लाइक, भाई तुमको ये परवड़ता कैसे है? अरे अपना क्या है, यहाँ से मारने का, यहाँ पे बेचने का। मुंबई से ना एक और चीज रह गई यार मेरी बताने की, फूड इंडस्ट्री। इंस्टाग्राम का आधा धंधा हमारे मुंबई के फूड ब्लॉगर्स ही चलाते हैं। फूड ब्लॉगर्स, भाई इन फूड ब्लॉगर्स को ना एक्टिंग ब्लॉगिंग के अलावा बस एक चीज बहुत अच्छे से आती है, वो है एक्साइटमेंट, भर भर के बहुत सारा। अगर कोई शेफ फॉर एग्जांपल खाली ऑनियंस फ्राई कर रहा है तो फूड ब्लॉगर्स भी लाइक, अभी इसमें ऑनियंस डाल रहे हैं, वाओ वाओ, the onion smells too good. They just know the one acting and that is excitement. But jokes apart, मुंबई में रहना is once in a lifestyle experience जो हमें और कहीं नहीं मिलेगा. And as it is rightly said by Kautul, that you can take a boy out of Bombay, but you cannot take Bombay out of a boy. So on that note, let us begin with this session. I would request CA Aba Parab sir to kindly welcome CA Pramod Damankar sir with a bouquet. Now I would request Lokesh sir to welcome our judges with a bouquet.
Before we start, paper presenters, you all have 15 minutes. After 12 minutes, a bell will ring. Okay? So now, I would request Ms. Sejal Bafna to kindly introduce our esteemed judges for the session. Good afternoon, everyone. This wouldn't be a session. Good afternoon, everyone. This wouldn't be a competition if there is no one to judge. We are pleased to introduce our judges, C.A. Kausar Merali ma'am and C.A. Ravi Khurana sir. C.A. Kausar Merali ma'am, a trailblazer in her field. She aspired to be a CA when none of her family and her community were aware of it, and has been an inspiration to many since 2005. With an experience of 15 years, she has worked with two Big Fours, KPMG and EY. She has also been a mentor at various programs by WRC, imparting training to CA students in soft skills. Our next judge we have is CA Ravi Khurana sir, a versatile personality with 28 years of experience in finance and also holding a diploma in IFRS from ACCA UK. He worked as a CFO in company Mahindra Group Company and K-Line India Private Limited. Guys, give a round of applause for our judges. So with that, we start calling our paper presenter. Let's invite our first paper presenter of the afternoon, Miss Shambhavi Jade. She will be presenting on the topic Mumbai entertainment industry's substantial economic impact. All the best, Shambhavi. Let's begin with a simple activity. After lunch, everybody will be feeling a bit sleepy, so let's do a simple activity. I'll be showing some pictures of scenes from different movies, and you have to identify the movie and make a shout out of its name. Which movie is this? Yes. And this one? No. Well, it's Raja Harishchandra, a stage where creativity meets commerce, and every cinematic frame carries the weight to influence the economy. So, fasten your seatbelts, everyone, as we are taking a financial roller coaster ride behind the magic of entertainment industry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Myself, Shambhavi Jade, and I'll be presenting on the topic Mumbai entertainment industry's substantial economic impact. Mumbai. It is the financial capital of India and the birthplace of Indian film industry. Yes, this city witnessed the filming of its first Indian silent feature film in 1913 at Dadar called Raja Harishchandra, the picture that you saw in the first slide. Dada Saib Phalke had invested all his personal saving in this film, and post-release, it was a blockbuster hit at that time. It enjoyed houseful shows for a week, which extended for 12 more days, and this marked as a historic event an inception of a transformative influence of Mumbai's entertainment industry on India's economy. In 1977, Maharashtra government inaugurated and established Mumbai Film City, a film city which makes an impact on this city's economy. And today, Mumbai entertainment industries contributes up to 60% of India's entertainment industry. A round of applause for this Mumbai entertainment industry. Mumbai entertainment industry is often called Bollywood, but there are other entertainment mediums too, such as theatre, performing arts, radio, etc. But majorly, there are three sectors that contribute in this. That is films, television, and online video services like OTT platforms, web series, etc. To understand the economic impact, we will assess it at two levels. First, the direct impact, and next, the indirect impact. Let us start with the direct impact. Well, it encompasses the creation of content consumed by the audiences and the employment generated by the companies producing these films, TV shows, and providing online video services. To understand direct impact, we will first understand the filmmaking process.
Filmmaking process has 4 stages: development, pre-production, production, and post-production. As you can see, every stage opens multiple employment opportunities to foster diverse talent. In creative industry alone, the film industry contributes up to 18,300 of gross revenue to the whole entertainment industry. The television industry has the highest gross revenue contribution of 47,800 crores, and the emerging online video services contribute up to 3,000 crores. Every sector has provided a gross value added of 3,220 crores by films, 18,600 crores by television, and the online video service sector contributes up to 520 crores. Noteworthy production like the famous movie Brahmastra. It creates an economic impact starting from its development stage till the movie reaches the cinema houses. It has a significant impact as it includes all elements of filmmaking process. These sectors have created employment where approximately 150,000 individuals work in the film sector, 350,000 work for television, and approximately 7,700 people work in online video service sector. They earn wages or earnings of approximately 2,250 in film sector, 7,400 crores in television, and 380 crores in online video service sector. Well, from the figures, you might have realized one thing. Television continues to have a commanding effect over the consumer attention. I'll give you a simple example. All of you might be remembering the old Mahabharata serial. This serial was actually shooted in Mumbai's film city majorly, and it achieved a remarkable viewership of 22.9 million back then. And today, everybody knows about Anupama serial, the TRP ratings and the business it makes. Well, Mumbai's television sector actually resonates in diverse languages, where serials or TV shows are broadcasted in Hindi, Marathi, and even in Gujarati and other languages. With rising young population and availability and accessibility to affordable devices and connectivity has led to a 40% growth in online video service sector from financial year 2020. And this thriving sector, it's finding its hub in Mumbai, where these online platforms are catering the needs of all age groups for providing content. Now let's move to the next aspect, and that is the indirect impact. Indirect impact encompasses the suppliers to this entertainment industry. Be it any TV show or a film or even a web series, every production needs some basic necessities like hotel accommodation, travel, equipments and cameras, etc. Well, all these segments who are actually contributing to the film sector make a huge economic impact which is much larger than the film industry alone. I've tried to cover a few of them here. Let's start with food and beverages. Well, it's a very basic expenditure, but it's a crucial one because it is incurred from the development stage of a film till the film reaches the cinema halls. Food and beverages contribute up to 25% of cinema halls' revenue. With increasing multiplexes, they are not only providing the popcorns and traditional Coca-Colas, but providing diverse cuisines like Mexican, Japanese, and Italian. Be it on-set daily catering or the big parties that are thrown marking the success of a film or a TV show, all of this contributes to the food and beverage industry. Music. Music is one of the oldest rights sold in India and marked as the earliest one. Everybody would be remembering these two, the mind-boggling theme song of Scam 1992 series and the nostalgic title song of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and the latest genres in the rap songs like Apna Time Aayega, a slogan for every student sitting here. Well, this music industry is also dominated by Mumbai, because approximately 600 recording studios are currently present in Mumbai, and fueled by the influence of Bollywood songs by Arijit Singh and Shreya Ghoshal, Mumbai continues to have a dominating hand in this sector as well. Promotion and advertising. Multiplexes and even single cinema halls often derive 10 to 12% of their revenue from in-cinema advertising. Mumbai is often considered as the best hub for promoting their films, and the number of multiplexes is the highest in Mumbai,
So it again has a strong hold in this sector as well. Fashion and merchandising. Bollywood has inspired fashion industry so much that influence can be seen in every nook and corner of fashion industry. Everybody remembers the iconic purple sari that Madhuri Dixit draped in Hum Aapke Hai Kaun. This became so famous that it was almost a staple for Indian weddings. Big actresses like Malaika Arora or Anushka Sharma often make brand collaborations. Brands have now started to collaborate with TV shows as well. Best example would be our beloved Big Boss, where every participant is often wearing a brand-promoted cloth or apparel. The merchandise industry also contributes to a smaller segment. It is growing and it is expected to surge with Indian film franchise. Wedding industry, another industry which is super influenced by Bollywood. Be it the decor or the wedding outfits of the bride or the groom, or even nowadays the wedding picture poses. They are a mirror reflection to Bollywood movies or celebrities' weddings. The best example would be Anushka Sharma's wedding outfit designed by Sabyasachi. It is a trendsetter these days. Or this famous wedding pose from Sid and Kiara's wedding. This was so loved that every couple tried to put it in its own wedding album, just like this. Social media. Many social media content creators take a base from Mumbai entertainment industry's output. The best example would be Yashraj Mukherjee's musical questions, and all of you would be remembering the song as well. Rasode mein kaun tha? Well, and all of our beloved memes by Jetha Bhai. As I said, entertainment industry is not only about films, television, or online video services, but it also includes other entertainment medium like theatre and radio. Mumbai's theatre industry has diverse resonating languages like Urdu, Hindi, Marathi, Gujarati, and even English dramas. Prithvi Theatre and NCPA are considered as potential institutions for theatre and performing arts. And now with the establishment of Nita Mukesh Ambani Cultural Centre, NMACC, Mumbai is becoming the international hub for theatre and performing arts. Theatre industry also faces some factors which affects and influences its commercial viability, like promotion, funds, budget, sponsorship, and at times consumer preference. But the best example, or the recent exemplar to be specific, is this Marathi commercial play called Char Chauki. You would be astonished to know that this play was launched last year in 2022, and till date it is in theatre enjoying houseful shows. In Mumbai, radio has a significant impact, starting from advertising, collaborations, movie promotions, and the recent podcast culture too. The best example is our beloved morning show host, R.J. Malishka, at 93.5 Red FM Mumbai radio station. Just as every film has a challenging situation or a scene to make its story more compelling, similarly, our industry also has some key challenges. The younger generation sees content as the king force, and this king force is also now impacting the economics of the whole industry. Despite of many proactive measures being undertaken, still, the protection of intellectual property rights is at threat due to piracy and unauthorized distribution. The dynamic environment of Mumbai city often makes a threat to the integrity of entertainment industry. To conclude, I'll say that Mumbai entertainment industry is convergence of film, television shows, web series, theatre, radio, etc. All of this weaving an intricate narrative towards the cultural resonance and economic dynamism. To end with a small poem. Bollywood dances at the heart of city. Bollywood dances at the city's heartbeat. At the rhythm of economics, industries meet. From screen to stage, it's a thriving scene. It's Mumbai where wealth is gleaned. Thank you. Hello. Well done, Shambhavi. A huge round of applause for Shambhavi. It's very difficult to present this in front of so many people.
Now it's time to hear our next paper presenter, Ms. Ritika Devre, and her topic is Demystifying Mumbai Tourism Industry. सीने मिशाने कहते जहां हर धड़कन हर दिल ये बोले मुंबई मेरी जान ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ हर धड़कन हर दिल ये बोले मुंबई मेरी जान जरा हट के जरा बच के ये है मुंबई मेरी जान मुंबई the financial capital, the Bollywood capital, the commercial capital of India, the city of dreams, the city that never sleeps, India's New York. Well, all these attributes we already know. But do we know that Mumbai as a tourism industry attracts 6 million people per year and is the 30th most visited location worldwide? Do we know that Mumbai receives 35% of the foreign tourist arrivals in India and 79% of visitors to Maharashtra? Now, if these huge statistics make you think, what? Here we go. Good evening, ladies and gentlemen. I am Ritika Devda, a CA finalist student pursuing my articleship from Mumbai, and today I am going to take you all to a dive into the tourism industry of one and only Mumbai. सो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई पर्यटक उद्योग में आपका स्वागत है. Let me begin with what you all must be wondering when I stated those huge statistics a while ago. That why is Mumbai such a preferred tourist location not only across India but across the world? The answer is simple. Because Mumbai offers a wide array of attraction for everyone, from a student to a business professional, from a budget traveler to a luxury traveler, from a sweet little kid to grandma and grandpa. From markets like Hill Road, Linking Road, Colaba Causeway and Crawford, to beaches and lakefronts like Powai Lake, Juhu Beach, Versova Beach and many more. From a blend of religious places like Siddhivinayak Temple, Mahalakshmi Temple, Haji Ali Mosque, Afghan Church and many more, to art galleries and museums like Jahangir Art Gallery, Nehru Science Center, and so much more. The list is endless. On one hand, we have the iconic gateway of India, and on the other hand, we have the oldest stock exchange and the largest stock exchange of India, that is the BSE and NSE, respectively. And for all the Bollywood lovers, as the previous paper presenter, Shambhavi, already said, we have one of the finest film industries of the world, that is Dada Saheb Phalke Chitranagari. And a cherry on the top, the city is also home to 3 UNESCO World Heritage Sites, which are, as you can see on the screen, the first is Victorian Gothic and Art Deco ensembles. It's a collection of 94 beautiful buildings from Victorian era, depicting the British colonial period in India. It comprises of Bombay High Court, University of Mumbai, and so much more. Then, the second is the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, which is the iconic railway station of India, of Mumbai. And it was commenced in the year 1887 to commemorate the Golden Jubilee of Queen Victoria. Now, all of us can imagine how well it must be designed. The third is the Elephanta Caves, which is a collection of 5 man-made caves dedicated to the worship of Lord Shiva. And the most impressive one is a 6-meter tall sculpture of 3-headed Shiva called Trimurti. So this was a small glimpse of the treasure house of tourist attractions which the city holds. And not just that, there's another factor which drags people to this place, and it is the ease of accommodation. Mumbai, as a city, ensures a comfortable stay experience for everyone, from a low and middle class traveler to a rich class traveler. For instance, as on 24 September 2023, there were 1,646 hotels in Mumbai, ranging from the legendary Hotel Taj, which ranks number 1 amongst all the hospitality brands across the globe,
to budget hotels starting at just rupees 153. So this is broadly what the city currently provides to its tourists. But there is a lot more in store for the future travelers, because the city has a lot of hidden gems. That is, a lot of tourist places remain untapped and underdeveloped. And to cater to such places, the state has recently finalized a comprehensive tourism development plan, as you can see on the screen, at a budget of approximately 676 CR, which includes several initiatives. Like the first one is the development of Sanjay Gandhi National Park. Commonly known as Borivali National Park, it is Asia's one of the most visited national parks and the world's largest national park to be located within the premises of a city. There are a lot of beautiful attractions in this park. It's a perfect place to connect with nature. It has a lot of things like lion safari. Then there is a train which runs through the forest known as One Rani. Then we have cycling, trekking, and a lot of other attractions. But still, the place is untapped of its full potential. And there's a lot more which can be done. For instance, adventure sports could be introduced. There can be other safaris like night safari, leopard safari, creek trail cruise, and so much more. And the most important inculcation would be zoo, because city lacks a proper zoo. Unlike other cities of Pune and Bangalore, where zoos are a very good source of attraction. And the 10,400 hectares area of Sanjay Gandhi National Park can be well utilized to inculcate a proper zoo, because the only zoo in the city is in Baikula, known by the name Jijamata Zoo. But again, it is not much visited because of the population growth, as the population growth of Greater Mumbai is just 6 to 8% as against 65 to 75% in suburbs. Hence, it is advisable to shift that zoo to Sanjay Gandhi National Park. Now, the another proposal under the project is development of Savory Fort. Savory Waterfront, many of you here must have heard it as a place to catch sight of bird flamingo. It's a very beautiful waterfront, and alongside this waterfront is one of the 8 forts of Mumbai, the Savory Fort. However, it is not paid much attention to. Currently, it is just being used as a godown for the Mumbai Port Trust, but it has a vast potential to be converted into a beautiful tourist place by inculcating features like viewing gallery for bird watching, a themed cafe, a library, and an ornithology museum, that is a bird museum. Then, the next proposal is the creation of Mumbai Haat. Delhi Haat, famous, as we all know, for its cultural extravaganza, delicious cuisine, and local handicrafts. On the same lines, Mumbai Haat can be given a shot to provide a glimpse of traditional India. It can include features like exhibitions reflecting different parts of Maharashtra, traditional pujas and rituals, bullock cart rides, local handicrafts, and a lot more. Another proposal under the project was development of RA Colony, which was estimated at a budget of 75 CR. Now, RA Colony, all of us must be knowing it as one of the haunted places in Mumbai, but the ecological beauty of this place is just wow. For instance, it is home to more than 300 species of animals, including 77 species of birds. And it can definitely be made into a very beautiful tourist destination by inculcating features like bird sanctuary and butterfly park. Then Kalagram. Kalagram means art village. So basically promoting craftsmanship in the area. Then promoting agro-tourism and information and training center, etc. Then there are several other proposals as well under the project, which are development of beaches, development of lakes and waterfronts, then night tours in South Bombay. As we all know, Mumbai is known for its nightlife, and night tours would be very preferable in this city considering the lifestyle of people. Hence, night tours can be promoted in South Bombay by inculcating features like trams or horse buggies, cow gullies, and illumination of buildings, which is there to some extent. Then, another important proposal has been that there should be a lower entry fees for all the tourist attractions during 2 days a week and 1 weekend a month in order to encourage people from all strata of the society. So this was
a small picture of what has been proposed under the project, which is already officially adopted by the state. However, besides this, there are several other suggestions which, if implemented, can definitely enhance Mumbai as a tourism industry. Let us glance through a few of them. As you can see on the screen, the first suggestion, which I feel is really very effective, is that we can introduce sports like Formula Racing 1 and Grand Prix at Marine Drive to make it into a top-class water sports destination. Then we can also publicize Mumbai-Goa cruise and the floating restaurant at the Gateway of India as an attractive wedding destination for foreigners. Then display of advertisements for popularizing unpopular tourist places and also ensuring tour guides at those places. For instance, how many of you here know Banganga tank, which is known to house waters from Ganga? And also, how many of us here have visited Maharashtra Nature Park? And how many of you have ever heard the name of Kwan Kung Temple, which is the only Chinese temple in Mumbai? Like this, there are a lot of beautiful tourist places in Mumbai which have not been popularized and which have not come to limelight yet. And popularizing these would definitely enhance the tourism potential of this city. Now comes another concept called rain tourism. Mumbai rains, not a very pleasant experience. This is what even I was told when I came to this city. And so it is. And this fact is known across the entire world. Hence, as a result, the monsoon months of June to September witnesses a very sheer downfall in the number of tourists. However, this can be capitalized upon as an opportunity by encouraging rain-based activities like rain dance, monsoon camping, rain trekking, Ayurveda spa, rain food festival, and so much more. However, it would also require addressing a few challenges like changing the mindset of people, ensuring proper medical facilities, ensuring proper Wi-Fi and communication, and also building up a government or NGO-based rescue team in case of emergency situations. Now, all through this presentation, we have talked about Mumbai, Mumbai, and Mumbai. But at the end, it is important to realize that all of us share a common habitat, the one and only Earth. Hence, it is very important to pay attention to the global climatic changes taking place around us. For instance, temperatures beyond 46 degrees Celsius are becoming increasingly common in Europe. Also, coastal areas are becoming increasingly vulnerable due to rising sea levels. While these changes have not significantly penetrated in India, but still, climatic changes are worsening day by day. And therefore, whenever we take any further step for development of tourism industry, we should always assess it on environmental ground and check it for climate change, so as to ensure the sustainability of the industry as well as our habitat as a whole. With this, we come to the end of the presentation. Thank you so much, everyone. Jai Hind, Jai Bharat, Vasudhaiv Kutumbakam. Thank you, Ritika. It was really an insightful session. And I also come to aware that Mumbai has a lots of places for tourism other than Dhobi Ghat and Dharavi. Right, guys? अरे जोश कम क्यों है, right? Yes. So now I would request our next paper presenter, Miss Nirali Seth, to kindly present her paper. A huge round of applause, guys. Good afternoon all. So before I start this presentation, I want to clear my target audience. Obviously, all of us in the room have been associated with the chartered accountancy course at some point in our life or are associated with it currently. What does this presentation add value in your life? If you're a chartered accountant, at some point in your life,
Probably, who knows, you would be planning tax for a culinary venture, a food joint, probably auditing a big food company or finding financials, forecasting financials and valuation of a food industry. Keeping all of that aside, if some of you have a thought of starting your own business, or post CA, you will save up some capital and start your own business, this presentation is still going to be very relevant for you, even if you are not venturing into the food industry. Because today, I will cover the mindset of the Indian consumer and the latest statistics on it. So be tuned. I would like to start off by a quote. कोई आईने में अपने आप से नजर मिलाकर बैठा है, कोई रातों की नींद चैन उड़ाकर बैठा है, जिसे पहुंचना है सफलता की शिखर पर, वो भविष्य का प्लान वर्तमान में बनाकर बैठा है. Namaste, ladies and gentlemen. My name is Nirali Sheth and I will present the topic Unveiling Food Industry of Mumbai. Currently, I am a CA final student working as an article trainee at KNAV India in the domain of investment banking and business advisory services. This is my first ever paper presentation and the topic is Unveiling Mumbai's food industry from plate to profit. Kasa kai Mumbai? When I talk about Mumbai, it takes me back to the nostalgic charm of the Udupi restaurants, the Parsi cafes, the Irani tea stalls that my parents and grandparents went to, which has now transformed into swanky cafes, fancy restaurants, luxury fine dining. It has also changed, vada pav, mandatory. The agenda for the presentation, it has also changed the way that the food is consumed today, the pre-COVID and the post-COVID scenario. The digital transformation of food delivery has revolutionized how Mumbaikas enjoy their favorite meal now. Along with this, the street vendors of Mumbai are very famous. I remember reading an article from Economic Times dated 2016 that the Income Tax Department raided some food eateries, roadside eateries in Ghatkopar, Andheri and Thane and found crores of rupees from them. So remember, even the unorganized segment of the city is not just thriving but earning in substantial amounts. Now, if I were to classify the food industry broadly into two categories, it would be the food processing industry and the food service industry. The food processing industry is like the backstage magic where all the magic happens. Like the raw agricultural products are converted into the finished meals that we enjoy. The pioneer of this industry could be Amul or Parle Agro. When I talk about the food service industry, imagine yourself sipping coffee at Cafe Coffee Day, enjoying your chole bhature at Kailash Parbat, or ordering from Zomato or Swiggy. This is the food service industry that I will majorly cover today. Since the food industry is so diverse that even Pani Puri changes its nicknames every 2000 kilometers, from Pani Puri to Golgappa to Puchka to even Pani ke Batashe, it is a bit difficult to segment and classify such diverse industry. But the industry has segmented it mainly into two categories, the unorganized industry and the organized industry. The unorganized industry is the substantial industry of the market share. As per the National Restaurant Association of India, which reported a study in 2019, it is almost 70% of the total industry, and the organized industry is just 30%. But as per the current scenario, the unorganized industries are also moving towards the organized models. Now, the organized industry is breakdown into quick service restaurants, cafe chains, frozen dessert outlets, bar lounges, and dinings. And the dinings could be further divided into fine dining and casual dining. The unorganized industry is worth rupees 25,000 crore in India. Even the total market size of the Mumbai's food industry is estimated to be 40,000 crore as per the NRAI report. To understand the industry, the cafes domestically present in India are CCD, Barista, Chai Point, Chayos. Quick service restaurant examples are Goli Vada Pav, Wow Momos. Quick service restaurants operate on this model that the quickest service is provided to their customers. Whereas when you talk about the casual dining restaurants and the fine dining restaurants, a lot of focus is placed on the ambience, the overall experience of the food and the way that you consume the food.
Also, I would like to bring a new emerging model known as cloud kitchen. The cloud kitchens work on this concept that, okay, I want to open a food joint in this city, but the rental costs are very high and the overheads are very high. I will rent out a small place in Mumbai near an area where a lot of working professionals live, a lot of new real estate businesses happening, so a lot of construction and a new leases are happening. And I will rent out a place in such a way that the minimal overhead costs are considered. So only the cooking happens in such cloud kitchens and not the dining spaces. Jumbo King is an example. Growth drivers. Rising income levels. First point. I will cover the statistics in the next slide properly, but the rising income levels. GDP has increased 5.7% from 2012 to 2023. This shows the consumption pattern that India has drawn. Demographic dividend. Did you know that India has one of the youngest population in the world, age 16 to 54? This also shows their behavioral changes, ordering from online, from Swiggy, Zomato, and having the awareness of the global cuisine. Internet expansion. The more I will say about this, the short the speech will be. But internet expansion, as we can see, even the upcoming generation is already very tech savvy, and I will also cover this in the next slide in detail. Trend of delivery aggregators. Swiggy, Zomato, they have came up post-COVID scenario in a very huge way. Power of social media and marketing. As per the Influencer Marketing Hub, they reported that if a company spends $1 for marketing and media, it generates a return of $5 on every $1 of investment. And we can see that it is dynamic in nature and still evolving. So this chart represents that the large middle class, that is, as of 2021, 62% of the households of India are belonging to middle class. By 2030, it will constitute 78%. What this means is that population will move up the income strata from low income, leading to higher domestic consumption. Now, when I also talk about the urban and the rural population, by 2030, it is estimated that 60% of the population will be rural, but 40% will be urban. This also shows us the consumption pattern that the country is heading towards. As of 2021, the estimated population was around 1400 million, and out of that, 750 million have already smartphones. That is 54% of the population approximately. By 2030, it is projected that 1300 billion people would be having smartphones. The same goes for internet users, which is also averagely greater than USA. Now, if we talk about the market analysis of Mumbai, the market size of the organized food service industry, the India's capital Mumbai, is 40,480 crore. The average spend per month per household on eating is 2,890 in Mumbai, higher than the national average of 2,000. Organized food service is the largest industry in the service sector in the country after retail and insurance, and is 20 times the size of the film industry and 4.7 times that of hotels and 1.5 times that of the pharma sector. All these data points represents the potential opportunity in the food market of the city. The city has approximately 87,650 restaurants and employs over 4,28,000 people. The NARI IFSR 2019 estimates that the overall Indian food service industry's market is 4,23,865 crore in 2019, and it is expected to grow at a CAGR of 9%. The average frequency of consuming non-home cooked food in Mumbai is 4.2 times per month, including dine-out, delivery and takeaways. This probably means that all of us present here right now on average might be ordering 4 times a month from outside. The key parameters. So let's play a little game here. Okay, so I will explain you the format, the particulars on the left hand side, and you would have to say which outlets have the maximum number.
business model. So all these models that I've covered are either master franchisee models or a joint venture. Basically all the QSRs. There is the outlet count, then there is the average per customer. That is the average amount of money that they are attaining per customer. Some customer may be buying food of 1,000 rupees, some 100 rupees. This is the average per customer. Then this is the average ticket value. Then cost of goods sold, gross margins, advertisement, royalty, store EBITDA, that is the store earning before interest and depreciation amortization, capex per outlet and average store size. This is all just to understand how big is the industry. Capex per outlet किसका सबसे ज़्यादा लग रहा है? MACD, for obvious reasons. Acha, a very essential marketing technique that Jumbo King and MACD has in common is its strategy to locate its outlet near to the train stations. You would always observe this. Challenges in the food service industry. The raw materials costs are subject to weather and economic conditions. So, due to the monsoon, supply chain issues and inflation, it significantly affects the restaurant's operating costs, which are highly volatile. Lease rental costs depend on format and location, especially in prime mall locations. Bangalore and Mumbai have a higher rental cost. Constantly evolving customer preferences keep R&D costs high. So this social media food blogs and aggregators, they advertise that this new cuisine has started here, this new outlet has started here, and a lot of R&D goes on to build that restaurant in such a place, in such a manner that it is highly attracted and demanded by the Indian consumer. It also faces some stringent regulatory environment increases compliance cost. Stringent regulations in India increase compliance cost for starting a restaurant, involving multiple licensing. So, due to the health, stringent regulations are very much important, and I think this one is a challenge but a benefit for the Indian consumer. Much like the Mumbai's iconic street food, the Chartered Accountancy course empowers you to blend precision, expertise, and adaptability, creating a unique recipe for success. As you navigate your future roles, whether auditing the financials of renowned food enterprises, strategizing tax planning for culinary ventures, or forecasting financial numbers for potential fundraisers, the insights gained from Mumbai's food industry will undoubtedly enrich your professional journey. Thank you. Thank you, Nirali. This was really a nice presentation. So now I hand over to Naiya. So thank you all the paper presenters. तुम लोग की बातें सुन के एक तो मुझे भूख लग गई and then मैं मुंबई घूमना चाहती हूँ. Also, now it's time to hear from CA Pramod Damankar sir. उनके पहले I would like to introduce him. So, as the name suggests, he is a qualified chartered accountant and also in practice in the field of audit taxation. He is a chartered accountant, a company secretary, and LLB. He has 30 plus years of experience, proving that age is just a number because he's always so energetic, so enthusiastic, and on the go mood. Also, not only that, he proves that कि CA में सिर्फ academics में interest होना is not necessary. He also has interest in drama. He has made a very entertaining film, a very entertaining Marathi film, Huntash. So, a huge round of applause for CA Pramod Damankar sir. Thank you, Naiya, for giving the opportunity. At the outset, thank you so much, Vasai branch, led by Chairman Amit Agarwal ji, Vikasa Chairman Abba, and the entire very vibrant team. Actually, I'm more or less very much connected to the students.
I was taking lectures with the GMCS and OTT some years back, some 8-9 years back. And then got connected with the students, with the interest, connected with the institute also indirectly. And then couldn't attend last 4-5 students' conferences, but this time I thought ki a lot of activity is going on, and the efforts taken by the Vikasa team, Vikasa Vasai branch team, and I was forced to come into the conference. And सही से कहता हूँ दिल से, सवेर से जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ, it is absolutely very, very fantastic. Absolutely fantastic. I've seen the conferences from 5 to 6 years back, and the upscale that I'm seeing in the paper writers, the presentations, and the confidence with which they are delivering the knowledge is absolutely unparalleled. I'm very sure in the hands of this next generation, my ICI, my CA, my profession and my branch is absolutely very, very safe and developing. Thank you so much. In fact, I become more proud of the institute. Because we respect IAS, we respect IRS, and CAs are also absolutely doing the same job. The talent should come in. And this is the platform, this is the dais that the institute offers to you. Agle time se, most of the people should come with the papers. We have got a very energetic, very knowledgeable session now. Shambhavi dealt with entertainment industry. Shall I deal with 5 minutes for that film? Okay? I produced a Marathi film. It was my dream as such to produce a film. 20 years I waited for that, and then one opportune time I got into it. बस 2-4 किस्से बता देता हूँ, otherwise it will be a book to be written on the different experiences taken by me, the tantrums that the artist and the technical persons, the teams that are there, I experienced personally. बहुत सारे challenges होते हैं film बनाने में. It is not at all very easy. As such, 1913 was the year in which the film industry first film Raja Harishchandra came into Bombay. और उस time से Bombay was known as the Indian film industry. Dada Saheb Phalke was a doyen of the film industry. 1930, more than 100 years now. And we have come to a very different age. Abhi, I'll tell you the secret why the film industry in Bombay developed. मेरे मूवी का शूटिंग हुआ था अमरावती में for 20 days. At one shoot, at least 80 people are required. 80 लोग लगते हैं, including artists, assistant directors, 4-5 जन assistant directors रहते हैं. DOP जिसे बोलते हैं photographer. He is a director of photography. Cameraman. उसके साथ assistant photographer, assistant DOP रहते हैं. बाद में आर्टिस्ट के असिस्टेंट्स, आर्टिस्ट के PA, उनके हेयर स्टाइलर्स. सो देर इज एटलीस्ट 80 पीपल्स टीम. एक दिन का अगर शूटिंग कैंसिल होता है, माई मराठी फिल्म, एक दिन का हमारा शूटिंग कैंसिल हुआ, आई गॉट इनटू 5 लाख रुपीज लॉस.
क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, एंड यू हैव टू पे द प्राइस, शूटिंग हो नहीं हो. Camera which was we had was a quality camera. At that time, 40,000 rupees was the rent per day. 40,000 रुपया कैमरे का रेंट रहता है. And now, the film doesn't come into the pen drive or floppy or hard disk. It is digitally filmed and digitally transferred everywhere. Once we have got a 20-day schedule at Amravati near Nagpur, and then we came, some 13-14 days schedule was there. 3 दिन का schedule हमारा film city में था. That time one of the lead actors refused to come to the shooting to the film city, saying that कि film city में उसको गोरेगांव में आरे कॉलोनी में डर लगता है. I asked her कि क्या प्रॉब्लेम है, तो she said की खूप भीती वाटते. कसली? वाघ सिंहांची. I told her I'll give you a personal security. Security people will come with you, but you have to come, otherwise अपना shooting नहीं हो सकता है, because that was a very crucial and fighting scene at the night time. Ultimately, I had to give the security. Why these? उसके बाद में we thought for a location at वसई. वसई में shooting करना चाहा हम लोगों ने. Then we calculated the cost. 2 दिन का shooting वसई में था. But we calculated the cost. All the actors, all those 80 people, 80 लोगों में से 70 लोग तो बॉम्बे में रहते हैं, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी. All the technicians and all the actors were staying in that area. वहाँ से वो वसई पहुँचेंगे by car. तो 2 घंटा आने में 2 घंटा जाने में जाएगा, तो 8 घंटे में से 4 घंटा तो मेरा शूटिंग नहीं हो सकता है. I am paying for the 8 hours. Whatever the rates are. और 4 घंटा उनके ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, प्लस आई विल हैव टू गिव द कन्वेंस टू देम. हर एक जन को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को गाड़ी देनी पड़ती है, टेक्नीशियन को उनको ट्रैवलिंग अलाउंस देना पड़ता है, एंड देन आई हैव टू कॉल देम टू फॉर द शूटिंग. तो इतना सब करके आई विल हैव गॉट ओनली 4 hours shooting footage, and that's why most of the shootings are done in Mumbai, to save the cost, to save the time, and to get the proper effectiveness. That is why entire things are concentrated in Bombay. आपको कोई बोले कि लोनावाला जब मैं शूटिंग करो, लोनावाला में मुझे मेरा बंगला है, वो शूटिंग के लिए दे सकते हैं. I think I will never advise. वहाँ पे अगर सपोज अमरावती में मेरा शूटिंग था, we had a resort for these 80 people, जैसे कि मेरी शादी थी, और ये सब लोगों को मुझे लेके जाना था. लिमोजिन बस किया था, 20 दिन 8 गाड़ियां वहाँ पे लगी हुई थी. इट इज अ बिग सेटअप एज सच. बहुत सारे पैसे वहाँ पे खर्चे हुए, बिकॉज माई शूटिंग वॉज अवे फ्रॉम बॉम्बे एंड ऑल द एक्टर्स, टेक्नीशियंस वेयर इन बॉम्बे. सो दैट इज वाई most of the shootings are still done in Bombay. Arekali, you should visit the film city. It is a very good place. Very good place. आज भी Big Boss है, और many serial shootings are also permanent set वहाँ पे लगे हुए. बहुत सारे producers के permanent sets वहाँ पे लगे हुए. They pay the rent to the government, and good facilities are there. So friends, it was a absolutely very nice experience making a film, because जैसे मेरा शामोही से बात हो रहा था, instead of फिल्म कैसे चलती है, what I think is that जो कथा होती है, जो स्टोरी होती है, उसमें अगर जान होती है तो फिल्म चलती है. स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, एक्टर्स कोई भी चलेगा, स्टोरी में जान होनी चाहिए, देन योर फिल्म विल बी एब्सोल्युटली हिट. आप देख लो, शोले देखो, लेटेस्ट जो भी होगी, बागबान देखो, एवरीथिंग. स्टोरी अगर स्ट्रांग है, यू आर गोइंग टू मेक अ
very hit film. Shambhavi presented a very good picture of the entire film economics. Absolutely, government gains a much revenue out of this film industry. Mumbai की ताकत है वो. We say कि Mumbai मेरी जान. Film industry is absolutely a beautiful part of it. मुंबई है तो फिल्म इंडस्ट्री है 100%. रामोजी फिल्म सिटी आई हैदराबाद में, स्टिल मुंबई का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ. So, Shambhavi dealt with the topic very good. Her preparation was good. Then we have got what's her name? Ritika. Ritika dealt with the tourism industry. 10 साल पहले मुंबई में फ्लैट का जो रेट था, आज मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आज ये इन्फ्लेशन जो मुंबई में फ्लैट्स के रेट्स का हुआ है, आज हुआ है, आफ्टर सम टाइम द रेट्स विल कम डाउन, बट इट नॉट गोइंग टू हैपन. द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन. अब BST बस देखो, दे आर चार्जिंग 6 rupees फॉर अ AC बस सर्विस. 9 metros are coming for us. Now no metros तैयार हो जाएंगे. Sea Link 25th December को ओपन आ रहा है. See, the center and the state governments are doing so much for the Mumbai. मुंबई की टूरिज्म इंडस्ट्री तो बढ़ने ही वाली है. एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो जॉब फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स देते रहती है. She also told about the economics of the tourism industry. Ritika, it was a good preparation from you. Then Nirali, correct na? She dealt with the food industry. आपने देखा होगा सिंपल चीज़ें भी आज ब्रांडेड होने लगी है. वड़ा पाव, जंबो वड़ा पाव आया, बर्गर किंग आया. चाय, अमृत तुल्य चाय आ गया 10 रुपये में, 12 रुपये 15 रुपये हो गया. एंड एवरी कॉमन दिस एंड दैट थिंग कम्स अंडर द ब्रांडिंग. उससे आई वॉज जस्ट थिंकिंग व्हेन Ritika was dealing with the tourism industry, इसमें भी अगर कोई ब्रांडिंग करे मुंबई टूर इंडस्ट्रीज के लिए, if somebody comes with a brand idea कि कोई भी जैसे जंबो वड़ा पाव है, that is a good such, but this is a service industry, उसमें कोई ब्रांड लावे कि मैं कोई फर्म निकाल के under a brand name I'll make you a half day tour or a 1 day tour. There may be some players in that, but there is a vast scope for that. So, coming to Nirali's food industry, there is a vast scope. Swiggy's, Zomato, and see how much revenue the people are earning and the government is earning. कितने लोग food industry से लगे हुए हैं? 5-star hotel, there is innumerable hotels, 5-star hotels in Mumbai, and still you get no place, no room for that. A very good occupancy in all the hotels. So Mumbai is absolutely a foodie. Indore भी जाना जाता है, दिल्ली भी जाना जाता है. But Mumbai has its own different distinctive factors. So it was a good knowledge from all of you three. Absolutely, I also learned and heard very patiently to you. It was an interesting topics, interesting papers from three of you. I was just to go to my office, but ऐसा लग रहा है I should listen all to the paper writers and get a new knowledge. Thank you so much. Thanks a lot and all the best to all of you. Thank you so much. Thank you so much, Pramod sir, for sharing your thoughts. It was an honor to hear from you all panelists. Now I would request CA Krishna sir to give the memento to our past chairman of
the branch, CA Pramod Damankar, sir. One more thing, कृष्णा सर के प्रमोद सर कृष्णा सर के प्रिंसिपल थे at a time. Now I would request CA Tarun sir to kindly give the memento to our judges. I request Kausar ma'am to come on stage. Now I request Ravi Khurana sir to kindly come on stage. So it was really an amazing session. Last but not the least, I would request Ms. Bhairavi to end the session with the vote of thanks. There are pockets of spring and pockets of rain, all in the same long day. Whatever you try, whatever you do, Mumbai always gets its way. A very scintillating evening to everyone present here. I am Bharvi, and I'm here today to express my gratitude. First and foremost, I'd like to thank Sir Pramod Damankar for being with us here today. It really is an honor, sir. Further, a big thanks to the paper presenters of our session and the esteemed judges. After all, they say there's no place in the world quite like Mumbai. It's big, it's loud, it's delicious, it's lively, and most of all, it's iconic. You are mine, O Mumbai, and I am yours. And with that, my dear friends, our technical session 2 concludes here. Thank you so much. Hope you had enjoyed this technical session too, and thank you. So, hi, hello, namaste, sat sri akal, kasakai, kem cho, kemona cho. A very delightful, cherished, and a dazzling evening to all the illuminating faces out there. As it is rightly said that, in the realm of dreams where the goal take flights, a journey begins through day and night. With passion as a compass and courage as a guide, success on the career, on the path we bide. So, today our auditorium is graced up with the tenacious startup founders. So, Piyush, let me ask you one question. If tomorrow, suppose you are going to start your business, what would you fear the most? Ritik, successful personalities always believe that startup fails, but the founders don't. At any point of time, life presents you with two options, just two, either risk or regret. I would always choose taking risk over regretting, क्योंकि पता है ना लाला, रिस्क है तो इश्क है. ओ, सो जैसे पिक्चरें सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. वैसे ही किसी सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए कौन सी 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अच्छा तो चलो तुम मुझे बताओ, अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल सुपर हीरो होते, then what superpower do you think would be the most crucial
for a successful CA and why? ओ, तो ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं स्पेशल सेशन सेकंड ऑफ द डे एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस इन करियर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ हाँ, वैसे भी कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद, तो आओ सब साथ मिलकर सीखते हैं। So ladies and gentlemen, tighten your seat belts, hold your breath, make some noise, and please, can we have CA Sarthak Ahuja sir on the dais? Can we also have a branch chairman Amit Agarwal sir? Can we also have Ava Parab sir, CA Krishna Purohit sir? Can we also have Daya ma'am and Tarun sir on the dais? Guys, आप लोग को एक चीज पता है, सार्थक सर की फ्लाइट आज 5 घंटे डिले हो गई, फिर भी सार्थक सर सिर्फ सीए स्टूडेंट्स को मिलने के लिए आए हैं। So can we have a great round of applause for CA Sarthak sir? In the spirit of admiration, let's embrace the beauty of this moment. I invite branch chairman Amit Agarwal sir, Aba Parab sir, Krishna Purohit sir, and Tarun sir to please give a bouquet to CA Sarthak Ahuja sir. Also there, ma'am. We are adding a touch of magic to our event. Now would like request upon stage Ami to give a brief and enchanting glimpse into Sarthak sir's remarkable journey. Hi everyone. Today I am privileged to introduce a prominent business consultant and a fundraiser. He is none other than India's youngest CA, ISB gold medalist, and lot of multi and three-letter acronym attached to his name. Guys, do you know this? He is the youngest Indian to have completed the courses of CA, CS, CMA with a graduate degree specializing in finance and investment analysis from University of Delhi, all by the age of just 23 years. This finance geek is a TEDx speaker and has various content in startup and finance with a combined online following of 1.3 million. He has also published 2 books, Daily Coffee and Startup Fundraising, and Founder's Office, which has been on the Amazon bestseller list. So ladies and gentlemen, सार्थक सर को जानना है कि अपने ऑडियंस में जोश कितना है. So please सब एक साथ आवाज करेंगे. Woo! So here we ignite a flame of an inspiration as we welcome to our stage a beacon of motivation. Please make a huge round of applause for CA Sarthak Ahuja sir. ये यूज कर लेते हैं. आ गया. ऑसम ऑसम ऑसम. हेलो बॉम्बे. ओके, एक तो कॉलर माइक इसलिए पहन लेता हूँ, थोड़ी चाणक्य टाइप फील आती है, मतलब सूट्स मी, सूट्स माय पर्सनालिटी. थैंक यू. एनीवे, जैसे इन्होंने बताया कि फ्लाइट 5 घंटे लेट थी, एक पॉइंट तक तो लगा कि शायद मिस ही हो जाएगा. But then I thought address तो करना बनता ही है. Why? Because a lot of people on my social media channel ना, when they message, उनको लगता है कि मैं शायद मुंबईया हूँ. मतलब
they think I belong to Bombay more than I belong to Delhi and Gurgaon. So coming to Bombay always feels like I'm coming home. हाँ, तो इसलिए मिस नहीं कर सकते थे. And especially when I talk to students, right? मेरे को अपनी जर्नी याद आती है. सबने बताया कि इंटरमीडिएट के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं. शो ऑफ हैंड्स ऑन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स. Intermediate, okay. Show of hands of final students. Final. Awesome. So we have more of intermediate. Show of hands of professionals who've passed. Okay. Only in the first row. Awesome. ठीक है. बहुत मजा आएगा. बात आज मैं हिंदी में ही करूंगा. Also to kind of lose the brand. उस दिन पता नहीं मैंने ऑनलाइन कुछ हिंदी में बोल दिया. लोग कमेंट करने लग गए, सर यू नो हिंदी ऑल्सो. मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है. ऑफ कोर्स दिल्ली वाला बंदा हूँ यार, हम तो दिल्ली वाली हिंदी बोलते हैं पूरी. बट एनीवे, तो मैं आपको ना थोड़ी अपनी स्टोरी का ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है, विच आई थॉट दिस इज़ द राइट फोरम फॉर मी टू शेयर. बिकॉज पढ़ाई में ये जो इंट्रोडक्शन में बोलते हैं ना, यंगेस्ट टू डू दिस, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, उसमें से कितना सच्चाई है और कितना दिखावा और बनावट होता है. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे. तो शुरुआत तो ऐसी हुई थी सीए जर्नी की कि बोथ माय पेरेंट्स आर सीएज. माय फादर डिड हिज सीए, सीएस, सीएमए बैक इन द डे. यू नो, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी a government servant in the Delhi government to an extent where आप सबको पता होएगा कि हम सबके दादाजी और सब, India was not as progressed. So, you know, families were always very hand to mouth. तो उस समय होता था कि बेटा कुछ करना है ना तो सीए कर लो, डॉक्टर कर लो, लॉयर बन जाओ, कुछ कमा लोगे. क्योंकि स्किल की वैल्यू होती थी, उस स्किल के बेस पे लोग कमा लेते थे. तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से आते थे. उन्होंने ज़िंदगी में जो भी कमाया था ना वो डिग्री के बलबूते पे ही कमाया था. मतलब इतना कि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू कैन रिलेट के जब हमारे पेरेंट्स ने शुरू भी करा होगा कुछ भी काम, तो मेरे पेरेंट्स ने तो अपने ऑफिस में भी मतलब झाड़ू लगाया, एक कमरे के ऑफिस में पोछा लगाया, सीए हो के. एंड एक बात मेरी मम्मी बताती हैं कि जिस बिल्डिंग में उन्होंने ऑफिस लिया था एक कमरे का, तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, सेकंड फ्लोर पे किसी और का ऑफिस था. तो जब सीढ़ी चढ़ते थे ना और देखते थे मेरी मदर को ऑफिस साफ करते हुए, वो बोलते थे हमें तो लगा था सीए के बड़े ठाठ होते होंगे, बट आपको अपने ऑफिस में झाड़ू पोछा भी खुद करना पड़ता है. तो उस समय मेरी मदर को लगता था यार अब क्या करें, अब पढ़ाई तो कर ली, डिग्री तो हो गई, बट प्रैक्टिस शुरू करनी है, ये सब तो करना पड़ेगा. तो वो सब देखते हुए भी ना ओवर द इयर्स जो उन्होंने जर्नी जी थी और जो कुछ कमाया था, उनको लगा था बेटा ये हमने करा है ना एक पढ़ाई की वजह से ही, आज जो कुछ तुम्हें अफोर्ड कर पा रहे हैं, तुम्हें स्कूल भेज पा रहे हैं, वो इस डिग्री के ही बदौलत है. तो मुझे याद है केजी में 5 साल का था मैं, मम्मी रात को पूछती थी कि बेटा बड़े होके क्या बनेगा. मैं बोलता था पुलिस. तो बोलती थी अच्छा गुड गुड सो जाओ. अगले दिन मैं बोलता था, तो वो पूछती थी बेटा क्या बनेगा बड़े होके, तो मैं कहता था एस्ट्रोनॉट. अच्छा सो जाओ सो जाओ. तीसरे दिन बेटा क्या बनेगा बड़े होके, और मैं बोलता आइसक्रीम मैन. तो बोलती थी ठीक है बेटा सो जाओ. चौथे दिन मैंने ऐसे, मेरे को मतलब पता नहीं था, मैंने कहा सीए बनूंगा. उन्होंने कहा हाय मेरा बेटा, एक चॉकलेट निकाली बैग से और दे दी. तो मुझे पता भी नहीं था कि केजी में सीए होता क्या है, क्या करता है. बस ये पता था कि पेरेंट्स ने याद कराया होता दैट इफ योर टीचर आस्क्स यू इन स्कूल व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, तो आपने बोलना है ही इज अ सीए, शी इज अ सीए. हाँ, तो वही पता था. उसके अलावा आई हैड नो आइडिया व्हाट अ सीए रियली डज. बट देन दैट चॉकलेट वाज क्वाइट एन इंसेंटिव. So, to be honest, I was doggy trained into becoming a chartered accountant, where every night I would get a chocolate and then be asked कि जाओ अब ब्रश करो. तो मैं कहता था यार बड़े हो गए तो सीए ही बनना है, चॉकलेट मिलती है रोज. बट आई रिमेंबर कि पूरी जिंदगी ना स्कूल में एक सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता था. कौन सा होएगा? मैथ्स. हम सब कॉमर्स के बच्चे हैं, एक ही चीज़ से तो फटती थी सबकी. सो आई रिमेंबर all my journey, be it 8th, 9th, I used to be like यार maths is the worst subject. To such an extent that बीच में ट्यूशन भी लगा दी कि यार एक मैथ्स तो सीखना पड़ेगा, स्कूल में समझ नहीं आ रहा, किसी को तो सिखाना ही पड़ेगा. पूरा साल just one subject I would study which used to be math.
because I used to be scared of it. Then came the time after the 10th boards to select what I wanted to do in the 11th, science, commerce. My school did not really offer the option of doing humanities or any other stream. So between science and commerce, I said now, of course, science is out because all my life I wanted to be a CA without really knowing whether I really wanted to be a CA. But commerce लूँगा ना तो without maths लूँगा. ठीक है, commerce लूँगा without maths. अब maths नहीं होगी. So I went and told my parents कि मैं तो option में commerce without maths भर रहा हूँ. एंड माई मम वाज लाइक कि ऐसे विदाउट मैथ्स तो नहीं चलेगा यार, मैथ्स तो तुमको पढ़नी ही पड़ेगी. मैंने कहा नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पढ़ूंगा. द ऑप्शन इज इन्फॉर्मेटिक्स, आईटी का कुछ पढ़ेंगे, द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स टेक. ऑल ऑफ दैट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज. ओके, सो माई मदर टेल्स मी कि अच्छा एक काम करते हैं, देखो तुम मेरी तो सुन नहीं रहे, हम ना भगवान से पूछते हैं. तो मैंने कहा कैसे पूछेंगे? तो उन्होंने काफ़ी सारी चिट्स बनाई, सम 8-10 चिट्स. हाफ ऑफ देम हैड विद मैथ्स, हाफ ऑफ देम हैड विदाउट मैथ्स. तो चिट्स बना के घर का जो मंदिर है उधर गए और हमने डाल दी चिट्स. फिर मैंने कहा अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा पहले तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे. तो मैंने वो पढ़ी. फिर उन्होंने मेरे को 1 घंटा पूजा करवाई, मतलब मम्मियों के भी तरीके. 1 घंटा पूजा करी. फिर उन्होंने कहा कि अब भगवान जी को बोलो प्लीज़ गॉड गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, हेल्प मी सिलेक्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, और फिर जो तुम उठाओगे जो आएगा तुम्हें भगवान जी की सुननी पड़ेगी. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने उठाया, निकला विदाउट मैथ्स. मैंने कहा यस, पढ़ा 1 थप्पड़, मैथ्स लोगे, सुन लिया. तो मतलब मम्मी के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती. ठीक है, ऐसे करके मैथ्स ले लिया. मैंने कहा यार फंस गए, अब मैथ्स कैसे होएगा. बट कर करा के कॉमर्स विद मैथ्स किसी तरह निकाल ही लिया. 12th जब ख़त्म हो रही थी ना तो क्लियर तो था कि CA ही करना है. बट आई रिमेंबर मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम शायद मैथ्स का था, और मेरी मम्मी लेने आई थी बोर्ड सेंटर पे. ऐसे जब ख़त्म हुआ बाहर आएगा कि कैसा हुआ. तो वो बाकी भी ना मेरे क्लासमेट्स की मदर्स के साथ बात कर रही थी. तो सब ने ऐसे कहा कि पता है BBA का ये एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस होता है, ये देना चाहिए. हमारे बच्चे का तो उस दिन मैंने फॉर्म भर दिया. तो उनको थोड़ा फोमो हो गया कि यार ये सब क्या बातें कर रहे हैं. तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम भी ये BBA का एंट्रेंस है, तुम भी ये टेस्ट दोगे और उसके लिए तुम्हें कोई क्लासेस करनी है तो तुम करोगे. मैंने कहा ये तो कोई प्लान में नहीं था, तो मैं ये सब नहीं कर रहा. तो उन्होंने कहा भगवान जी को पूछना है. मैंने कहा सॉरी. तो फिर उन्होंने फॉर्म मंगवा दिया, मैंने भर दिया. बट CPT तो करना ही था. तो मेरे फादर ने कहा कि देखो मैंने CA में भी करा था, और पता है तुम CA की पढ़ाई करोगे ना तो वो सारा साथ में हो जाएगा, सिमिलर सब्जेक्ट्स है, करेक्ट हो जाएगा. और क्या है तुम्हारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी एग्ज़ाम देने की, तो डर खत्म हो जाएगा. तो CS का भी फॉर्म भर दो, CMA का भी फॉर्म भर दो, CS का भी भर दो, और ये BBA वाला भी भर दो. तो मैंने कहा यार ये जो बोर्ड्स के बाद 2 महीने हमें घूमने जाना था और मज़े करने थे, वो तो सारा चौपट हो गया. But I ended up filling up those forms. I didn't take coaching for anything. I think like I'll wing it. यार CPT तो है, देखेंगे क्या होता है. बाकी सब तो is I just have to give it for the sake of it, just to please my parents. मेरे को तो CA ही करना है. अब चांस की बात है कि वो चारों पेपर हो गए, कि फर्स्ट पड़ाव हो गया पार. Now I got admission in this college. It's called Shahid Sukhdev College of Business Studies. There was this one course called BFI, Bachelor's in Finance and Investment Analysis. Only about 40 seats in the entire country. Like by some fluke, I swear to God, okay, like by some fluke, I got some All India rank 10. Now I realized a lot of people were crying कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ ये वो. मैंने कहा यार क्या बकवास, मैं तो पढ़ वढ़ के गया नहीं था, ऐसे ही आ गया. बेकार कोर्स है, मैं नहीं करूँगा. आई विल ओनली फोकस ऑन माई CA. बट देन माई पेरेंट्स वर लाइक यार डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ये एक अपॉर्चुनिटी है. CA तो तुम कर सकते हो, रेगुलर कॉलेज करो, जब वो ख़त्म होएगा फिर आर्टिकलशिप करेंगे. तो साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स. एंड फर्स्ट ईयर when I thought कि I will not join anything in dance, in street play, मैं क्विजिंग कुछ नहीं करूँगा, मैं बस 4 कोर्स में साइन अप कर लिया तो बस पढ़ाई करनी है.
I realized by the end of the first year, I was genuinely in depression. I was so much into depression for the simple reason कि यार तुम अगर यही सोचोगे ना कि मैं पढ़ूंगा, कितने लोग हैं जो साल भर पढ़ पाते हैं? मतलब मैं तो पढ़ ही नहीं पाता था. तो फ्रेंड्स नहीं बने कॉलेज में, कोई सोशल सर्कल नहीं बना. पहली बार मतलब लाइफ में डिस्पाइट बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट आई फेल्ट कि कोई दोस्त ही नहीं है, क्योंकि जो स्कूल के सारे थे वो सब अलग अलग जगह चले गए. अब ऐसे सीए स्टूडेंट बन के तुम रह गए हो, तुम कोचिंग जाते नहीं हो बिकॉज तुम कॉलेज जाते हो, कॉलेज में दोस्त बने नहीं हैं. तो इट स्टार्ट गेटिंग रियली डिप्रेसिव एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड इम्पैक्टिंग माई एग्जाम्स बिकॉज आई कंप्लीटली लॉस्ट मोटिवेशन टू स्टडी. वेन यू आर नॉट हैप्पी राइट, तो तुमसे पढ़ाई नहीं होएगी. You know, they say this one thing that if you're competing with a competitor and your competitor enjoys doing that same thing more than you can never beat him. So the first thing in life was, यार I have to really enjoy what I'm doing. किताबी कीड़ा बन के नहीं रह सकते. तो सेकेंड ईयर आया तो आई डिसाइडेड कि यार थोड़ा स्ट्रीट प्ले, मैंने कॉलेज में बहुत थिएटर करा था. लाइक आई डन थिएटर फॉर अबाउट 10 years of my life before I graduated. In Punjabi, in Hindi, in English, I toured India doing a lot of theatre and I thought यार theatre करूँगा दोबारा, कॉलेज में ही तो चांस है. So I signed up for theatre, I signed up for dance and I did all of that and I made a lot of friends, was very happy. And वो जो खुशी थी ना, उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठता था तो पढ़ाई होती थी. तो सबसे पहले मतलब एक जो लेसन मैं देना चाहूँगा लाइफ का, वो तो है ना वो ही काम करना जिसमें खुशी मिले. क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट यू नो थैंकफुली गॉड इज काइंड दैट वी आर बॉर्न इन दिस जनरेशन वेयर द वेरी वेरी हार्ड वर्क ऑफ पुटिंग अ छत ऑन आवर हेड्स, getting food at home has been taken care of by our grandparents and parents. And we can call it privilege or we can just show gratitude and say, I'm so thankful that I am at a position regardless of, you know, there may be still disparities between you and your friends. But at least खाना कपड़े ये वो तो हो रहा है ना यार, इतने तो लाले नहीं पड़े किसी के. I'm assuming anyone sitting here, right? So first thing for you, realize that when you are in such a generation, तुम अपने आप को मन मार के कोई काम नहीं कर पाओगे. Now I'll tell you how that played out in my life further. जब कॉलेज खत्म हुआ ना, तो अब था कि आर्टिकलशिप करनी है एंड आई आस्क्ड माय पेरेंट्स के कैसे करना है, शुड आई अप्लाई टू अ बिग फोर, शुड आई डू दिस दैट. काफ़ी रिसर्च करके ये पता लगा, दे सेड कि यार हम तुमको इतना एक्सपोजर दे देंगे हर चीज़ में, तो तुम इधर ही कर लो, दिस माइट बी बेटर. सो आई सेड कूल. आई डिड माई आर्टिकलशिप फॉर 3 years वेयर द ओनली फोकस वॉज ऑफिस जाओ, काम करो, अच्छे से डिलीवर करो, बट ये एग्जाम पास करना है. कोई कोचिंग ली नहीं थी बिकॉज समहाउ ऐसे था, मतलब आई नेवर टुक अ कोचिंग इन CPT और IPCC और फाइनल एंड माई पेरेंट्स केप्ट सेइंग कि यार ले लो कोचिंग, ले लो, कुछ गाइडेंस चाहिए होगी. बट आई फेल्ट कि यार इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो कि खुद को समझा नहीं सकता. आई हैव एक्सेस टू द इंटरनेट. अगर किताब से नहीं समझ आएगा, कोई नोट्स ले लूँगा, कोई किसी और की किताब ले लूँगा, यूट्यूब पे कुछ देखूँगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ना, बट आई विल फिगर इट आउट. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन माई ओन एंड उस तरह से क्या होता है ना, तुम्हारा कोई फिर सर्कल रहता नहीं है बिकॉज दोस्त तो तुम्हारे कोचिंग क्लास में ही बनते हैं शायद. तो लोग जो बोलते थे ये VG सर, ये सर, वो सर, मैं बोलता था किन की बातें कर रहे हैं, मैंने तो सुना भी नहीं है. सो ओनली अ कपल ऑफ फ्रेंड्स आई मेड इन दी ITT प्रोग्राम और समथिंग. हाँ, एंड वो बातें करते थे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, वो कर लेना, और मेरी हालत ख़राब हो जाती थी सोच के कि भाई ये कैसे होएगा, मेरे को तो कोई ये गाइडेंस ही नहीं दे रहा. बट ऑल ऑफ दैट असाइड, CA फाइनल का टाइम आया, पढ़ रहे थे घर पे बैठ के, और इवेंचुअली आई फाउंड माई सेल्फ कि तुम जितना मैथ्स पढ़ते हो ना, उतना तुम्हें सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है CA फाइनल में. नहीं, सब कुछ इतना टफ है, बट टफ का भी टफ जो मुझे लगता था फाइनेंस. और मुझे शर्म आती थी क्योंकि मैंने अपनी अंडरग्रेड करी थी फाइनेंस में.
ठीक है, 3 साल मैंने फाइनेंस पढ़ा था, तब भी नहीं समझ आता था कि क्या चल क्या रहा है यार ये मैथ्स। लाइफ में इतनी बड़ी गलती कर दी। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी भी होता है, SFM, 100 मार्क का पेपर, वाट लग गई मेरी। मतलब आई रिमेंबर आई वेंट एंड आई स्टार्ट राइटिंग दैट पेपर एंड व्हेन आई केम बैक होम, जब तक रिजल्ट आने में शायद 1.5 महीना होता है ना, रोज वो पेपर निकाल के मैं मार्क्स लगाता था कि यार बिल्कुल जेनरसली भी दे देना एग्जामिनर, कितने कितने मैं हूं ना, अगर एग्जामिनर दिलदार तो मैं कितने दे दूंगा। 37 38 से ऊपर बनते नहीं थे। मैंने कहा यार वाट लग गई। अब पता है क्या होएगा, माय पेरेंट्स विल टेल मी तुम बड़े ओवर स्मार्ट बनते हो ना, ले लेते कोचिंग, कर लेते वैसे, ये कर लेते, झंड हो जाएगी पूरी। आई रिमेंबर व्हेन द रिजल्ट केम आउट, आई वाज लाइक यार ये रिटन ऑफ ही है। जब ऐसे आया रिजल्ट, बस SFM देखा 40, हाँ 40 मतलब ताली तो तुम भगवान के लिए बजाओ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे लिए मत बजाओ। ताली बजनी चाहिए भगवान के लिए। 40 आ गए, मैंने कहा यार, और उसी वजह से पता है वो 40 का 39 होता ना, आई वुड हैव हैड टू गिव बोथ ग्रुप्स टुगेदर, बिकॉज मेरा एक ग्रुप से दूसरे का सेट ऑफ होके 50 क्रॉस हो रहा था। तो आई वाज लाइक यार सच्ची में भगवान नहीं बचाया। अब जिंदगी में फाइनेंस नहीं करूंगा कभी, कुछ भी करूंगा फाइनेंस तो मैंने देखना ही नहीं है, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। मतलब फाइनेंस कर लिया ना तो लाइफ में गंजा हो जाऊंगा, मतलब इतना परेशान हो गया हूं मैं। तो अब क्या हुआ फिर, ऐसे लगा कि यार देखो CA करके ना अकेले कुछ हो नहीं पा रहा। I'll tell you why. This is a very important aspect which I realized in several forms later. कई बार मतलब मुझे ऐसे लगा कि यार कि मैं कहीं ऐसे अपने आप को CA सार्थक आहूजा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो शायद शर्म आ रही है। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं करी मैंने, मेहनत खुद को पता था कितनी मुश्किल से भगवान का करम है जो 40 आ गए और पास हो गए। बट somehow when I went out in the market, I realized यार कितने लोग बैठे हैं जिनको मुझसे कितना ज्यादा आता है, और कितने ही CA बैठे होंगे जिनको मुझसे कम भी आता है। राइट? You'd all agree? ये तो आज हम CA की गैदरिंग है तो ऐसे सीक्रेट्स डिस्कस कर सकते हैं, बाहर नहीं बोलना, ठीक है, बाहर मत बोलना। बट आई रिमेंबर मुझे ना कई बार ऐसे लगने लगा कि यार ये डिग्री की ना द शीन इज गॉन। वो बोल के जो मेरे पेरेंट्स को जो प्राइड होती थी या उनको जो रिस्पेक्ट मिलता था ना, आज शायद मार्केट में वो है नहीं। मुझे लगा, ओके, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग एंड आई एम अ CA, ओके, सो डोंट, आई हैव नो एजेंडा। समा मुझे लगा कि यार ऐसे करते, चलो MBA करते, MBA की ऐसे लग रहा है वैल्यू, कोशिश करते हैं MBA करते। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा यार मैं MBA करूँगा। तो उन्होंने कहा यार ये क्या नई चीज़ तुम ले आए, अब तुम, हमारा बेटा चले जाएगा दूर हमसे कहीं और, फिर तुम कहीं और नौकरी करोगे, फिर तुम US चले जाओगे, फिर तुम कुछ करोगे, फिर एक वो फियर्स होते हैं ना मदर्स को कि यार चाइल्ड विल लीव अस एंड देन दे विल गो समवेयर, और फिर क्या घर टूट गया, ये हो गया। मैंने कहा यार MBA ही तो कर दिया यार, पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, मतलब बाकी सब तो बोलेंगे मौज करनी है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को पढ़ाई करनी है। सो दे सेड ओके ट्राई इट आउट। बट रहना मेरे को इंडिया में था, तो ISB के लिए प्रिपेयर करा, एप्लीकेशन लिखा, और somehow ये सोच लिया था, या जितना पढ़ता था उसमें इतना पता था कि यार कुछ भी कहो ना, बाद में अगर पैसा बनाना है तो वो क्लियरली बिजनेस में ज्यादा बनता है, क्लियरली, rather than employment. But what I have to figure out is कि सर्विस और बिजनेस को कैसे कंबाइन करके, वो होता है प्रोफेशन। हम लोग जिस चीज में है, प्रैक्टिस होती है ना, एक चीज हिंदी में बोलते हैं ना, हींग लगी ना फिट करी, सुना है कभी?
इन्वेंट्री नहीं लगती सर्विस बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल नहीं लगता, जितनी मेहनत करोगे ना कमाल होगे, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होएगा, भगवान न करे, है ना। तो मैंने कहा दैट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट, तो करेंगे तो कुछ बिजनेस टाइप ही। तो ये सोच के मैंने एमबीए की एप्लीकेशन लिखी। मेरे को इंटरव्यू, दिस वाज 2015 दिसंबर, मेरे को इंटरव्यू, जब इंटरव्यूअर में गया, वो एक आईटीसी साकेत है दिल्ली में, वो होटल में, उधर इंटरव्यूज होने थे। तो मेरे इंटरव्यूअर आए मेरे को रिसीव करने। उधर ऐसे कल्चर होता है कि आप एक रूम में बैठे होते हो, इंटरव्यूअर आता है आपको इंटरव्यू रूम में लेके जाता है। तो मेरा इंटरव्यूअर आया, मिस्टर अंकुर वारिकू, हाँ ठीक है। तो मैं ऐसे टाई लगा के बैठा हुआ था। मैंने देखा यार उन्होंने टाई वाई पहनी नहीं है, टी शर्ट पहनी है, चिल जीन्स पहनी है। मैंने कहा आई एम फीलिंग रियली अनकंफर्टेबल इन दिस टाई, कैन आई टेक इट ऑफ प्लीज। उसने कहा या फील फ्री। मैं कहा डन। तो हम गए, बैठे, वेरी नाइस इंटरव्यू। ही वॉज आस्किंग मी कि तुमने एप्लीकेशन में लिखा है तुम्हें जॉब नहीं चाहिए, तुम्हें प्लेसमेंट नहीं चाहिए, तो तुम एमबीए कर क्यों रहे हो? सेंस नहीं बनती, सबको उधर प्लेसमेंट के लिए जाना है, तो तुम्हारा आरओआई कैसे निकलेगा? एंड आईएसबी इज एन एक्सपेंसिव एजुकेशन, यू नो, फॉर एवरीवन रियली, लाइक इट्स कॉस्टली, राइट? तो ऐसे यार देखो, करूंगा तो बिजनेस, क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। फाइनेंस डेफिनेटली नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि एमबीए में जाके एक तो एक्सपोजर मिल जाएगा कि मार्केटिंग में क्या होता है, टेक में क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑपरेशंस में क्या होता है, और लोगों से इंटरैक्ट करने को मिलेगा। प्लस ये लोग जब बड़ी कंपनीज में जाएंगे और मेरी इनसे फ्रेंडशिप होगी, तो कुछ काम उन कंपनीज के साथ करना होगा, तो शायद नेटवर्किंग हो जाएगी। तो मैंने कहा सोच लो, लोग जो बोलते हैं ना ये, वो एंड में प्लेसमेंट ही ले रहे होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने तो सोचा हुआ है। थैंकफुली उन्होंने ओके कर दिया एप्लीकेशन और मैं चला गया आईएसबी। ISB in 1 year has about 8 terms, okay? 8 terms. So each term is about a month and a half. And each term has 4 subjects. And it's highly competitive. Highly competitive. Competitive to the extent that 5% of the batch size is chartered accountants, okay? And first term has 4 subjects. There's one in marketing. There's one which is called financial accounting. There is statistics, and there's probably one more which I'm forgetting. हाँ? तो सारे जो सीए होते हैं ना, वो पूरे बैच को बोलते हैं भाई हम पढ़ाएंगे तुम्हें अकाउंट्स। ये प्रोफेसर तो क्या पढ़ा रहा है भाई, ये लेजर वेजर, ये सीधा बैलेंस शीट पे पहुंच गया, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो एमबीए कॉलेजेस में सारे सीएस बैठ के ना पूरे बैच को पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करते हैं एनालाइज ये वो सब। और जब एग्जाम होता है ना, सारे टॉपर्स निकलते हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, नो किडिंग, was true even in my batch, accounts में भी। And worst nightmare of my life was statistics. वही मैथ्स के दिन, फाइनेंस के दिन याद आ गए, पूरा 1.5 महीना मैं बस स्टैट्स ही पढ़ता रहा। और तब भी my 32 subjects through the year, my worst score on my mark sheet is in statistics term 1. I just kept studying it and I just wouldn't get it. And I was like, यार मैं ये बीट ही नहीं कर सकता IITians को, जिन्होंने इतने साल IIT JEE की कोचिंग के लिए इतना टफ मैथ्स करा है, उसके बाद 4 साल मैथ्स करा है, इतना मैथ्स तो मैं बीट ही नहीं कर सकता, मेरा माइंड ही नहीं बना हुआ उसके लिए। And then very honestly, when subject after subject, I started realizing कि यार मैं तो below average हूँ। First time in my life, I am among 900 people and my scores are below average. My confidence took a massive beating, okay? Massive beating. Again, I could feel myself going in that college first year mode where, you know, some amount of depression starts coming and you start feeling really bad about yourself. मेरे तो बस की कुछ नहीं है। ये ऐसा भी टाइम था जब मतलब बाल थोड़े कम हो रहे थे, है ना? और सोचो यार, मतलब I went to a all boys school, हाँ,
First time in my life, I'm in a residential program, MBA, amazing classmates, and I'm bloody balding. मतलब आधा टाइम तो यही जाता रहता था, ये देखो बाल ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये कटा लें, वो कटा लें, फिर बोलो इधर का पानी नहीं सूट कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बकवास बोल रहे होते हो तुम अपने आप को. बट थोड़ा पीछे जाऊंगा और एक कहानी बताऊंगा. 12th में ना, आई वॉज पार्ट ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड अपने स्कूल का. मैगजीन का एडिटोरियल बोर्ड होता था. पूरे साल लोगों को बोलता रहा आर्टिकल दो मैगजीन के लिए आर्टिकल दो. जब साल का एंड आया ना, द एडिटर हैज टू राइट अ पीस कॉल्ड द एडिटोरियल पीस, एंड द टीचर वाज आफ्टर मी, योर एडिटोरियल हैजंट कम. और मेरे हाथ कांपते थे, लिखा नहीं जाता यार, लिखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता. एक मेरा फ्रेंड था, वो बहुत आर्टिकल्स लिखता था. उसको मैंने कहा यार तेरा ये वाला पीस बहुत अच्छा है, इसको मैं अपने नाम में दे दूं. उसने कहा दे दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है. सो आई रिमेंबर आई वॉज द एडिटर ऑफ द मैगजीन, एंड उस साल स्कूल में जो वो पीस गया ना एडिटोरियल मेरे नाम पे, वो मैंने नहीं लिखा हुआ. और वो गिल्ट ना मेरे साथ पूरा टाइम कॉलेज में रहा, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा यार मैं कभी कोई एग्जाम में चीटिंग नहीं करता था. मतलब इतना था सच्ची, कोई एग्जाम में मैं चीटिंग नहीं करता था. और यार ये एक लाइफ में ना मेरे को ही पता है मैंने ही चीटिंग करी है. सो आई फेल्ट दैट आई हैव टू फेस दैट फियर ऑफ राइटिंग. राइटिंग है ना, बस ये डर होता है कि लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे अरे इसको इंग्लिश नहीं आती, ये क्या बकवास लिखा है, ये ग्रामेटिकल एरर है, ऐसे थोड़ी लिखते हैं. कितने थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चलते हो. आई नो एनीवन हु हैज द फियर ऑफ राइटिंग, उसको लगा होएगा. तो कॉलेज में मैंने कहा यार आई हैव टू फेस दिस फियर, कम व्हाट में, आई हैव टू फेस दिस फियर. तो उस समय ब्लॉगिंग बड़ा शुरू हुआ था, लिखते थे blogger.com पे. तो मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँगा और मैं लिखूंगा और मैं डालूंगा फेसबुक पे कि लोग देखें, जिसने करना है जज ना करे, बट ऐसे डालूंगा तभी तो सीखूंगा. तो एक ब्लॉग मैंने बनाया था, माई लाइफ इज अ जलेबी. हाँ, इट वॉज लाइक मालगुडी डेज, बट फॉर पीपल हु ग्रू अप इन द 90s in Delhi, like very Delhi Punjabi humor, you know, Ayushman Khurrana kind of humor. You get what I'm saying, right? But I made a promise to myself that every month I will put at least 2 posts on the blog and I will not break that promise to myself. So I remember September में क्या होता था, 30th September को 2 पोस्ट जाते थे सुबह सुबह 4 बजे उठ के लिख रहा हूँ, क्योंकि सितंबर इतना बिजी होता है, लिख ही नहीं पाते थे, राइट, आर्टिकलशिप में. बट लिखा 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 6 साल लिखा. इन 2015 इट गॉट द बेस्ट ह्यूमर ब्लॉग ऑफ इंडिया अवार्ड. या आज की डेट में वो ब्लॉग पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है, कोई पढ़ नहीं सकता. बट उसकी बुक पूरी बनी हुई है, किसी दिन रिलीज करूंगा, देन यू गाइज विल नो. बट वो पता है एक लर्निंग लाइफ में आई थी कि यार व्हेन यू रियली फेस योर फियर्स एंड यू गो एट इट कंसिस्टेंटली फॉर ईयर्स, तो कुछ तो तुम कर लोगे. द थिंग इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड नॉट ब्रेकिंग दैट प्रॉमिस टू योरसेल्फ, राइट. क्योंकि वो फेस करा हुआ था फियर, और मुझे याद है पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती थी. आई हैड डन अ लॉट ऑफ थिएटर, ओके, आई हैड डन अ लॉट ऑफ थिएटर. बट आई रिमेंबर 12th में माई टीचर फोर्स्ड मी इन स्कूल कि तुम्हें डिबेटिंग सोसाइटी में घुस के पार्टिसिपेट करना ही है. और मैंने कहा इसको क्यों लग रहा है मैं अच्छा डिबेट करूंगा, मेरे से नहीं होएगा. 2 दिन मैंने रट ली डिबेट, मतलब ऐसे रट ली कि अगर ये ऑडिटोरियम का दरवाजा खुल जाए ना अभी और कोई आ गया तो वो हनुमान चालीसा की तरह वो शुरू से ही होएगा शुरू. वो फिर भूल गए क्या कहाँ पे थे, क्या थे, फ्लो टूट गया. अब तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय फेलो कोलंबन्स, मतलब शुरू उधर से ही होना था. और ऐसे कांप रहा था मैं लिटरली, एंड आई वाज अशेम्ड ऑफ दैट. यार आई वाज लाइक यार ये क्या बात है, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम लोगों के आगे बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि डर लगता है, बोलेंगे सोचेंगे लोग कि क्या बकवास बोली है, कैसे बोली है, इसकी तो प्रोनाउंसिएशन खराब है, इसकी तो इंग्लिश खराब है. डर लगता रहता था. तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ मैंने कहा यार मैं जो मर्जी हो जाए. जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म करने के बाद ना CS पूरा हो गया था, फिर CMA पूरा हो गया था, तो मैं CS इंस्टीट्यूट के वो जो चैप्टर्स होते हैं ना, छोटे जो रीजनल चैप्टर्स होते हैं, जैसे CA इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, तो वो कुछ
फाउंडेशन वाले बच्चे, इंटरमीडिएट के लिए ना 50-50 का बैच होता है, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये वो सारी क्लासेस होती है ना, तो मैं उधर जाके बस उनसे, चेयरमैन से बोलता रहता था, सर आप प्लीज़ कोई टीचर नहीं आए ना तो आप मेरे को बुला लेना, मैं एकदम से आ जाऊँगा, बट मेरे को करना है। तो बोलते थे क्या पढ़ाओगे, मैं बोलता था कुछ भी, जो टीचर नहीं आए ना आप बता देना, एक दिन पहले बता देना, मैं प्रिपेयर करके मैं पढ़ाऊँगा। और उसमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है ना, व्हेन यू नो दैट द ऑडियंस दैट यू आर केटरिंग टू is junior to you, probably no lesser than you, then the fear of judgment goes away. Because as a professional, I was catering to students, so I was like, ठीक है, डर नहीं लग रहा था. But वो जहाँ जाके इतने साल करा, कि at a point I got comfortable with public speaking. So because I had these two experiences, I remember even when I was going bald and losing my hair, I was like, यार, I have to face my fear. What is the only way to face your fear? Make it your face. Picked up a trimmer, shaved my head off, and I was like, time waste करना ही नहीं है मैंने इस चीज़ में कि बाल ऐसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं, ये वो भाड़ में जाए यार. This is my identity. This is the only way to deal with it. This is the only way to deal with it. वो करा. It was a very depressing time. I'm telling you, MBA can be very daunting for a lot of people. If you make it to a good B school, let me tell you, you are sitting with the guys from the top IITs, the top BBA schools of the country. तब तुम्हें पता लगता है कि मेरी इस देश में क्या औकात है. कुछ नहीं है, वाट लग गई मेरी. So I realized that everyone was focusing on placement. ये मार्क्स लाने, ये करना है ताकि जॉब लगेगी, जॉब लगेगी. I was like, मैं आया क्यों इधर? Suddenly this is not making sense because this entire ecosystem is built for a placement. It's not built for me. बीच में मैं रो रहा होता था, अपने पेरेंट्स को बोल रहा होता था फ़ोन पे, वो बोलते थे वापस आ जाए यार, क्यों इतना परेशान हो रहा है, सीए तो करा ही हुआ है ना. I was like, नहीं यार, अब तो फेस योर फेयर्स की बात आ गई, अब तो करना ही पड़ेगा. फिर मैंने सोचा अच्छा लाइफ में करना क्या है, नहीं पता, बट फिगर आउट करते हैं. इधर अगर मैं टॉपर नहीं बन सकता, बट ऑल द एक्स्ट्रा टाइम आई हैव कंपेयर टू अदर पीपल बिकॉज दे आर फोकसिंग सो मच ऑन प्लेसमेंट, I can focus on figuring out what I want to do in my life, where the trends are going. So every day I would go sit with professors in their offices. B schools have professors, have offices, and they do a lot of consulting work with other big companies. पूछने के लिए कि क्या कर सकता हूँ आगे, कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, सबके इनपुट्स मिलते थे थोड़े थोड़े. फिर मैंने कहा यार टॉपर नहीं बन सकता, बट लाइफ में ना सेंट कोलंबस स्कूल में गया था जहाँ पे शाहरुख खान ने 1983 में जीता था सॉर्ड ऑफ ऑनर ऑल राउंड एक्सीलेंस अवार्ड, जो मेरे को 12th में नहीं मिला था और मैं बहुत रोया था. तो मेरे को था यार अब ऑल राउंड एक्सीलेंस अवार्ड लेंगे. पढ़ाई में बीट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों में करेंगे. सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करे, हर इवेंट पे नाचा गाया, थिएटर करा, प्लेसमेंट में हेल्प करा, वॉलंटियर करा, कॉम्पिटिशन्स करे, बहुत कुछ करा. हर चीज़ में जीता नहीं था मैं, हर चीज़ में जस्ट अबाउट एवरेज, बट करा सब कुछ. विच इज़ वाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जब ऐसे आई रिमेंबर ग्रेजुएशन था, बैठे हुए थे और डीन ने बोला एंड द अवार्ड फॉर द चेयरमैन्स बेस्ट ऑलराउंडर गोज टू, एंड द एंटायर बैच सेट सार्थक आहूजा. You know, more than that award, more than getting that award, it was that validation. कई बार ना तुम इतने डिप्रेशन में होते हो ना, वो साल मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं चढ़ते हुए मैं रो रहा था. इसलिए नहीं रो रहा था कि अवार्ड मिला है तो उसकी खुशी है, मैं ये रो रहा था कि यार वो जो दर्द है ना, फिगरिंग आउट कि आई एम गुड फॉर नथिंग, वो मुझे ही पता है. और आज ये लोग तो दे रहे हैं, बट अंदर से मुझे ही पता है कि मेरे को कुछ नहीं आता. सब चीज में एवरेज ही तो था मैं, बस करा सब कुछ, तभी इन्होंने दे दिया. क्यों? क्योंकि कोई डिबेट होती थी ना कभी कोई इंडस्ट्री के बारे में, लोग ऐसे बता रहे होते थे, कोई बोलता था कि
चाइना इज बेटर देन इंडिया बिकॉज ऑफ these रीजंस। मैं कहता सही बात बोल रहा है, सही कह रहा है। दूसरा कहता था इंडिया इज बेटर बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो ये भी सही बोल रहा है ना। तो मेरे को लगता था यार ये तो अच्छी बात है कि मैं इतना रिजिड नहीं हूं अपने दिमाग में, या ये बुरी बात है कि मैं सबसे ही स्वे हो जाता हूं, मेरा खुद का कोई व्यू ही नहीं है। तो मतलब आईएएस खत्म हो गया, एमबीए खत्म हो गया, तब भी लग रहा है यार मेरे को कुछ पता ही नहीं है, लोग क्या क्या डिबेट कर रहे होते हैं, पब्लिक पॉलिसी और ये बिजनेस और ये स्ट्रेटजी, और मेरे को तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता उसमें। फिर अब कुछ करना था, साल खत्म हो गया, क्या करें। वापस आया, मैंने कहा यार आई विल स्टार्ट अ बिजनेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। टैक्स वैक्स मेरे को कुछ पसंद नहीं है, एमबीए करा है, कुछ बिजनेस कंसल्टिंग करूंगा। सब एमबीए के बाद ना एमबी भी जाना जाते हैं, मैकिंजी, बेन, बीसीजी। एसएमईज के लिए भी तो चाहिए कोई, एसएमईज कैन नॉट अफोर्ड एमबीबीज, एंड व्हाट डू एसएमईज डू, दे गो टू देयर सीए। लाइक माय फादर्स क्लाइंट्स वुड कम टू हिम, से ये हायरिंग में प्रॉब्लम हो रही है वो, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फादर, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल मैन, बट वो जो एडवाइस देंगे उसके, उनको क्या एचआर का एक्सपीरियंस है यार। ही इज अ टैक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग एक्सपर्ट। He is not an expert on what are the best HR practices. He is not the best expert on marketing, but he is giving gyan on everything. And a lot of times I would say, yaar, what you're saying doesn't make sense. As CAs, just think about this. The biggest opportunity is that businesses come to you for some service. Okay? Now, let's think about people in practice first, and I'll also cover people in employment. People come to you for a service like कि आप हमारा टैक्स का सॉल्व कर दो, ऑडिट कर दो। आप अपसेल क्या करोगे, अकाउंट्स आउटसोर्सिंग कर दोगे, है ना, कुछ रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज कर दोगे, कुछ लीगल ड्राफ्टिंग कर दोगे। All of these things are cost functions for a business. There are CAs better than you in the market today who can beat you at cost. See, when you're young, you haven't built those deep relationships कि वो client नहीं छोड़ के जाएगा. People will beat you at cost. And at some point, if you think कि audit की फीस 3 साल में यार 10-15% तो बढ़नी चाहिए, he'll say यार बहुत बढ़ गई आपकी, वो बंदा मेरे को दूसरे ठप्पा मार के दे रहा है, वो इतना सिरदर्दी भी नहीं करता। Not to say कि जो गाय ठप्पा मार रहा है वो सही कर रहा है ना, but market reality is that in business people pay you for value addition. If you are just doing a compliance function, you are a cost center for them, which does not add to their revenue. So whatever work, even if you go into employment, you always have to think, in this company, am I a revenue center or am I a cost center? And वो जो feeling थी ना पहले कि CA की शायद कोई इतनी वो respect नहीं हो रही, हाँ, वो respect की बात नहीं थी। This is when I realized that people talk to me as a cost center because I do functions which are important for them. They recognize it, they recognize my skill. But I am in an industry which is a commodity. It's a commodity industry. For you to make super profits, you have to differentiate in value addition which your competitors cannot give. Right? So as a CA, it is important for you to learn things outside of your curriculum, like no code, like AI tools, which anyone today can use without any background in tech. तुमको पता होना चाहिए यार कैसे यूज करना है. That's when you become a value add and you become a revenue center for your clients or for your employers. Okay? Now, when I started, my content journey actually started during the pandemic. I'll tell you how it started. मेरे को लगा यार अपने बिजनेस में थोड़ा SOPs होना चाहिए, थोड़ा जो काम रोज दिन होता है उसको थोड़ा प्रोडक्टाइज करते हैं टेक के थ्रू. एंड सारे क्लाइंट्स ना वही पूछते रहते थे सेम सवाल. अच्छा एक और चीज़, ISB के बाद सोचा था फाइनेंस में नहीं घुसेंगे,
बट बैठे कंसल्टिंग फर्म खोल के, तो कोई ISB का फाउंडर होएगा, वो बोलेगा कि यार मेरा ना फंड रेज हो रहा है, तुमने कराया पहले कभी फंड रेज, हेल्प करा दोगे? तो तुमने जब कंसल्टिंग फर्म शुरू करी होती है, तुम बोलोगे ना? करोगे ना? बोलोगे हमने तो बड़े कराए हैं, है ना? और फिर तुम जाग के सीखोगे, तुम पढ़ोगे, और तुम्हें रियलाइज होएगा कि कोई रिसोर्स ही नहीं है जहां तुम सीख सकते हो, क्योंकि इस चीज की कोई किताब ही नहीं है। और जो तुम्हें वीडियोस या आर्टिकल सब मिल रहे हैं वो सब US बेस्ड है, जो इंडिया में ऐसे अप्लाई भी नहीं होता, और तुम ऐसे कांपते रहोगे, बट तब भी तुम कॉन्फिडेंस से करोगे, कुछ तो करके दोगे। तो हुआ क्या, ऐसे करके वैल्यूएशन का काम भी कर लिया, फंड रेजिंग का काम भी कर लिया, लोगों को, फ्रेंड्स को फ़ोन करके पूछता था जो बिग 4 में थे या जो लॉ फर्म्स में थे कि यार ये कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन, CCPS कैसे होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे होता है। तो कई सवालों के जवाब ना वो बोलते थे, यार बड़ा अच्छा सवाल है, बट मेरे पार्टनर को पता होएगा, मेरे को नहीं पता। मैंने कहा शिट, किसी को कुछ भी नहीं पता, एवरीवन इज विंगिंग इट, एंड इट डजंट शो दैट दे डोंट नो. What it shows is that the world is changing so rapidly that the problems you get today are those which are not faced by businesses previously. So the guy who wins is one who with confidence can say, yaar, I will figure it out and I will do it for you. Okay? तो सबसे पहले ये face your fears वाली बात है, तुमको इतना काम आएगा ना, तुमने नहीं करा हुआ है, but the guy who wins is the one who says, I will figure this thing out. And at this point, I realized that not taking tuitions had probably tuned my brain a little to give me that comfort, यार खुद से करके थोड़ा सीख लूंगा. अब क्या हुआ, जो सब सारे एक ही सवाल पूछते रहते थे सेम के को फाउंडर इक्विटी स्प्लिट कैसे होना चाहिए, ESOP कैसे होना चाहिए, कई चीजें पूछते रहते थे, वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए. एंड आई थॉट यार वीडियो बना देता हूँ, सेम चीजें मैं रोज आंसर करता रहता हूँ. अगला क्लाइंट कोई पूछेगा ना, आई सेंड हिम द लिंक, ही कैन सी मी टॉकिंग, ही विल हैव द कंफर्ट कि हाँ ये सार्थक का ही आंसर है, उसने कोई आर्टिकल नहीं भेज दिया, है ना, मेरा भी टाइम बच जाएगा. सो आई स्टार्टेड माई वीडियोज डूइंग दैट टू प्रोडक्टाइज माई नॉलेज टू सेव माई टाइम. FAQ वीडियोज बन रही थी. देन आई थॉट कि मैं अपनी टीम के लिए महीने में एक सैटरडे हम ब्लॉक करते थे ट्रेनिंग का, तो यार रोज ये वीडियोस देख लेगी मेरी टीम तो वो भी ट्रेन हो जाएंगे, है ना. वो हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज लाइक अच्छा यार दिस इज गुड. सो फॉलोअर्स एंड ऑल डिडंट मैटर, दिस इज व्हाट वाज बीइंग बिल्ट. बट आफ्टर 90 days, आफ्टर 3 months, आई रियलाइज कोई टॉपिक ही नहीं बचा बोलने के लिए. टैक्स पे सब कवर कर लिया, लीगल जो बताना होता है सब कवर कर लिया, ऑडिट पे कवर कर लिया, वैल्यूएशन पे कवर कर लिया. हम लाइक यार 100 से ऊपर टॉपिक ही नहीं है बताने को. 10 साल का एक्सपीरियंस, 100 से ऊपर बातें नहीं है बताने को. which made me realize that as a professional, as an expert, even your 10 years of experience post qualification can be summarized into less than 100 insights. If someone learns those 100 insights, they can wipe you out of the market there and then, and they can compete with you on cost using technology, and you are irrelevant. When I couldn't find a topic on the 100th day ना, I was like यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, सारे असाइनमेंट्स जो करे थे जिंदगी में सब सोच लिए, कोई इंसाइट ही नहीं है बताने को. फिर से खोली किताबें, पढ़ा कि कोई टॉपिक तो मिले यार. फिर लगा ओ ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत सालों से यूज नहीं करा बट अच्छा टॉपिक है, बता सकते हैं. बताया. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय कंटेंट जर्नी देयर वर 3 पिलर्स. आई थॉट टैक्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज दैट समथिंग आई नो वेरी इजीली, बता दूंगा, सोचना नहीं पड़ेगा, रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, एज सी एज पता ही होता है उतना. सेकेंड आई टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस बिकॉज पर्सनल फाइनेंस वॉज मासी, पीपल वॉन्टेड टू नो, you know, how do I invest my money, how do I buy insurance, how do I do all of this. The third was business finance. How do you study a P&L,
You know, how do you value businesses? How do you raise money? All of that. The third vertical is I realize this is where I make money. So if this content is going to be a marketing exercise for me, this is where I make money. Tax is for days where I don't have to work too hard on my content. पता ही है, कुछ बोल देंगे. Personal finance is to get reach so that maximum people get to see my content. And corporate finance is where I get leads for business and I make money. That is when my content started becoming a lead magnet or a marketing function. From what used to originally be training function for my employees and FAQs for my clients, right? But today, I do not care about what followers I have for the simple reason that the day I start optimizing for followers, I will stop giving value. So content for me is the most important function in business for every business, every professional, every employee in the world today, regardless of which country, city, state, profession you are in. And this function is even more important than marketing, and this is learning and development. You have to make content your learning and development function in life. The only reason I put out content every day is because if I have not put content today, that means there was not even one single new thing that I've learned today. एक भी नई चीज आज नहीं सीखी, 1 मिनट की, तो दिन बर्बाद कर दिया. दिन बर्बाद है अगर एक भी नई चीज नहीं सीखी. बिकॉज याद रखना, सीए फाइनल पास भी हो जाओगे ना, 100 इनसाइट्स एनीवन कैन वाइप यू आउट ऑफ द मार्केट. After I was done covering content on business finance, on corporate finance, I was like, what next? I picked up marketing. I picked up product development. I picked up consumer behavior. I'm reading about blockchain technology. I'm reading about AI tools. I'm reading about how to do cross-border business. Finally in life, I came to a point where I started enjoying my work. क्योंकि तुम्हें जो पसंद है ना, तुम वो कर रहे हो. और मैस्लाउज नीड हायरार्की पढ़ा था ना सबने, है ना? रोटी कपड़ा मकान, योर बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स. Eventually at the top is self-actualization. And humans are so predictable and similar that self-actualization for most of you in another 3-4 years is only going to be, am I learning something new? Am I improving every day as a person? And it shows in the form of, are you working towards your health? Are you looking better? Are you able to contribute in conversations better? Do you have an opinion on things that matter? When you start seeing that result, it changes your perception of yourself, it builds confidence, and you are a happier person, more motivated to face your fears and do whatever the hell you want in life. Okay? And please, I know my Instagram handle is CA Sarthak Ahuja and it says CA Sarthak Ahuja. Please do not identify yourself by any letters, by any degree, by anything. I am proud of being a chartered accountant, but that is just one part of my overall identity. So the day you start going and introducing yourself as a CA, you are putting yourself in a box. You know, that's how psychology works. Because you're constantly reinforcing in your head कि मैं टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं अकाउंट्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ. नहीं. You are an expert of anything that you want to be because the world is changing so rapidly. The half-life of any profession today is not more than 5 years. Whatever skill you learn today, in 5 years, max is going to be a commodity and people will beat you at it at cost. So every day you have to be ahead of the curve. And have you read of this? There's this one book called Atomic Habits. You guys have read? James Clear?
What does it say? You have to build a habit of doing something daily. There has to be a cue which leads you to do something. There has to be a reward which then becomes a motivating factor for you to do it again tomorrow. For some people, it's health. For learning, it is genuinely content. Because एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें 20 यूनिट कंज्यूम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है. जब ऑफिस में 12-12 घंटे काम करो, उसके बाद रात को जाग के 2.5 घंटे में किताब पढ़ता था. Every day, today, I have to study minimum 4 hours, 2.5 hours of blogs, industry reports, just to know what is new in the world, where is it going, where is D2C going, where is SaaS going, where is crypto going, where is AI going, what's happening in which geography, where is there an opportunity for business? Because you have to be ahead of everyone. Another 1.5 of just reading fundamentals of business which don't change, so that it's a reinforcement. Learning and development today is the most important function, and the day you start saying कि आज CA की पढ़ाई खत्म, मेरी पढ़ाई हो गई, अब मैं काम करूँगा, that day your career is over. Okay? Then there is this wonderful book. I don't know how many people have heard of this. It's called Building a Second Brain. Building a Second Brain by Tiago Forte. Okay? And I'll give you an example. Seinfeld पता है लोगों को? Friends पता है शो? हाँ? Friends से पहले जो most kick-ass show in the world था ना, वो था Seinfeld. उससे previous generation का. It ran for 10 years. 10 साल चला. 10th season जो था ना, उन्होंने उसके बाद बंद कर दिया, and 10th season की ratings were the highest ever. Okay? So Seinfeld, Jerry Seinfeld is the guy. He comes in the top 10 wealthiest actors in the world till date. If you look at today's rankings, still the wealthiest, one of top 10 wealthiest actors in the world, you'll see Jerry Seinfeld. He's the guy who acted in it and who wrote that show. And you know, someone asked him, how can you be so funny for 10 years? 10 साल तक तुम्हारे जोक ही नहीं खत्म हो रहे और अच्छे से अच्छे होए जा रहे. It's very difficult. Anyone who's tried humor, they'll know how difficult it is. And he said, we have a process. Out of our writing team of 4-5 people, किसी की भी लाइफ में दिन में कुछ भी फनी होता है ना, वो उसको लिख के एक बक्से में डाल देते. जिस दिन बैठ के एपिसोड लिखना होता है ना, all of us, there are these many chits and ideas. People pull out 5 chits and stitch an entire episode around it. Because if you depend on your memory or something to be funny, you can't be. So the insight here is that whatever you learn, if you don't record it somewhere for easy access when you need it, learning that thing is a waste, because in some time you will forget it. So content, building a second brain basically means whatever you learn, you need to build a system in your life that you record it in different classified folders which you can access. Today digital tools enable it कि आपको जब चाहिए आप निकाल सकते हो. किसी को याद नहीं रहता कुछ भी, आप निकाल के वो नॉलेज को एक्सेस करके यूज कर सकते हो. For me, those videos, I started classifying into different subjects. Once I realized I had enough body of knowledge on fundraising, that got written into a book. Then when I realized I had enough body of knowledge to become another book on marketing and product development, HR, that became another book. So that is just my system to keep a repository of my knowledge. I don't care how much it sells. I don't care. It is a learning and development system for me. And please, I request you, if you do this, this has changed my life. People only see the marketing angle. People only see the fact that itne followers ho gaye. People only see that oh, ye gold medalist, ye wo. They don't know all this background information. And the reason I gave you this entire story is to tell you what changed my life. Your content can be private. You don't need to share it with people. That's absolutely okay. But when you do, you check off another aspect in James Clear Atomic Habits, which is getting some validation from people, which acts as a motivator for you to keep going.
And of course, it adds on to marketing. Of course, it gets you more reach, which gets you more business, which keeps you going. तो अगर कोई भी बोलता है ना कि I don't have a face for the camera, I don't have this, या मेरी वो personality नहीं है यार, you will have to change. The reason founders today are becoming content creators, hosting podcasts and doing all of that is not because they want to be famous, is because they've realized customer acquisition costs in digital businesses is through the roof. It is unsustainable. The only way for you to reduce CAC is to build a community. And why will people follow you? If you give educational content. When those people follow you, you get an opportunity to sell them the product. It's all business for everyone. And content से तुम सीख जाते हो यार कि this is how people react. Your ability to play people, to understand psychology, to understand sales improves, which we are not taught in CA. We do not have a course on sales. How are you going to understand? How are you supposed to craft your pitch so that your conversion rates go up with a client? Without selling, you sell. All of that happens to this. If you want to be an employee in a great company, you get hunted by headhunters because of your insightful content. Please do it. Okay? So that was my story. I hope it was helpful, and definitely share it with someone who may need it. Thank you. Thank you, sir, for your word of wisdom. In the grand tapestry of our event, we are about to weave a movement of honor and gratitude. Let the cosmic connection unfold as C.A. Amit sir, C.A. Krishna Purohit sir, C.A. Tarun sir, C.A. Abba Parab sir, and C.A. Daya Bansal ma'am. Sir, graces the stage by handing over the memento to C.A. Sarthak Ahuja sir. Now I would like to invite Viraj to express a gratitude and deliver a vote of thanks. In realm of numbers led by stars, our guest speakers wise from afar. CA skills enabled with grace guiding us in this knowledge chase. So here's our thanks, profound and deep, for the words in our hearts will keep. Everyone, could you be any more motivated and polished enough to achieve your success? I am so sure that you felt this session as no less than an amazing TED Talk. Thank you so much, Sarthak sir, for such an informative time that we could witness. It was our honor to hear you out. Thank you. Yeah, thank you, Viraj. We appreciate your contribution and extend our sincere gratitude to you by delivering such a magical line. As we come to end of this special session, take a moment, envision your success. Your journey is unique, your potential is limitless. You are a master of your shape, and you will continue to be. Just commit to it yourself. With this thought, we would now wrap this session. Rahil? Greeting to the aspiring minds and the future architect of change. Today we have the distinct honor of being in the physical presence of those who do not just wear the uniform. They wear the responsibility of safeguarding our societies. I, Hardik Jain, I, Ritika Chandak, welcome you all on behalf of Vikasa Vasai branch to the last sessions of the day, special session number 3, where the pulse of the nations beats in every word spoken. We are about to dive into a fascinating panel discussion with some distinct guests and top-notch IPS and IRS officer. Now, before I bring our esteemed panelists into the conversation, let's take a moment to reflect on the significance of their role. This officer don't just enforce the law.
They embodied the spirit of service and sacrifice. And on that note, let's set the stage for our esteemed panelists. Picture this is a journey into the mind and experiences of those who wear the uniforms with pride and purpose. Let's welcome our distinguished guest to the CA Student Mega Conference 2023. I am thrilled to invite onto the stage CA Alok Ranjan sir, CA Harsh Aradi sir, and Regional Council member CA Rudesh Pankhania sir to the dais. As we mark this special day, I request CA Rudesh Pankania sir to present a bouquet to CA Alok Ranjan sir. A round of applause for CA Aba Parab, Chairman of a Vikasa, to present a bouquet to CA Harshad Aradi sir. CA Krishna Purohit sir to present a bouquet to CA Harshad Aradi sir. To drive into the impressive background of CA Alok Ranjan sir, I would like to invite Isha Yadav. Good evening, everyone. Today, it is my honor to introduce our esteemed speaker, whose extensive knowledge and experience makes them the perfect speaker for today's conference. He is a member of Indian Cost Account Service at the Ministry of Finance, Government of India, and has work experience in the 10th largest reinsurance company of the world, law enforcement agencies, National Pharmaceutical Pricing Authority, Ministry of Chemicals and Fertilizers, and has dealt in various matters regarding the Parliament and policy. He is an advisor to ASD in the Indian Navy and has supervised various GST audits conducted under the GST laws. Along with that, he has also discharged various responsibilities of Rajbhasha Adhikari. Now that we all know about his impressive background, let's get ready to be motivated. Thank you. To embark on a journey of a discovery of exploring the profile of CA Harshad Aradi sir, I would like to invite Om Das Gupta. Ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce our next panelist, CA Harshad Aradi sir, a chartered accountant and a member of the Indian Revenue Service since 2011. With his qualifications in Chartered Accountancy, LLB, Masters in Public Administration, and more, he is currently associated as the Joint Commissioner of Income Tax for Nasik region. His experience include holding significant roles such as Assistant Commissioner and Deputy Commissioner in Mumbai investigation. He has also contributed significantly in some of the high-stake cases, including the Panama Papers, ICIJ cases, and Luxembourg Papers. Today, he brings invaluable experience, insights, and knowledge to the conference. Further, I would like to hand over to CA Rudesh Pankania sir, Regional Council member, to take over the panel discussion forward. Okay, I think one of the best sessions that is coming up now, and let's get deep dive into. So first of all, thank you so much. Can we have a huge round of applause for our panelist speakers, CA Harshad ji and CA Alok ji.
I think we were just listening to while Sarthak ji was talking in the earlier session. Then don't limit yourself to just chartered accountants. And I think both our panelist speaker are perfect example. I was going through their profiles, the number of degrees that they've had, that's amazing. To start with, Harshad sir, I think just, what I would, my first question to you would be, or, just you could share with our audience, what inspired you after CA to move to civil services, or what did your journey to civil services examinations was? This is a very comprehensive question. Something like, please describe the dictionary. See, the thing is this, civil service examination, it is never an accident basically. It is a generalist exam. You have to decide, you have to plan, you have to be persistent with your plan, you have to execute that plan to the fullest. So, what inspired me? Yes, that is the key word, because civil service is something that it is a long process, like a chartered accountancy. It is not that one fine day you just get up, you decide that I want to be an IAS officer or an IPS officer, and within a small span of time, you get through it, and yes, you are done. It never happens like this. It takes time. The entire examination, it is 1 year affair. 1 साल की तैयारी है, उसके बाद 1 साल की एग्जाम है. 1 साल की आपने तैयारी की, उसके बाद आपने प्रीलिम एग्जाम लिखी, उसके बाद आपने मेंस एग्जामिनेशन लिखा, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट लग गई, एंड देन यू गेट इनटू द सर्विस. तो ये पूरा 1 साल जब चलता है, तो ये 1 साल जो है ना, इसमें आपका मोटिवेशन कंसिस्टेंट रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. जैसे मतलब हम लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी करते थे, तो उस वक्त एक बड़ा पॉपुलर सा एक जार्गन था कि नेवर 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 सरेंडर, आफ्टर में देयर इज नवंबर. और सर आज भी ये कायम है. बिल्कुल. शायद से अभी एग्ज़ाम के मंथ्स आगे पीछे होते रहते, कभी कभी रिजल्ट्स के भी होते रहते. उसके बाद एक था कि वेर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, आफ्टर नवंबर देर इज़ अ मे. तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है. और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छी बात क्या होती है कि आपने एक बार फाउंडेशन क्लियर कर लिया, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो. आपने एक बार इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दिया, उसके बाद आप फाइनल के स्टूडेंट हो. और एक बार आपने फाइनल क्लियर कर लिया, मरते दम तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. मतलब द थिंग विच आई हाईली अप्रिशिएट अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कि जब मेरा एक बैचमेट था चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा था, तो बहुत मेहनत करता था. तो ही ऑलवेज यूज टू से वन थिंग विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यार एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा ना, फिर मरते दम तक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहूँगा. तो मतलब मर भी जाऊंगा ना, तो मरते वक्त लोग कहेंगे कि सीए मरा है. तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो सिविल सर्विस में नहीं रहती है. सिविल सर्विस के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसमें आपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम निकाल ली, उसके बाद आपने मेंस एग्ज़ाम निकाल ली, उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया, देन कम्स द रिजल्ट. और जब रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है आप क्वालिफाई नहीं हुए, देन यू हैव टू गो बैक टू दैट फर्स्ट लेवल. आपको वापस प्रीलिम एग्ज़ाम लिखनी है. तो वो वाला जो साइकिल है, उसके लिए आपको मोटिवेशन थ्रू आउट द ईयर हाई रखना है, एंड अक्रॉस द ईयर भी कभी कभी वो रखना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट आपका रिटायरमेंट है वो एट द एज ऑफ 60 यू हैव टू रिटायर. उसके बाद यू आर बैक टू स्क्वायर जीरो, लाइक एनी कॉमनर यू गो आउट. तो वो वाला फ़र्क है. So for the inspiration, let me give you my background a bit. I come from a very small place. आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स वसई से हैं, हाँ वसई से है, और मे बी लोकल यहाँ के होंगे. तो आई टेल यू माई बैकग्राउंड. आई एम फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, विच इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट नासिक. जो मतलब आप यहीं से वसई या पालघर की तरफ से जाओगे तो जवाहर करके एक घाट आता है, वहाँ से ऊपर चढ़ के जाएंगे तो वो आता है. My family background is like, my family is the priest of त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, एंड घर के सारे लोग जो है वो एक तो पूजा पाठ करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं. तो मेरे बारे में बात ऐसी थी कि मैं खेती बाड़ी करता रहता था. वन फाइन डे एक कोई दिल्ली के काफ़ी सीनियर रिनाउंड मिस्टर बत्रा करके थे. ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ही वॉज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट. ही हैपन टू कम टू त्र्यंबकेश्वर फॉर पूजा. तो माई मदर शी ऑलवेज यूज टू थिंक दैट कि बेटे ने पढ़ना चाहिए, बट थोड़ा ठीक ठाक है बेटा पढ़ने में. तो उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करा दिया. ही टोल्ड मी कि बेटा कुछ पढ़ो. तो मुझ में मस्ती थी. मैंने बोला सबसे टफ क्या है, तो ही सेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो मैंने बोला फिर सीए करेंगे, और फिर सीए ने जो मस्ती उतारी ना, आई टेल यू.
मतलब है ना, आप में से पता नहीं कोई मराठी बात करता है या नहीं, मराठी में ना एक कहावत है कि माज बहुत था मेरे में फिर सीए किया, फिर उतर गया। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता था कि एक बड़ी बहुत सुंदर सी लाइन है उनके बारे में कि उन्होंने जब ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, ही वॉज केप्ट ऑन एन आइलैंड। तो उस आइलैंड का नाम था एल्बा। क्या नाम था? एल्बा। तो उनके बारे में वो कहते थे कि एबल वॉज आई टिल आई सॉ एल्बा। जो टिल है ना, तो वो अंग्रेजी में लिखते हैं ना एपोस्ट्रोफी ये डाल के डबल एल, तो एबल वॉज आई टिल आई सॉ एल्बा। इस लाइन की खूबी ये है ना कि ये लेफ्ट से पढ़ो तो भी मीनिंग वही रहता है, राइट से पढ़ो तो भी मीनिंग वही रहता है। तो मैं खुद को मतलब नेपोलियन बोनापार्ट समझता था अकाउंट्स का, फिर मैंने सीए फाउंडेशन लिखा फिर हुआ कि यार नहीं, अकाउंट्स वॉज आई टिल आई सॉ सीए। पूरी मस्ती उतार दी इंस्टीट्यूट ने, लेकिन जो इंस्टीट्यूट ने मस्ती उतारी ना, उसका एक फ़ायदा ऐसे हुआ, काबिलियत बहुत बढ़ गई। एंड व्हेन ही सेड दैट कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद आप बहुत सारे डिग्रीज कर सकते हो, तो वो ऐसा ही है कि बड़ी बिल्ली निकलने का रास्ता जब भी बन जाता है ना दरवाजे में, उसमें से छोटी छोटी बिल्लियाँ चाहे जितनी भाग सकती है। तो एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो, ट्रस्ट मी, हर कोर्स आसान लगने लगता है। मतलब इन माय ओपिनियन इवन द most prestigious civil service examination, which is considered as the second toughest civil service examination in the world, is also relatively easy to our chartered accountancy exam. तो मोटिवेशन जो था ना, वो वही था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद है ना, आई वांटेड टू प्रूव टू माई सेल्फ कि कुछ चीज़ें करनी है। और तो उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम जो था वो सिविल सर्विस एग्जाम था। एंड सिंस आई एम फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर में हर 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला जो लगता है ना, मैनेजिंग द कुंभ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, इट इज द टफेस्ट चैलेंज फॉर एनी ब्यूरोक्रेट, मे इट बी एन IAS ऑफिसर, मे इट बी एन IPS ऑफिसर और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। द थिंग इज दिस कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा लोग वहाँ आते हैं। जो कुंभ जहाँ लगता है, कुशावर्त तीर्थ करके जगह, वहाँ पे इतने सारे लोग नहाते हैं। नहाने के बाद त्र्यंबकेश्वर का जो मंदिर है वहाँ का दर्शन करते हैं, देन दे गो बैक। इमेजिन एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 81,000 के आसपास सेकंड्स आते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक सेकंड में एक आदमी अगर दर्शन करे तो मैक्सिमम कितने लोग दर्शन कर पाएंगे? 81,000 पीपल। 24 घंटे अगर मंदिर खुला रहा तो अब ये 81,000 लोगों का दर्शन होने के बाद आएंगे, दर्शन करेंगे, बाहर जाएंगे। मतलब मैक्सिमम 24 घंटे में 81,000 कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में एक दिन में 5-5, 7-7 लाख लोग उस पर्वणी के दिन आते, दर्शन करके चले जाते हैं। अब ये मैनेज करने की जिम्मेदारी क्या है? किसके ऊपर है? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। कुछ गलत सलत हो जाता है, तुरंत मीडिया में आ जाएगा कि ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये मैनेज करने वाले, उसके पीछे वाले जो दिमाग होते हैं, अगर अपनी बॉडी को हम एडमिनिस्ट्रेशन पकड़े तो जो ब्रेन वाला हिस्सा है वो प्ले करता है वो सिविल सर्विस क्लियर किया हुआ बंदा, एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर। तो वो वाला मैंने देखा था और उसके बाद आई थॉट दैट कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिखनी चाहिए। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में होता भी ऐसा है कि अपने यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाइड है। आजकल तो अब वो गाड़ी के ऊपर बत्ती नहीं रही है, वो वाला तामझाम नहीं है, बट स्टिल आपके पास वो वाली कैपेसिटी आज भी है, वो वाली पावर्स आज भी है, जिसके जरिए यू कैन टच द लाइव्स ऑफ द पीपल। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई कलीग्स एंड माई प्रोफेशन, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं 200 या 300 फाइल्स देखता था या 200 या 300 लोगों की मदद कर सकता था, एज ए ऑफिसर आज की तारीख में वॉट एवर द डिसीजन आई टेक, मीन्स व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उस वक्त हम लोगों ने मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना पे काम किया था। सोचिएगा कि उस वक्त की फाइल पे जो भी नोटिंग्स लिखे थे, उससे हमने 20 स्क्वायर फीट का भी एरिया अगर ऐड कर दिया, समझ रहे हैं ना, 20 स्क्वायर फीट का एरिया ऐड कर दिया तो उसका इम्पैक्ट कितने लोगों तक जाएगा? पूरे इंडिया में न जाने कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे, उतनी फैमिलीज को 20 स्क्वायर फीट का एरिया ज़्यादा मिल गया। या जैसे कि मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था तो प्रशांत मेहता करके मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर थे, उनके अंडर मैं ट्रेनिंग ले रहा था। तो ही वॉज इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ही टोल्ड मी दैट कि आप में से काफ़ी लोगों ने रेलवे से ट्रैवल किया होगा कि पहले रेलवे में है ना ये बेडशीट्स नहीं दिया करते थे। तो इन्होंने बस एक फाइल पे लिखा था कि अगर हम 10 रुपये
बेडशीट की कॉस्ट टिकट में ऐड करते और बेडशीट दे देते, तो जो ट्रैवल करने वाला बंदा है उसको वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं, जो वॉशिंग के खर्चा है वही हम लेंगे, एडिशनल 2 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे कि अगर फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अगर अपने को रिप्लेस करना है वो बेडशीट तो हम रिप्लेस कर पाएंगे। छोटा सा चेंज होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो आप सोचते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन यू टच द लाइव्स ऑफ करोड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। जैसे कि इनफैक्ट उन्हीं के केस में ये था कि उनके पहले जो ट्रेन हुआ करती थी वो बस 2 टायर की गाड़ियाँ होती थी, तो एयर कंडीशन गाड़ी में उन्होंने बस ये एक सजेशन दिया था कि हम क्या इसको 3 टायर कर सकते हैं क्या नहीं, मतलब 3 टायर इन अ सेंस तीसरा वाला एक बर्थ बीच में डाला जाता है, तो वो माना गया एंड अल्टीमेटली इट हैपेंड सो। एंड नाउ ऑल ऑफ अस, रेलवेज की कैपेसिटी बढ़ गई, उतने बोगी के नंबर कम हो गए, द नंबर ऑफ पीपल कैन गो ट्रैवल नाउ। तो ये वाले छोटे छोटे जो चेंजेस है जो हम सोचते हैं कि यार ये किसी ने तो करना चाहिए, ये किसी ने तो करना चाहिए। जैसे आप रास्ते से आते हैं उस वक्त बोलते हैं कि यार इस गोल चक्के के ऊपर या इस सर्कल के ऊपर बहुत ट्रैफिक है, इसका कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच नॉर्मली आस्क, द प्रॉब्लम्स विच वी पोज। उसके ऊपर सोचिएगा इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का साइड में बैठा हूँ, मैं अगर एज ए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा हूँ या मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करके बैठा हूँ, तो व्हाट दिस इज द सोल्यूशन विच आई कैन गिव इट टू दिस, वो सोचना शुरू कर दीजिएगा। दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ द सिविल सर्विस प्रिपरेशन, है ना। Sure. Thank you so much. Before I get to Alok sir, so just sir, as you were already CA and then you took up civil services, so how would life be a little different if you could guide the audience, if you would be working in a corporate maybe earlier, and continued that thing, or as compared to your working here? What difference it could make, or what is the difference that you felt, in that? देखो मेरा पहला पोस्टिंग जो था ना मुंबई के लालबाग डोंगरी एरिया में था, जो उस वक्त है ना दाऊद इब्राहिम कास्कर के नाम से जाना जाता था। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से आपको समझाता हूँ। मतलब उस वक्त काफ़ी लोगों से बातें होती थी, मुलाकातें होती थी कि जो समवेयर और द अदर अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे उस पीरियड में भी। तो मैं पूछा करता था कि यार आपने ये गैंग क्यों ज्वाइन किया, आपने वो गैंग क्यों ज्वाइन किया, है ना। तो यही सवाल ये मुझे पूछ रहे हैं, बस थोड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से पूछ रहे हैं। तो मैं उनको पूछता था, तब उनमें से एक बड़ा स्मार्ट सा शातिर सा बंदा था, उसने मुझे बताया था कि सर अगर किसी गैंग का हिस्सा होना है ना तो हम उस गैंग का हिस्सा होते हैं जो सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो गैंग के साथ हमें उस गैंग का पावर मिलता है और फिर हमारा काम बहुत आसान होता है। सेम इज माय आंसर। इस देश का सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मानो या ना मानो, कहने के लिए मैं इसको गुंडा कह रहा हूं, बट द थिंग इज दिस कि गुंडा वाला काम नहीं करते। द मोस्ट पावरफुल एजेंसी इफ इन दिस कंट्री इज देयर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको सच में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना है तो द मोमेंट यू गेट ऑल द पावर ऑफ दिस, दैट एंटायर, मतलब वो जो है ना कोई काम का वो क्या है, कोई तो डायलॉग था कि पूरी कायनात पीछे लग जाती है वाला, वैसा ही है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हो, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके पीछे खड़ी हो जाती है। ट्रस्ट मी, इफ अ ब्यूरोक्रेट हैज अ रियली वेरी गुड आइडिया ना, एंड इफ ही कम्स अप एंड इट गेट्स अप्रूव्ड, पूरी सिस्टम आपके साथ खड़ी हो जाती है। एंड एट दैट टाइम यू कैन रियली डू वंडर्स, यू कैन डू वंडर्स, एंड दोज वंडर्स यू कैन सी हैपनिंग अराउंड द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट विच वी आर सीइंग। ये वाली जो चीजें है ना, दीज आर द ऑफिसर्स दे आर डूइंग। ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल विल इज, मतलब द पब्लिक विल इज कमिंग थ्रू द पॉलिटिशियंस, बट एट द एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेटिवली उसके फंक्शंस जो हो रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स दे आर वो कर रहे हैं, तो उनके जरिए हो रहा है। तो दैट इज द थिंग, दैट वाज द रीजन आई डिसाइडेड टू जॉइन द सिविल सर्विस। नाउ हिज क्वेश्चन वाज दिस कि दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द सिविल सर्विस। मैंने उन क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया। तो इन दोनों में मतलब हम अभी अंदर भी बैठे थे, दैट इज द सेम आंसर, आई विल स्टिक टू इट। मोटिव, कॉर्पोरेट्स में अगर आप काम करते हो तो आपका इंटेंशन जो है वो शुरू में यही है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। योर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। एंड व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस, आपका मोटिव है लोगों को सर्विस देना है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आपके पास प्राइवेट बस है, आपकी प्राइवेट बस विल प्लाई ऑन द रूट्स विच आर प्रॉफिटेबल, है ना। जैसे कि मुंबई से लेके पूना का रूट है, पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, रोड्स आर गुड, नंबर ऑफ पीपल आर ज्यादा है,
मेरी बस पूरी भरेगी, टिकट का पैसा ज़्यादा देंगे ये लोग, तो मैं अपनी बस जो है एज ए बिजनेसमैन पूना और मुंबई के बीच में दौड़ाऊंगा. दिस इज द प्रॉफिट मोटिव कॉर्पोरेट डिसीजन. मुंबई से लेके पालघर लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, रोड्स आर नॉट ऑल दैट गुड. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी बस में सिर्फ 2 या 4 ही लोग जा सकते हैं, लेकिन एक भी अगर बंदा जा रहा है तो भी उस गांव के साथ मेरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए. उस बंदे के पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि गवर्नमेंट मेरे यहाँ तक पहुँच रही है तो मैं वो बस दौड़ाऊंगा. ये हो गया गवर्नमेंट वाला पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पे ना सर्विस है, यहाँ पे ना जो भी रिसोर्सेस है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मोटिव है. दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस. यही डिफरेंस आपको पोस्टल सर्विस और कुरियर में दिखेगा. दिखने के लिए कुरियर का एनवलप आपको चकाचौंध वाला और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, फटाफट आ रहा लगेगा, लेकिन पोस्टल सर्विस जो है ना वो बिल्कुल रिमोट विलेज तक भी जाएगी. ये डिफरेंस है सिविल सर्विस और कॉर्पोरेटिस में. True. So rightly, as you said, sir, you explained the entire magnum of how it works in civil services. So exactly, where you said we're going to find solution. I think a couple of days back we were discussing how decision-making skills are going to be important. So, as you said, service is going to be motive and not profit. What is important as I understand is finding a solution to a problem is going to be. Lovely. Anything, sir, the last one before I get to Alok, sir. Any in terms of you could guide in terms of career progression or recruitment maybe in civil services, anything on that sort? Before the career progression, na, because since we are meeting here, I am a chartered accountant. तो उस हिसाब से मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगा, सिविल सर्विस एग्जैक्टली होता क्या है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसको पॉपुलरली यूपीएससी या आईएएस का एग्ज़ाम कहा जाता है. वो जो एग्ज़ाम होता है वो हर साल कंडक्ट किया जाता है, अकॉर्डिंगली उसके बैचेस होते हैं. ठीक है. तो आई रोट माई एग्जामिनेशन इन 2010 एंड दैट इज़ वाई आई क्लियर दैट एग्ज़ाम. तो माई बैच इज़ कॉल्ड एज 2011 बैच ऑफ ऑफिसर्स. तो 2011 में इंडिया में जो ऑफिसर पोस्टेड है दे आर माई बैचमेट्स अक्रॉस द सर्विसेज. कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई फॉरेन में चला गया, इन अ सेंस फॉरेन सर्विस में चला गया, कोई रेवेन्यू सर्विस में चला गया एंड सो फोर्थ. लगभग 24 सर्विसेज है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें. माइंड यू, मतलब आलोक जी बात करेंगे उसके पहले, दिस इज अ जनरलिस्ट एग्जाम, द वन विच आई अपीयर्ड. जनरलिस्ट एग्जाम दैट इज टू से इसमें कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है, आई गेस 55% वाला क्राइटेरिया है उसको कि नहीं है, एक बार वो ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा. इट हैज़ बीन लॉन्ग सो आई डोंट रिमेंबर द क्राइटेरिया. तो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ओपन यूनिवर्सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, डजेंट मेक अ डिफरेंस. आपका उसके आगे का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डजेंट मेक अ डिफरेंस. अगर आप ग्रेजुएट हैं यू कैन अपीयर दैट एग्जाम. इनफैक्ट इवन दोज हु आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप वो एग्जाम दे सकते हैं. द ओनली रिक्वायरमेंट इज दिस कि जब आपका यूपीएससी का रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको जब एकेडमी ज्वाइन करना है उसके पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए. यू कैन बी अ मेडिकल ग्रेजुएट ऑल्सो और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑल्सो. तो उसकी वजह से ये जनरलिस्ट एग्जाम कहा जाता है. बीइंग अ जर्नलिस्ट यू आर नॉट अ स्पेशलिस्ट. कहने के लिए आपको लगेगा कि यार स्टूपिड सा सेंटेंस है, बट उसका मतलब ये होता है कि जब आप ये एग्ज़ाम दे के आ जाते हो और जब आप आईएएस अफसर बन जाते हो तो एज अ आईएएस ऑफिसर आपको किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जिले में, वॉट एवर दैट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कहाँ पे भी पोस्ट किया जाएगा. आपको बैकग्राउंड है नहीं है, वो सब्जेक्ट आपका है नहीं है, आपको उस पर काम करना है एंड आपको डिसीजन लेने हैं. लाइक जिला परिषद सीईओ अगर मैं काम करता हूँ तो उस वक्त मैं वहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल होता है, वहाँ के जो सिविल सर्जन होते हैं उनका बॉस होता हूँ. 22-24 साल का लड़का या 25 साल का लड़का जो 25-30 साल की नौकरी किया हुआ सिविल सर्जन है उसको इंस्ट्रक्शन देता है, साहब आप ये करिएगा, साहब आप वो करिएगा. इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग. और उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टाइज नहीं है तो आप कौन से बेसिस पे उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो. वो जर्नलिस्ट नॉलेज जो आपके पास होती है ना, मतलब यूपीएससी में एक बड़ा खूबसूरत सा सेंटेंस हुआ करता था कि किसी ने पूछा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तो एनीथिंग अंडर द सन, एनीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो वो जो प्रोसेस होता है
उस प्रोसेस में आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो। लाइक मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो मैंने कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं थी। थ्रोम्बोसिस क्या होता है वो मुझे पता नहीं था, कि बैठ के अगर घुटने अपने काफ़ी देर तक ऐसे ही रह जाते हैं ना, तो घुटनों के पीछे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और उसके बाद घुटना सीधा करने में दिक्कत होती है। ये चीज़ हम कॉमर्स वाले कब पढ़ने वाले हैं? ये चीज़ें थ्रोम्बोसिस करके हमने पढ़ डाली सिविल सर्विस की तैयारी में। इकोनॉमिक्स हमने लिमिटेड इसमें पढ़ा था, जो फाउंडेशन कोर्स में हमारे वक्त हुआ करता था, वो इकोनॉमिक्स ज़्यादा लेवल पे हमने पढ़ डाली। हिस्ट्री पढ़ डाला, ज्योग्राफी पढ़ डाला। तो इतना सारा नॉलेज बेस पढ़ लेते हो ना आप सिविल सर्विस की तैयारी में, कि उसके बाद न जाने आप कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, आप काम संभाल ही लेते हो। मतलब जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, आई वाज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग 6 years एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देन आई रोट सिविल सर्विस। तो उस वक्त है ना, एक मराठी में कहावत है, गाजर गाजर होता है ना, कैरेट कहते हैं उसको, शुद्ध आपकी भाषा में, मतलब अंग्रेजी में कैरेट कहते हो, तो मराठी में कहावत थी, उसका मतलब था गाजर की पुंगी बनाओ, अगर बचती है तो आवाज सुनेंगे, अगर नहीं बचती है तो तोड़ के खा जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज वो गाजर की पुंगी। मैं कोशिश करूंगा, अगर होता है तो आईएएस अफसर बनूंगा, अगर नहीं होता है तो उस केस में जो नॉलेज उसके साथ मेरे पास आएगा, उस नॉलेज के बेसिस पे आई विल बी वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट हु विल बी हैविंग नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरी चीज मैं कहूंगा स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स, आई विल से, ये बेनिफिट होने के बाद जब आप सिविल सर्विस का हिस्सा बनते हैं, वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 18 months ऑफ ट्रेनिंग, है ना, सैंडविच पैटर्न में होता है वो। सैंडविच पैटर्न इन अ सेंस, शुरू में आप एकेडमी जाते हो, एकेडमी जाने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है लगभग 10-12 महीने की। देन यू कम टू द फील्ड एज अ प्रोबेशनर। प्रोबेशनर ऑफिसर्स आप सुनते होंगे कि ये प्रोबेशनर ऑफिसर आके काम कर रहा है यहाँ पे, आईएएस अफसर है, आईपीएस ऑफिसर है। तो आप एकेडमी से आते हो, फील्ड पे काम करते हो, 4-6 महीने काम करते हो, उसके बाद अगेन आप आखिरी वाले 3 महीनों के लिए एकेडमी में जाते हो। एकेडमी में जाके वापस आपको मतलब ट्रेनिंग में फाइनल टच दिया जाता है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर आपको सिखाया जाता है ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, इसको आप अच्छे से कर सकते थे एंड ऑल दैट, एंड देन यू कम बैक। तो ये वाला जो 16-18 months का जो ट्रेनिंग होता है ना, आई टेल यू, एक बंदा जो अभी सिविल सर्विस की वन एग्जाम वंडर जिसको कहते हैं, एक एग्जाम क्लियर करके बैठता है और अचानक उसके बाद 2 साल के बाद वही बंदा न जाने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है। तो ये जो है ना, ये सबसे एनरिचिंग प्रोसेस जो होता है सिविल सर्विस का, वो होता है ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में आपकी पर्सनालिटी कंप्लीटली ग्रूम करके चेंज कर देते हैं ये लोग। आपको एक्सपोजर उस लेवल का मिलता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इंडिया में जितने जितने कल्चर्स है, जितने जितने ये है, हमारा भारत दर्शन होता है। भारत दर्शन में हम हर स्टेट को विजिट करते हैं, अंडमान निकोबार से लेके जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वहां से लेके गुजरात, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया वी टच। वहां के कल्चर्स, वहां का फूड, वहां की हैबिट्स, एवरीथिंग दे यू गेट अप्रेज्ड, नंबर 1। नंबर 2, जो जो ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में काम करती है, राइट फ्रॉम द आरबीआई टू द सेबी टू द इसरो, एवरीथिंग यू गेट टू सी इट कि अंदर से काम कैसे चलता है, एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। यू गेट टू सी, यू गेट टू स्टे विद द आर्म फोर्सेस। जैसे मैं रहा था पूंछ सेक्टर में, रहा था एलओसी में, 1 हफ्ता में वहां पे रहा था। मैंने अपने ट्रेनर को पूछा, साहब हमें यहाँ पे क्यों छोड़े हो, हम तो जाके कभी आगे फौज में तो भर्ती नहीं होने वाले ना, आई एम गोना यूज द वेपन। देन आई वाज टोल्ड दैट कि जब आप साहब यहाँ पे आके रहोगे तभी आपको पता चलेगा अपना फौजी किस अंदाज में रह रहा है, अपने फौजी का जो कपड़ा है वो कैसा होना चाहिए, उनके वेपन्स कैसे होनी चाहिए, उनकी फैसिलिटीज कैसे होनी चाहिए, कि कल जाके साहब अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हो तो एमओडी में काम करते वक्त आप फाइल पे जब डिसीजन लोगे, साहब ये 1 हफ्ता पूरी जिंदगी में आपकी आने वाली 35 साल की नौकरी में आपको पता चलेगा कि 1 हफ्ता में वहां रहा था, ये कंडीशन है सर, आपको सिर्फ अप्रेज करने के लिए यहाँ पे रखा गया था। तो ये वाला एक्सपोजर है ना दोस्तों, मैं बताता हूँ कि न जाने हम कितना पैसा कमा ले, वी कैनॉट बाय दिस थिंग्स, we cannot buy these things. For these things, civil service is literally the thing कि लिखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद स्पेशली आई कैन सी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मतलब गर्ल्स आर मोर, तो उसलिए ये बात बोलता हूँ, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, प्लीज 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 पे अटेंशन। फॉर द गर्ल्स प्लीज राइट सिविल सर्विस एग्जाम। इसके लिए मैं बड़ा एक फेमस सा एग्जाम्पल देता रहता हूँ। मेरी बैचमेट है एक, आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज इट हैज बीन रिकॉर्डेड। तो हम तैयारी साथ में करते थे, सुंदर, काफ़ी सुंदर थी वो। तो
आई कम टू दैट, काफ़ी सुंदर थी वो। तो अब सुंदर लड़कियां हैं तो देखो अभी जैसे पीछे से चिल्ला है ना, ऐसे ही कुछ लोग बदतमीजी करते थे। आवाज बंद हो गई। तो ऐसे ही कुछ लोग बदतमीजी करते थे। प्लीज टेक इट इन द लाइटर सेंस, मतलब नथिंग की किसी को डिमीन नहीं करने का पर्पज है मेरा। तो हमेशा हमारे पास आती थी दोस्त दोस्त ही, जैसे आप भी साथ में ग्रुप स्टडी करते होंगे, तो कहती थी यार देखना यार यहाँ पे जाना है, तो कुछ लेना है, स्टेशनरी लेनी है, कुछ सामान लेना है, ग्रोसरी लेनी है, प्लीज साथ में चल यार, नुक्कड़ पे खड़े लड़के परेशान करते हैं। तो हम परेशान होते थे कि यार हर बार का तेरा नाटक है, चुपचाप पढ़ाई करने दे या कर। तो ये एक माहौल था। तो वो है ना, मैं रक्षाबंधन के वक्त राखी बांधती थी कि भाई राखी बंधवा ले लेकिन चला कर। तो इट वॉज 1 ईयर। उसके बाद आई वॉज पोस्टेड इन 2016 इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। फॉर सम रीजन आई ट्रेवल्ड इन, शी इज पोस्टेड इन महाराष्ट्र ओनली, आई ट्रेवल टू हर डिस्ट्रिक्ट फॉर सम पर्पज। तो आई कॉल्ड हर अप कि यार आई मीन योर टाउन, तुम्हारे जिले में आया हूँ, तो आज डिनर पे मिलते हैं। तो शी सेड फाइन। इट वॉज अगस्त ऑफ 2016। मैं उसके घर पे जाके बैठ गया। रात को काफ़ी लेट से वो आई, यूनिफॉर्म में थी। मैंने हाँ ऑफ कोर्स मैं बीच में मेंशन करना छूट गया। उसके बाद शी गॉट अलॉटेड द पुलिस सर्विस, शी इज़ महाराष्ट्र कैडर IPS ऑफिसर। तो मैं उसके पास बोला यार कौन सा तरीका है, डिनर पे इनवाइट करती हूँ, मैं तुम्हारे घर पे हूँ, तुम लेट से आ रही हो। तो बोला भाई तूने गौर नहीं किया आज का दिन क्या है? तो मैंने बोला अरे हाँ आज रक्षाबंधन है। तो बोला फिर? तो फिर उसने स्लीव्स ऊपर ही थे, फोल्डेड थे, लाइक ऐसे नहीं होते ना फोल्ड करते हैं, तो फोल्डेड स्लीव से मैंने देखा उसका हाथ में इतनी राखियाँ, यहाँ तक उसके हाथ में राखियाँ थी। मैंने बोला यार, मैं उसको मुशी बोलता था, मैंने बोला मुशी ये क्या है? तो मुशी कहती है कि भाई मैं तुम लोगों को राखी बांधती थी, अब है ना इस जिले के जितने भी गुंडे मवाली कमीने हैं ना, सारे राखी बांधने आ जाते हैं आज के दिन कि मैडम थोड़ा कम मारना पूरे साल। ये जो एम्पावरमेंट है ना गर्ल्स, ट्रस्ट मी, एक बार आप सिविल सर्विस क्लियर कर दो, ऑफ कोर्स बाकी इसमें भी है, लेकिन जो एक ऑरा है ना, एक जो प्रोटेक्शन है ना, आपके पास नजर उठा के कोई गलत नजर से ना देखे। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर को छेड़ा गया है। बट प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, शादी होगी, सासू मां के साथ नोकझोंक होगी। मेरी जब शादी हुई ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली माय वाइफ इज माय बैचमेट एंड शी इज इनटू वेपन सर्विस। तो मतलब जब मैं उनसे पहली बार मिला तो ही वो पिस्टल लगा के आई थी, तो क्या सवाल पूछता मैं। तो शादी होने के बाद ऐसे ही कुछ किसी प्रोग्राम में हम चले जाते हैं ना, तो वहाँ कोई था मजा किया ऐसे ही, किसी ने पूछा कि सर आपके घर में भी तो सासू और क्या कहते हैं उसको, बहू का झगड़ा होता होगा। मैंने बोला भाई देख, इनकी कमर में पिस्टल है, मेरी माँ के हाथ में बेलन है, कहाँ फाइट होगी, कहाँ कंपैरिजन है। तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑन द लाइटर साइड, बट आई टेल यू वन थिंग कि ये वाली जो दिक्कतें हैं ना कि शादी के बाद दिक्कतें ये है, ये कभी आपके साथ नहीं होगा। एंड थर्ड एंड द फाइनल थिंग, एक साथ जब भी आप सिविल सर्विस क्लियर करते हो ना, हम जिस भी घर से आते हैं ना, उस घर का नाम रोशन होता है, मीडिया में आता है, पीपल रिस्पेक्ट यू। आप मुझे बताओ, मतलब ऑफ कोर्स एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन एज ए ब्यूरोक्रेट है ना, आप कहीं पे भी मतलब मैं जिस पार्ट ऑफ इंडिया से आता हूँ, वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं बन गया ना, तो हमारे खेती में और गाँव में जो लोग थे ना, तो मेरे चाचा बता रहे थे हमारा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। तो जो मौसी थी वो बोली कि मतलब क्या? तो चाचा मुझे बोला भाई तू एक्सप्लेन कर। तो मैंने बोला मैं ना पैसे का डॉक्टर बन गया हूँ, मैं ना पैसे का डॉक्टर बन गया हूँ। तो आई हैड टू एक्सप्लेन इट। लेकिन जब मैं सिविल्स क्लियर करके चला गया ना, तो सिविल क्लियर करके गया तो पहला मेरा पोस्टिंग था मुंबई में असिस्टेंट कमिश्नर करके। तो बोले अच्छा अरे तू कमिश्नर बन गया, मतलब तू वो जो हवलदार है उसका साहब बन गया। समझ रहे हो ना, ये फर्क हो जाता है। तो एज ए सिविल सर्वेंट जो रिस्पेक्ट मिलता है ना, कहते हैं कि घर का नाम रोशन हो गया, बाप का नाम रोशन कर दिया, माँ का नाम रोशन कर दिया, ऑल दैट स्टफ। तो लड़कियों के साथ सबसे एक अच्छी बात यह है ना, एक साथ मैम आप 2 घरों का नाम रोशन करती है, आपके मैके का भी और आपके ससुराल का भी। तो आई स्ट्रांगली बिलीव, मतलब कि गिवन अ चांस आई वांट माय डॉटर टू बी अ सिविल सर्वेंट। पहली बात तो उन्हें प्रोटेक्शन रहेगा, दूसरी चीज शी कैन कंट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल वे टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, एंड थर्ड थिंग आई विल नेवर बी वरीड फॉर हर।
I'll never be worried for her. Like my wife, she was first posted to this JNPT, Jawaharlal Nehru Port Trust जो है ना, वहाँ पे वो पोस्ट होके गई थी. After independence, she was the first lady to be posted there. तो जब वो पोस्ट हुई तब वहाँ पे लेडीज टॉयलेट कंस्ट्रक्ट की गई. देखो, इसमें मैं डेवलपमेंट वाली चीज में नहीं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं बात कर रहा हूँ जेंडर एस्पेक्ट पे. तो उन्हें ना वहाँ पोस्ट होके जाने के बाद आदत ये लग गई थी कि इट इज़ अ कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड एरिया. तो जब वो चलती थी तब सारे के मतलब देन वी यूज्ड टू स्टे एट बांद्रा. तो बांद्रा से वो जाती थी तो काफ़ी कलरफुल मुंबई है, वहाँ जाने के बाद सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे. तो वो आने के बाद मुझे कहती थी कि यार मुझे मुंबई आने के बाद जिंदा आने का फील होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे मेल्स हैं ना, सारे सफ़ेद कलर के बिना कलर वाले मतलब ऐसे वाले कपड़े पहनते हैं. नंबर 1. नंबर 2, इतनी भीड़ होती थी. एज अ ओनली लेडी ऑफिसर शी यूज्ड टू वॉक. तो उसे आदत ही लग गई थी कि जब वो चलेंगी तो आगे वाली भीड़ साइड साइड में होंगी. तो उसके बाद जब हम मॉल जाते थे तो 1-2 बार वो टकराई लोगों के ऊपर. मैंने बोला यार ये कौन सा तरीका है चलने का? तो बोले अरे नहीं, आदत ही लग गई कि मैं चलूंगी तो लोग बगल में हो जाएंगे. तो ये वाला जो बेनिफिट है ना फॉर द गर्ल्स, प्लीज फॉर दिस सेक एटलीस्ट मतलब मैं यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक बार सोचिएगा सिविल सर्विस के बारे में, उसके पर्क्स देखिएगा. सेविंग ठीक ठाक हो जाती है क्योंकि सैलरी एडिक्वेट होती है, उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं, यू गेट अ ड्राइवर, यू गेट अ माली, यू गेट अ घर. आजकल सबसे बड़ा खर्चा किस चीज़ पे होता है? पेट्रोल डीजल पे आने जाने का. सरकारी गाड़ी होती है, जहाँ पे भी जाते हो हार्ट ऑफ द सिटी में आपको घर मिल जाता है, वेर एवर यू आर पोस्टेड. जिस भी शहर में जाओगे वहाँ का जो बेस्ट एजुकेशनल स्कूल होगा वहाँ पे आपके बच्चों को एडमिशन मिल जाती है, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है. तो ये सारे पर्क्स है. और हाँ, सबसे बड़ा पर्क, वंस यू क्वालिफाई टू द सिविल सर्विस, अगर लड़का है तो बड़ी खूबसूरत सी वाइफ मिलती है, काफी समझदार, काफी इंटेलिजेंट. और अगर लड़की है तो मेरे जैसा हस्बैंड मिल सकता है. तो दीज आर द बेनिफिट्स. कम है क्या? कम है क्या? एंड देन आई स्टिल रिमेंबर जब मैं क्वालिफाई कर गया था तब मेरा पहला मीटिंग दिल्ली में था. हम एकेडमी से गए थे APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ. मैं टेबल पे बैठा बैठा 2-3 बार खुद को वो चिमटियाँ काटते हैं ना, वो काट रहा था कि इज दिस मैन फॉर रियल, जिनके बारे में मैं सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ. इज इट ट्रू? खुद ही को 4 बार बोल रहा था. मुंबई इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहा था तब मेरी माँ का सपना था अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लेना. तो किसी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में बच्चन साहब का स्टेटमेंट लेने का मौका मिल गया. तो उनका स्टेटमेंट ले रहा था, तो स्टेटमेंट पे उन्होंने साइन किया. तो उन्होंने साइन करने के बाद मैंने उसका फोटो निकाला. तो वो बोले कि सर आप क्या कर रहे हो? ही इज़ अ वेरी डिसेंट चैप, आई टेल यू. तो आई वाज लाइक कि सर माय मदर ऑलवेज वांटेड टू हैव द साइन. यहाँ पे मैं ऑफिशियली तो आपका साइन ले नहीं सकता हूँ, तो स्टेटमेंट पे आपने जो साइन किया है वही माँ को भेज रहा हूँ. तो ये वाले जो लोग हैं जिनको हम सिर्फ मीडिया में देखते हैं, जिनको हम हीरोज या ये कंसिडर करते हैं, उन लोगों को काफ़ी करीब से देखने का, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपका, वो काफ़ी ऊपर के स्टेज पे जाता है. रादर आई वुड लाइक टू से दिस कि एक बार आप सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा, जिंदगी के 20 साल आप बचा लेते हो. इन अ सेंस एक मैस्लो करके थिंकर थे, इन अ मिनट आई विल रैप अप. मैस्लो करके एक थिंकर थे, उनकी ना नीड हायरार्की थ्योरी थी. पहले आपको फूड चाहिए, फिर आपको शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसके बाद है ना आपको सेफ्टी और ये चाहिए कि कोई किसी से डर नहीं है, एंड अल्टीमेटली आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए. तो यहाँ पे ना 22, 24, 25 की उम्र में ही है ना आप सेकंड या थर्ड लेवल पे चले जाते हो. एंड अनलेस यू आर वेरी एम्बिशियस कि आपको टाटा अंबानी नहीं बनना है, तो सिविल सर्विस इज अ वेरी गुड ईयर. बट ऑफकोर्स अगर सिर्फ किसी को पैसा कमाना है तो डेफिनेटली नॉट. Civil services definitely is not the venue where you can make the money with the legitimate year. Or to sum up, I will say, whatever the civil servants are, they are the sample of the society. अपनी सोसाइटी में जो भी अच्छी बुरी बातें हैं, उसी का सैंपल हम लोग हैं. तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये करप्ट है, ये अच्छे हैं. तो भाई सोसाइटी जैसी है वैसे ही हम लोग हैं, क्योंकि उसी में से कुछ लोग चुन के आ रहे हैं. तो जो अच्छी बुरी बातें सोसाइटी में, वो सारी अच्छी बातें यहाँ पे भी है. I'm absolutely blunt about it. But as a career option, definitely one of the very good year. So you must think and consider this as a career option.
I wish you all the best. And before I sum up, I tell you, as a chartered accountant, how it is beneficial to get into civil service. फर्स्ट थिंग, हम काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटा वी कैन सिट एंड स्लॉग. नंबर 2, सी इंस्टीट्यूट, मतलब जो अगर इंटरमीडिएट में या फाइनल में उनको ये अप्रिशिएट कर पाएंगे. सी इंस्टीट्यूट हम लोगों को सिर्फ 2 ही चीज़ें सिखाती है. एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मटेरियलिटी. जो ऑडिट में हम सीखते हैं, किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देना है. एज अ सिविल सर्वेंट आपको वही डिसीजन लेना होता है. किस चीज़ को, अगर 4 लोग आ रहे हैं, कोई बांद्रा से आ रहा है, कोई दहीसर से आ रहा है, कोई वसई से आ रहा है, कोई माटुंगा से आ रहा है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, उस बेसिस पे लिमिटेड फंड को आप वहाँ पे अप्लाई करते हो और आप काम कराते हो. तो ये मटेरियलिटी वाली जो चीज़ है ना, ये बाकी कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ सकता एक्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो एग्ज़ाम क्लियर करने की जो संभावना है वो सबसे अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसकी वजह से. एंड नंबर 2, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, वो है ना 2 चीज़ों पे ये करते हैं. मतलब कि आई ऑलवेज यूज टू से दैट कि देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट. 2 थिंग्स आई ऑलवेज डू. 1, वॉट एवर आई डू इट सिंसियरली. एंड नंबर 2, वॉट एवर आई डू, उसमें मैं भयंकर हार्ड वर्क डालता हूँ. तो वो यही 2 चीज़ें अपने को इंस्टीट्यूट सिखाती है. तो ये चीज़ें करके मुझे नहीं लगता, एक बार आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी निकल गई तो सिविल सर्विस के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा. और उसकी प्रिपरेशन बड़ी सिंपल सी है. जो न्यूज़पेपर है आपका वो पढ़ना शुरू कर दीजिए आज की तारीख में. सीए जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करिएगा, क्योंकि सीए की डिग्री मैटर करती है. और उसके बाद यूपीएससी के बारे में ज़रूर सोचिएगा, है ना. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जर्नलिस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वैसे ही एग्ज़ाम ओनली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीएमए, मतलब जो कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट्स है, उनके लिए होता है. उसके बारे में मेरे कलीग जो है 17 बैच के आलोक रंजन साहब है, वो आपको डिटेल में समझाएंगे. आई हैव सम अदर कमिटमेंट टू अधेर, तो आई टेक योर लीव. बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो सिविल सर्विस के बारे में तो सोशल मीडिया पे वी विल बी कनेक्टेड. इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग टू यू. आई वुड लाइक टू थैंक द वसई ब्रांच एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया टू इन्वाइट मी एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू. आप लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद है ना एक अलग लेवल की एनर्जी मिलती है. अपने सीए वाले दिन याद आते हैं और मैं औकात में आ जाता हूँ. So, thank you so much. Definitely. While we're going to have some quick, candid conversation with C. Alok Ranjan ji as well, who's, going to guide us about the specialized services in civil services, which could be only done after chartered accountancy specifically. We'll have to allow leave to Arshad ji. I'll request Aba Parab ji and Tarun ji to kindly come on the dais to present a memento to Arshad ji. My request to the audience is please be seated. We're going to have some quick, candid conversation with Alok ji. Pause this. Thank you so much. Continuing with our session, and I think some amazing insights have been provided on the entire generalist UPSC and the civil services. We have CA Alok ji, who are going to guide us through civil services, which is going to be for specialized courses. So sir has done after CA a civil service which is going to be only for chartered accountants. Alok ji, could you guide us about that? Because I think a lot of us know in general about UPSC होता है, IPS, IRS, IAS होता है, but something जो आपने करा हुआ है वो generally I think CAs do not know, and I think this is a correct audience who would love to know. Alok ji, over to you. सबसे पहले मैं यूपीएससी का ज़रा ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि यूपीएससी जनरली आईएएस एग्ज़ाम के नाम से काफ़ी फेमस है, लेकिन यूपीएससी सिर्फ आईएएस का एग्ज़ामिनेशन ही कंडक्ट नहीं कराती है, वेरियस अदर एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट कराती है. जो आप एनडीए में देखते हैं, जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स बनते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उनके थ्रू मेडिकल सर्विसेज है, उसके लिए जाते हैं. तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्पेशलिस्ट कार्डर है, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस, स्पेसिफिकली फॉर सीएस एंड सीएमएस. ये भी सिविल सर्विसेज है, ग्रुप ए पोस्ट है, और इसमें बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी है. सिंस इट इज़ लेस डिस्कस्ड इन पब्लिक डोमेन,
So I would like to discuss more on this aspect because हर्षद सर ने आपको in general civil services profile क्यों करना चाहिए, आपको उस सर्विसेज में आने के बाद आपको किस तरह का प्रोफाइल मिलेगा, क्या चैलेंजेस मिलेंगे, उस पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिटेल में समझाया है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे सिंस ऑल आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी सून आई विश, तो मैं आपको अनदर पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस का। ये सर्विस 1978 में बनी थी और 82 में फर्स्ट बैच रिक्रूट हुए थे थ्रू यूपीएससी। और ICS का एग्जामिनेशन अभी रिसेंट पास्ट में लास्ट 4-5 इयर्स में रेगुलर हुआ है एंड आई एम वेरी होपफुल कि फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड ICS वैकेंसीज वुड बी एडवर्टाइज्ड एवरी ईयर अराउंड 15 to 20 वैकेंसीज। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा प्रोफाइल बताना चाहता हूँ कि इस सर्विस में आने के बाद आपकी प्रोफाइल कैसी होगी। इस सर्विस में आने के बाद मोस्टली आप पॉलिसी लेवल चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में पोस्टिंग है, ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर्स, हेल्थ, केमिकल फर्टिलाइज़र, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज एंड मेनी मोर्स। अब जिस भी मिनिस्ट्री में पोस्टेड होते हैं वहाँ पे आप पॉलिसी लेवल पे डील करते हैं, सीनियर लेवल पे डील करते हैं और आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज यू हैव अ डोमेन एक्सपर्टाइज ऑफ रीडिंग द डेटा, इंटरप्रेटिंग द डेटा, क्रंचिंग द डेटा। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अदर सिविल सर्वेंट जो उस मिनिस्ट्रीज में पोस्टेड है उससे थोड़ा एडेड एडवांटेज पे रखते हैं। मैं अगर प्रोफाइल की बात करूं तो मैं बस अपना जर्नी बताना चाह रहा हूं कि जब मैं ICS में ज्वाइन किया 2017 में, मेरी पहली पोस्टिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। यू माइट हैव हर्ड अबाउट SFIO, ये कंपनीज एक्ट में भी इसका जिक्र है। वहाँ पे मैं इंटेलिजेंस विंग में डील करता था। तो इंटेलिजेंस विंग में मेरा काम था जो अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, IB, CBI, FIU, ED, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना और जो वाइट कॉलर्स क्राइम हो रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी से कम्युनिकेट करती है क्योंकि कोई भी एक फाइनेंशियल क्राइम होता है तो उसका मल्टीपल एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग जिसको ED डील करती है, दूसरा एस्पेक्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसको CBI डील करती है, और जो कॉर्पोरेट वायलेशंस होते हैं उसको SFIO डील करती है एक्सक्लूसिवली। उस प्रोफाइल में आप जब मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी एजेंसी लेवल पे आप काम करते हैं तो आपका एक्सपोजर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर डीलिंग विद 100 ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री और इनफैक्ट आपको वो जो एक्सपोजर है, आप जो रिपोर्ट बनाते हैं उसके बेसिस पे फॉरेन में जो ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर केस चलाया जाता है। जो अभी आप पब्लिक डोमेन में देखते होंगे कि जो कुछ फॉगिटेटिव ऑफेंडर्स हैं उनको फॉरेन में अगर हम प्रोसिक्यूट कर पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज दिस बेस्ड ऑन आवर रिपोर्ट्स ओनली, आवर मीन्स गवर्नमेंट एजेंसीज रिपोर्ट्स ओनली। देन आई मूव टू मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि दैट वाज द टाइम व्हेन आई ज्वाइन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट वाज द कोविड पीरियड। कोविड के समय में पूरे देश में ऑल ऑफ सडन इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आई जो इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में जितनी कंपनीज़ है, फार्मा कंपनीज, उससे एसोसिएटेड कंपनी, सारी लॉकडाउन में बंद हो गई। अब आप इमेजिन करिए कि हॉस्पिटल्स में मेडिसिन देना है, ऑक्सीजन देना है, बेड है, अदर इक्विपमेंट्स है, वो कैसे मिलेगा। तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाया, उस टीम का पार्ट बन के। इनिशियली हमने जितने भी फार्मा कंपनीज, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी हैं, सबको इंडिविजुअली कांटेक्ट किया कि भाई आप अपनी फैक्ट्री ओपन करिए, लेकिन ये ब्लैंकेट बैन था कि आप अपना फैक्ट्री ओपन नहीं कर सकते। तो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमने कांटेक्ट किया, SP से बात की कि आप प्रोटेक्शन दीजिए, जो लोग मूव कर रहे हैं उनको फैक्ट्री खुलवाई। वो रिकॉर्ड टाइम में हमने PPE किट्स, N95 मास्क का जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ उस लेवल पे नहीं था जितनी रिक्वायरमेंट थी उस पॉइंट ऑफ टाइम, वो हमने
करके दिखाया। तो वो उस लेवल पे जब आप वर्क करते हैं, जब क्राइसिस के टाइम में जब आप क्राइसिस हैंडलर होते हो ना, तब आपको फील होता है कि सिविल सर्विसेज में आने के बाद ये कितना बड़ा ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी है कि आप उस चीज़ को घर में बैठ के सभी डरे सहमे बैठे हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस चीज़ को लीड करके सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। देन आफ्टर आई मूव टू जीएसटी ऑडिट में मैं जीएसटी ऑडिट सुपरवाइज करता था, डिपार्टमेंटल ऑडिट्स जो होते हैं वहाँ पे, वो भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप उसमें रेवेन्यू ऑगमेंटेशन के लिए काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आस्पेक्ट को डील करते हैं। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आपको एज देता है कंपेयर टू योर अदर कोलीग्स कि आप इसको और बेटर तरीके से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। देन आई मूव टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नाउ आई एम एज एडवाइजर प्रेजेंटली इन इंडियन नेवी। यहाँ मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट पे नेवी को एडवाइस करता हूँ। तो मेरा ये बैकग्राउंड देने के पीछे आपका मोटिव ये था कि just because this is a specialist recruitment, only CA and CMAs are recruited, that doesn't mean कि आपको सिर्फ ऑडिट, टैक्स और यही सब चीज़ें करनी है। जैसे ही आपकी मिनिस्ट्री चेंज होती है, आपका प्रोफाइल चेंज हो जाता है। जैसे आपकी रैंक बढ़ती है, आपका जो पोजीशन है, जो आपका लिमिटेशंस है, वो दायरा आपका बढ़ जाता है काम करने का ग्रेटर कैनवास पे। तो मैं चाहूँगा कि नए बच्चे, ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है, ग्रोइंग सर्विस है, रिवार्डिंग सर्विस है। इस सर्विस में अगर आप राइट एज पे आते हैं और अगर आपकी सीनियरिटी है, यू कैन रीच अप टू द स्पेशल सेक्रेटरी लेवल, दैट इज अपेक्स लेवल, इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में काम करने का, डिफरेंट पोजीशन पे काम करने का, वो एक अलग लेवल का ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्सपर्टाइज मिलेगा आपको। And rest, अगर कोई question है आपका? Absolutely. I think excellent what you've guided. So I think if all of you have seen, after chartered accountancy, there are few certificate courses that we could do. I think sir ने सभी कर रखे हुए ICI वाले. I was just going through sir's profile, just to note for all of you. Sir is a chartered accountant graduate. He's also a fellow member of Insurance Institute of India. He's done diploma in banking and finance from accounts and banking and allied laws. UGC NET. He's done certificate courses from ICI on public finance and government accounting, Foreign Exchange Management Act, Goods and Service Tax, Forensic Accounting and Fraud Detection, as well as Anti-Money Laundering. सर ने मुझे लगता है सारे सर्टिफिकेट कोर्स जो ICI के साथ है, while sir was talking about his experience that he's been working in all of these different fields, you know, so much that we could learn from sir, that he's not just working over there, but he's made sure to take all those knowledge as well, that via these certificate courses. Excellent. Sir, if you could just guide little the current work profile that you've been working, how does your day-to-day look like? What work, you know, for maybe, you know, in a different field, it could be different work, but what a day-to-day look like? Presently, I am in Indian Navy, in Western Naval Command, Mumbai. The Western Naval Command is the biggest command of Indian Navy, and under this command, naval dockyard is there. Naval dockyard का काम क्या है कि जो भी ships हैं, operational ship, submarines, इनकी repair एंड रेनोवेशन जो उनकी ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम वियर एंड टीयर की वजह से, वो काम इसके यहाँ पे चलता है। और इस ऑफिस को यूनिफॉर्म ऑफिसर ही जनरली इसमें एम्प्लॉयड हैं। आउट ऑफ 11,000 ऑफिसर्स, स्टाफ एंड ऑफिसर्स, ओनली 10 or 11 civilian group A officers are there. That includes medical officer, scientist, weaponry experts, DRDO scientists, and everything. So यहाँ पे रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर इस ऑफिस को हेड करते हैं और इनका बजट काफ़ी बड़ा है, मोर देन इन मल्टीपल करोर्स, 1000 करोर्स. So day-to-day administration, since they are the uniform officers, they are not very well versed with the financial management and general administration. तो गवर्नमेंट का सिस्टम बना हुआ है कि भाई आप जो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो भी आप पब्लिक जो भी आप डे टू डे मैनेजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, वेदर यू आर प्रोक्योरिंग वेपनरी या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, कुछ आप नया कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो सारा का सारा ऑप्टिमम लेवल पे जो है वो खर्च होना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा, एक एक पैसा गवर्नमेंट का पैसा है.
तो कहावत है कि एक रुपया अगर आप सेव करते हो तो 1 रुपया आप अर्न करते हो। तो यहाँ पे मेरा रोल प्रोफाइल है जो एसडी हैं उनको एडवाइस करना कि भाई जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट्स गाइडलाइंस हैं आप उसको एडहेयर करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपका बजट मिला हुआ है उससे आप खर्च करिए। सेकेंड थिंग, उनका एनुअल अकाउंट्स भी बनता है, तो मैं उस डिवीज़न का हेड भी हूँ तो उनका एनुअल अकाउंट्स भी बनाता हूँ। और रेस्ट जैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड उनको कुछ एडवाइस चाहिए होता है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, राइट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो दोज फाइल्स कम थ्रू मी ओनली। Definitely. So just to the last question before we go to the audience. So while we know the civil service exams, there are prelim, mains. So in this specialized service also exams are yearly, or what's the pattern, or where we could find information? This is a very good question. सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का स्टेज है। प्रीलिम्स इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें आपको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि जो आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं वैसा एप्टीट्यूड आप में है कि नहीं। जैसे आप रिकॉल करेंगे कि हम लोग सीए में फाउंडेशन सीपीटी का एग्ज़ाम देते थे कि भाई आप सीए बनने लायक आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं, उसी तरीके से वहाँ स्क्रीनिंग होती है और जो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं वो एक्सटेंसिवली फिर मेंस और इंटरव्यू अपीयर होते हैं। बट ऑन द अदर साइड आईसीएस एग्ज़ाम में क्या है कि हम लोग ऑलरेडी एक लेवल पे फिल्टर हो चुके हैं। फाइनेंस डोमेन के लिए इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है, इससे बड़ी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो प्रीलिम्स का स्टेज यहाँ पे कट हो चुका है। डायरेक्टली हम मेंस में अपीयर होते हैं। वो एक पेपर होता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव, और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता है और मेरिट के हिसाब से इंटरव्यू और रिटन का मार्क्स कंबाइन करके मेरिट के हिसाब से रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। तो इस सर्विस में एंट्री कंपैरेटिवली ईजियर आपको दिख रहा होगा आउटसाइड से, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज इतनी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। बट रेदर आई टेल यू कि सिविल सर्विसेज में जो बंदा बैठता है हर बंदा एक लेवल का नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस सर्विस में सिर्फ सीए और सीएमएज अलाउड है एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो एक लेवल पे वो सब बराबर कैपेबिलिटी रखते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल वाइज। और 4,000 to 5,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं जस्ट टू 15-20 सीट्स, एंड 15-20 सीट्स में भी जो गवर्नमेंट्स का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच कैंडिडेट, तो इच कैटेगरी हार्डली 2-3, 1-2-3 इस तरह के पोस्ट ही आते हैं। तो इट्स अ क्वाइट टफ एग्जामिनेशन। इतने वास्ट लेवल पे जा कर के आपको, आप समझ लो कि 1000 में से कोई एक बंदा ही आ पाता है, 1 या 2 बंदा। तो इट्स बाहर से आपको दिख रहा है कि ये इजी है एंट्री, बट जब आप एग्जाम में पेयर होंगे तो दैट्स क्वाइट टफ। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट रिक्रूट होते हैं उनके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इंटरव्यू में आपको इतना मार्क्स लाना ही लाना है। जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको 50, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 45, एंड रेस्ट एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। इतना मिनिमम आपको आना चाहिए। एंड मैं आपको बताऊं सरप्राइजिंगली कि जितने लोग अपीयर होते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द अराउंड 40% लोग वो इंटरव्यू का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। वो जो मिनिमम बेंचमार्क है इसकी वजह से वो मेरिट में काउंट नहीं कर पाते। उनका रिटन एग्जामिनेशन में कितना भी हाई मार्क्स क्यों ना हो, अगर आपने इंटरव्यू की स्टेज वो क्लियर नहीं की तो आप मेरिट के लिए काउंट नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ें बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने देखा है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी नॉलेज है, लेकिन यूपीएससी इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाए, इसकी वजह से वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। और आईसीएस एग्जामिनेशन का जो इंटरव्यू होता है इसमें आपका डोमेन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्सेशन, पब्लिक मैनेजमेंट, ये सब 5-6 मेंबर होते हैं जनरली। वो एक मेंबर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी जो 3-4 मेंबर हैं वो आपकी हॉबी, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस, करंट अफेयर्स पे आपके क्या व्यू हैं, जो अदर सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है जर्नलिस्ट टाइप का, उसी टाइप के एग्जाम इंटरव्यू इसमें भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की चीज़ है। Definitely. I think that was my next question, but you already said, how the interview goes. It's not just about the technical knowledge, but your overall personality, overall behavior personality, questions. I think very, very important to note that any time, whether we become CA or maybe a specialist service or maybe UPSC, for
your overall personality behavior is always going to be important, definitely. If you got any specific question from the audience, only one we're going to take. If you got any specific question for sir, we'd be happy to take. Anybody if would like to ask any one question we could take from the audience. We have somebody raising hand right there in the end. Yes, sir. Go ahead. Syllabus क्या है? Great. Sir, could you guide us on syllabus? मोस्टली सिलेबस जो CA फाइनल का सिलेबस है आपका कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनीज एक्ट, कस्टम्स लॉ, GST लॉ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसी पे बेस्ड है. अगर आपको डिटेल सिलेबस जाननी है तो आप गूगल कर सकते हैं कि लास्ट एग्जाम जो 22 में हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट एग्जाम सिलेबस, आप गूगल करेंगे आपको गूगल में आ जाएगा. दीज आर द रेंज सब्जेक्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये सब सब्जेक्ट मैटर से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, और स्पेसिफिकली उसमें कौन सा टॉपिक आता है वो आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं. Definitely. So this is known as ICOAS, right, sir? ICOS. So we'll get it on the website directly, the syllabus or maybe हाँ वो the ऐसे same. आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, नॉट एन इशू. Great. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऑल्सो मेंशन कि हम स्पेशलिस्ट रिक्रूट होते हैं लेकिन ट्रेड जर्नलिस्ट के साथ ही होते हैं. सिविल सर्विसेज से इंडिया में 6 अकाउंटिंग सर्विसेज हैं. वन इज IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, विच इज जनरली यू वेरी मच नो अबाउट द CAG. सेकेंड थिंग है सिविल अकाउंट्स, रेलवे अकाउंट्स, डिफेंस अकाउंट्स, पोस्टल एंड टेलीग्राफ अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स. तो ये जो ऊपर के 5 सर्विसेज है ये जनरलिस्ट है, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से होगा वो सर्विस में जा सकता है. लेकिन कॉस्ट अकाउंट के लिए आपको CA या CMA होना चाहिए विद डिजायरेबल 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. बट एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, इट्स अ डिजायरेबल. जब आप रिक्रूट हो जाते हैं और जो सिविल से रिक्रूट होके आते हैं तो सारे 6 अकाउंटिंग सर्विसेज का जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, वो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद में 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है. तो ऑल्दो यू कम थ्रू अ डिफरेंट रूट, डिफरेंट डोर, बट यू meet at a single point of time only. Okay, great. We're going to have like quick, some rapid fire couple of questions, sir, with you, if you don't mind. Is the audience ready for a quick rapid fire with sir? Lovely. Just quick questions, sir. Maybe one word. Sir, if not ICOS in government service, what? मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता था. अगर मैं ICS नहीं होता तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता. Okay. Entrepreneurship में होता. A CA practice or an entrepreneurship. Lovely. Sir, if not CA, then what? मैं इनिशियली मेडिकल की तैयारी के लिए गया था, जस्ट लाइक जो अदर फ्रेंड्स होते हैं. +2 लेवल पे मैंने +2 पहले साइंस ली थी, मैं डॉक्टर बनना चाहता था. लेकिन बहुत जल्दी पता चल गया कि वो मेरा ड्रीम नहीं है. सर हर CA की कहानी है ये. तो फिर ऑप्शन क्या बचता है कि आप या तो आर्ट्स लो या कॉमर्स लो. जो बहुत पॉपुलर परसेप्शन है कि आर्ट्स वही लेते हैं जिनको कुछ नहीं करना है लाइफ में, तो ऑप्शन ही नहीं बचा था, कॉमर्स ले लिया. अब कॉमर्स लेने के बाद मैं CA कैसे बना, इसका भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मेरे फादर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हैं बिरला शुगर फैक्ट्रीज़ में. समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ मैं वहाँ पे. तो हम लोग ऐसे ही शाम में क्रिकेट खेलने के लिए एक जगह मतलब ग्राउंड में आते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे कॉलोनी में जो SBI की ब्रांच थी ना, उसके मैनेजर का जो लड़का था उनका, वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेलता था. तो हमने उनको बोला कि भाई ये आया नहीं बंदा, हमारे टीम का मेंबर है, कम हो जाएगा. उसको पर्सनली मैं बुलाने चला गया. अब वो SBI के मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बिठा लिया. अब पूछने लगे बेटे क्या करते हो. मैं बोला +2 कर रहा हूँ. क्या कॉमर्स, क्या करोगे. अब कॉमर्स वाला बंदा क्या ही बोल सकता है, बोल दिया मैंने CA करूँगा. तो उस दिन मुझे लगा कि मैंने बोल तो दिया लेकिन ये होता कैसे. फिर उस पर उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया कि बेटे अगर CA करना है तो आप दिन भर जो क्रिकेट खेलते रहते हो इससे कुछ नहीं होगा, बहुत डूबना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब आप CA बनोगे. तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सीरियस थॉट देना शुरू किया कि चलो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. मैं फिर CA में एंटर किया. Lovely. Sir, if you get 100 crore rupees in a single day, what would you do? मैं पर्सनली जो मेरी रिक्वायरमेंट है उतना रखने के बाद मैं PM फंड में डोनेट कर दूँगा. क्या बात है. This is, I think only somebody who's a CA and in civil services would give this answer. Sir, if you get to choose a country of your destination, which country that would be in the world? Obviously, in every life, India only. क्या बात है. Can we have a huge round of applause
for CA ICOS Alok Ranjan ji. That was a great conversation with you. May I now request CA Amit Agarwal ji, CA Abha ji and CA Tarun ji to kindly present a memento to CA Alok ji, and I'll request the MOCs to kindly take over the session ahead. My request to all of you, while that you waited for so long, please do not go in the next 5 minutes. I hope all of you are aware, while the MOCs will announce, tomorrow is what theme is have tomorrow? So make sure you wear the traditional, and everybody who's going to be waited now, we're going to have a group photograph after the vote of thanks. So please be there for the group photograph. In the next 5 minutes, we're all going to have a group photograph of entire audience who is there. So please be waited and do not leave this. Now I request CA Amit Agarwal sirs and CA Tarun sirs to present memento to CA Hudesh Pankania sir, Regional Council Member. As we wrap up this session, I would like to invite Janvi Shinde to give vote of thanks. Thank you so much to our panelists, CA Alok Ranjan sir and CA Harshad sir, for being a part of Vartaman. This discussion is bound to stay forever embedded in our minds. On this note, I would like to dedicate a few words to our panelists. यकीन है मुझे आप सबके हर एक शब्द ने हम सभी को आपका दीवाना बना दिया, और आज आपके इन कदमों के यहाँ पढ़ने से आपने हमारे इस वर्तमान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया. So thank you, and now I request CA Rudesh Pankharia sir to conclude this session. I think कूदना नहीं अभी बहुत कूद लिए. An amazing time. Can we have a huge round of applause for our entire Vasai branch committee? I'll request CA Abha Parab ji, the Vikasa chairman, also to kindly join us on the dais. This is just the beginning and this is just day one. I think day two is filled with a lot of amazing speakers and amazing insights tomorrow as well, with a lot of fun and roller coaster. Thank you so much. Hope you had an amazing time. Sir, can we have a group photograph of the entire audience? We all be seated here. We'll request the entire audience to few of them join us behind and few of them get seated here. Aajao, 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 aajao. Everybody would like to make sure you don't get hurt. We'll request the committee to kindly be seated on the sofas. I'll request the Vikasa committee to also be there. Yeah. And do not forget, tomorrow there is cultural evening also in the evening. I'll request all of you, आधे लोग पीछे खड़े रह जाएंगे. We will sit, sir. If you should we sit? I think हाँ वो better आए. हाँ हम बैठे रहेंगे ना, तो अच्छे से आएगा. Yes. आधे लोग पीछे आ जाओ, आधे लोग या नीचे पूरे बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ. मैं आ गया ना इधर. No, you'll have to. A few of them go behind, few of them sit down. पूरे नीचे बैठ जाओ. ऐसा. अरे सब पीछे आएंगे नहीं ना. आएंगे आएंगे. अरे सब थोड़ी आएंगे. नहीं तो पीछे. रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काफी लोग पीछे हो जाओ. आ जाओ, सिट 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 सिट. बैठ जाओ. इधर इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ. आओ तरुण जी बैठो. बैठो 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 बैठो. हाँ कोई नहीं देखेगा, देखेगा. ओके, थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ. किड्स थोड़ा पीछे आ जाओ. वो नहीं नीचे से. जान दो छोड़ो. अगर ऊपर गजू जी ऊपर से अगर हम लेवे तो फोटो. नहीं नहीं, ऊपर से ऊपर वाले विंग से. अच्छा आ रहा.
रिक्वेस्टिंग आ जाओ टीम, नीचे वो वाले पे बैठ जाओ. मेक श्योर फ्लावर डेकोरेशन कुछ टूटे नहीं प्लीज. जस्ट मेक श्योर. या अभी आज डे 1 का एंडिंग है. डू नॉट फॉरगेट. जय विकास. सर माइक पे हाथ रखो. Thank you.